Hello, Khushamded and Swagat. Thank you for tuning into the second edition of Dynamic 365 Urdu Hindi Bootcamp today. We hope and pray that you and your loved ones are safe during these challenging times. We welcome you all to this broadcast organized by the Pakistan User Group. Pakistan User Group is a community created with an intention to provide a pivotal platform for the country's IT professionals, entrepreneurs, business application users, and students to collaborate on upskilling, effective networking, and other areas of common interest, adding value for a growth-centric skilled industry. D365 Urdu Hindi Bootcamp is a recurring event targeting to promote upskilling in Microsoft technologies and aims to eliminate language barriers to learning. The event hosts a diverse array of industry-leading speakers covering the greatest and the latest of Microsoft product and platforms such as Dynamics 365 ERP applications, customer engagement, Microsoft Power Platform, Azure, artificial intelligence, and beyond. This community-led event welcomes participants from around the globe. We offer content in English, Urdu, and Hindi languages. This year, Bootcamp will be a 3-day event with 70 plus speakers participating from more than 10 different countries across the globe. Bootcamp session will cover a range of Microsoft products, our speakers, and share their key knowledge and experience on a variety of topics. This will be a great learning opportunity for IT professionals, client application users, and our students who are ready to embark their career journeys in Microsoft technologies. We are so thankful to our wonderful speakers, Microsoft MVPs, and Microsoft professionals for submitting their insightful sessions, as without them, this event would not have been possible. I'm really thankful to all our sponsors as True Group, Massive Global, and Barheart Solutions who have supported us in the overall planning and execution of this event. And last but not the least, thank you to our amazing team of community leaders and volunteers who managed this event, working tirelessly over the past few months. Hello everyone, Assalamu alaikum, खुशामदीद to day 2 of Urdu Hindi Bootcamp 2021. सबसे पहले मैं तमाम स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने डे 1 में अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज कम्युनिटी के साथ शेयर की। उसके साथ साथ जो रिस्पांस और प्यार हमें कम्युनिटी से मिला वो भी काबिल दीद है। कल के सेशन में बहुत से जबरदस्त सवालात हुए और उनके बेहतरीन जवाब दिए हमारे स्पीकर्स ने। कल हमारे साथ मौजूद थे माइक्रोसॉफ्ट के सीवीपी मोहम्मद आलम, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट किन किन प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। अगर आपने कल का डे मिस किया है तो उसकी वीडियो जल्दी अवेलेबल होगी पाकिस्तान यूजी के यूट्यूब चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, फेसबुक एंड लिंक्डइन पेज। चले अब बात करते हैं आज की। आज का दिन होगा और भी एक्साइटिंग क्योंकि आज हमारे पास लाइन अप है 39 नॉलेजेबल पावर बूस्टर सेशन और उसके साथ साथ 2 बेहतरीन सेशन जिनका मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। जिसमें सबसे पहला सेशन होगा अदील हिदी का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, जो आपको बताएंगे इनसाइड ऑफ फास्ट टेक। और उसके साथ साथ द सेकंड सेशन विल बी फ्रॉम हाशिम जुल्फिकार अली, हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट कॉन्फिस, जो शेयर करेंगे अपनी लाइफ जर्नी और सक्सेस स्टोरी। अगर आप इस इवेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें और हमारे साथ जुड़े रहें आने वाले एक्साइटेड 2 दिनों के लिए। अब मैं दावत देता हूं आतिफ को, जो कि आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप डिफरेंट स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं आज के दिन। थैंक यू, ओवर टू यू आतिफ। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आपको पाकिस्तान यूजी की वेबसाइट pakistanugi.com को एक्सेस करना है। जब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए, आपको अपने होम पेज पर ऑप्शंस देखेगा व्यू डिटेल्स का।
आप इस लिंक पे क्लिक करें जो कि आपको एजेंडा के लिंक पर ले जाएगा. As you see here in the agenda, here you will need to click Saturday, जो कि आपका दूसरा दिन है. आप यहां पे क्लिक करते हैं. आपके जो लोकल टाइमिंग है वो आपको आपकी लोकल टाइमिंग के हिसाब से दिख रहे होंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. आज हमारे पास 4 ट्रैक्स हैं जो कि सीई, पावर प्लेटफॉर्म, फिनॉप्स एंड अज्योर एआई के हैं. आप अपने सेशंस को, अपने पसंदीदा सेशंस को लाइव ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक लाइव सेशन को क्लिक करेंगे और वहां पर आपको सारे लिंक्स, सारे सेशंस के लिंक मिल जाएंगे और आप वहां से ज्वाइन कीजिए. होप यू विल एंजॉय योर डे एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन. ओवर बैक टू यू अम्मार. थैंक्स आतिफ. ना अब मैं कोई वक्त जाया किए बगैर अपने वन ऑफ द फीचर स्पीकर आदिल ईदी को दावत देता हूं, जो कि हमें बताएंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट का फास्ट ट्रैक का जो प्रोग्राम है कैसे वो कस्टमर्स की मदद कर रहा है. ओवर टू यू आदिल. जी, थैंक यू अमार एंड आतिफ. मेरी आवाज आ रही, कंफर्म कर देंगे अमार? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है. राइट. हेलो, सलाम एंड नमस्ते एवरीवन. क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना सेशन जो है वो उर्दू में, हिंदी में करूँगा, तो लेट्स होप आई एम एबल टू, और मैं जो है ना उसको पूरा कर सकूं, बिकॉज हम यूज टू होते हैं अपनी सारी जो है वो प्रेजेंटेशंस इंग्लिश में करने के लिए. थोड़ा सा अबाउट मी. मैंने ईआरपी तकरीबन 15 साल पहले स्टार्ट किया था. मैं 19 साल का ही था, बहुत छोटा था. और ओरेकल कंसल्टिंग से जो है मैंने स्टार्ट किया था. उसके बाद घूम घुमा के एसएपी भी थोड़ा सा किया, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे आ गया. राइट. माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पार्टनर साइड पे कंसल्टिंग काफ़ी साल की, काफ़ी अर्सा की, एंड देन फाइनली माइक्रोसॉफ्ट अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया फास्ट ट्रैक टीम में. एंड उसकी वजह सिंपली ये है कि कम्युनिटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, एंड जो भी काम कर रहे हैं हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्पलीफाई कर सकें. ठीक है. अच्छा. तो मैं कराची बेस्ड, फ्रॉम कराची. अभी करंटली जो है वो जर्मनी के एक छोटे से टाउन में गोपिंगन उसमें बेस्ड हूँ. राइट. और आई विल नाउ, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, एंड देन सो बेसिकली आई विल टॉक अबाउट कि फास्ट ट्रैक है क्या. बिकॉज मैंने जब से ज्वाइन किया है काफ़ी लोगों ने पूछा है कि फास्ट ट्रैक है क्या. काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं. राइट. तो होपफुली फॉर द उर्दू हिंदी बूट कैम्प मैं आज इसको जो है वो क्लियर करूंगा, एंड देन जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह भी हैं उसको भी डेफिनेटली लूंगा. तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है, एंड बिकॉज ये पहली दफ़ा कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन या हो रहा है फास्ट ट्रैक का ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो आइडिया ये था कि मैं इंट्रोड्यूस करूं, बताऊं कि क्या है. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फास्ट ट्रैक क्या है, सक्सेस बाय डिज़ाइन क्या है. लिंक्डइन पे डालते रहते हैं हम लोग, डॉक्स पे शेयर करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, इन्वॉल्वमेंट क्या है. तो होपफुली मैं इसको जो है आज जस्टिफाई कर सकूंगा, बता सकूंगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको क्लियर भी कर सकूंगा. तो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम चलें क्विकली स्टार्ट करते हैं. अच्छा, फास्ट ट्रैक जो है वो कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम है. ठीक है. जस्ट लाइक अदर वंस हमारे दूसरे भी कुछ कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम्स हैं, चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड हैं, अडॉप्शन रिलेटेड है. राइट. दिस इज रियली, ये जो फोकस है इसका वो है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट ट्रैक इज फ्रॉम द इंजीनियरिंग टीम. ठीक है. सो दिस इज पावर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग टीम. जो पहले सबकी शिकायतें और ये होती थी कि भाई प्रोडक्ट टीम जो है या इंजीनियरिंग टीम है वो प्रोडक्ट बनाने में बिजी है, बट वो फ्रंट पे आके कस्टमर के इश्यूज, कस्टमर की इंटरेक्शन, एक्चुअल में कस्टमर्स क्या फेस कर रहे हैं एज वेल एज पार्टनर्स, वो उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है. तो उसको टैकल करने के लिए बेसिकली फास्ट ट्रैक बनाया था. राइट. अच्छा, इसके थोड़ा सा इसका और भी बैकग्राउंड अगर मैं दूं डिटेल में, तो फास्ट ट्रैक जो है वो इसकी 2 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इनिशिएट हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थी कि
कस्टमर्स राइट उनकी तरफ से बहुत दफ़ा ये आता था कि अच्छा हमें जब लाइसेंस चाहिए, पार्टनर भी ठीक है, जब बिकॉज मैंने पार्टनर साइड पे बहुत काम किया है, और ये जो है ना मेरी भी मेरी खुद की पर्सनल जो है वो एक थॉट होता था कि हम लोग जब नए कस्टमर पे जा रहे होते हैं, न्यू कस्टमर्स पे लाइसेंसेस बेचने की बात आती है, एग्जिस्टिंग अपसेलिंग या फिर न्यू लाइसेंस की, तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे लोग आ जाते हैं, सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइसेंस बेचना है, यू नो उसके अंदर तो फुल माइक्रोसॉफ्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जब लाइसेंस बिक चुके होते हैं तो फिर उसके बाद कौन है, राइट, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, टेक्निकल हेल्प चाहिए, फंक्शनल हेल्प चाहिए, आर्किटेक्चरल हेल्प चाहिए, राइट, प्रोडक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो वो किस तरह से, एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी, राइट, कि हम इम्प्लीमेंटेशन में हाँ हम किस तरह से अप्रोच करें चीज़ों को, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस क्या हैं, दूसरे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, इस तरह की बहुत कम कस्टमर्स को, वेरी नीश कस्टमर सेट ऑफ कस्टमर्स को मिलती थी, लेकिन ओवरऑल कोई कोई प्रोग्राम नहीं था, राइट। एंड देन फिर उसके बाद जब सपोर्ट चाहिए होती थी, राइट, कोई बग्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट आ जाता था कि भाई अपना यूनिफाइड एग्रीमेंट ले लें या फिर कोई भी अलग एग्रीमेंट्स ले लें, विच इज ऑब्वियसली वो भी कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बोथ साइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट वो जो कस्टमर की एक थी ना कि यार हम लोग खरीद लेते हैं, तो बीच में कौन है हमारा, कौन इंश्योर करेगा कि क्या पार्टनर सही जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड नॉट टू अंडरमाइन बेसिकली पार्टनर्स, अभी भी माइक्रोसॉफ्ट रिलाइज ऑन पार्टनर मॉडल, यही है कि पार्टनर्स इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। बट माइक्रोसॉफ्ट की इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का इसके अंदर क्या स्टेक है, क्या वो प्रोएक्टिवली देख भी रहे हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन के, क्या वो वरिड भी हैं कि नहीं है, एंड दिस इज वाई ये फास्ट ट्रैक जो है, दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से फास्ट ट्रैक आया है, right, जिसकी वजह से fast track was, and this is an extension to product team, because obviously engineering team it has to focus, और उनको जो है वो product पे focus करना है, but वो किस तरह से जो है customers की भी सुने, उनसे feedback भी लें directly, and अगर कोई चीज़ उनको issue आ रही है during the implementation, तो वो help कैसे करें, right, from start till the beginning, right। तो अब ये अच्छा, इट्स नो कॉस्ट टू बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब जो कस्टमर्स हैं, एलिजिबल कस्टमर्स जो फास्ट ट्रैक में अपने आप को ऑप्ट करते हैं एलिजिबिलिटी के बाद, तो उनको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ती, राइट। सो दिस इज रियली एन इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से, दैट्स अनदर थिंग, राइट। अच्छा, करते किस तरह से है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फास्ट ट्रैक जो है वो ट्राई करता है, टीम जो फास्ट ट्रैक आपके आर्किटेक्ट जो असाइन होता है, इसका मॉडल ये होता है कि एक लीड आर्किटेक्ट आपको असाइन हो जाता है, राइट, और वो आपका एक्सेस बनता है फॉर द कस्टमर एंड पार्टनर टू द एक्सेस टू द होल knowledge base, और आपका जो access to all the product engineers and the teams, right? So that person basically is helping you um, to connect with them, right? और अच्छा, उसके अलावा जो है not just connect basically, right, it's also कि वो आपकी solution architecture को जो analysis हो चुका होता है, fit gap analysis आप कर रहे होते हो, उसके बाद जो आपके designs होते हैं, detailed designs, your आपकी strategies, testing strategies, data migration strategies, जो आपके fit gaps आपने निकाले हैं, gaps निकाले हैं, तो if customer is worried कि नहीं यार बहुत ज़्यादा gaps आ गए हैं, क्या इसको हम फ्यूचर रोड मैप से अगेंस्ट इवेलुएट कर सकते हैं, क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इसको इवेलुएट कर सकते हैं जो हम चीज़ें बना रहे हैं, राइट। एंड इन दी एंड ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या होता है कि जो कॉमन पिटफॉल्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स अवॉइड करवाई जाएं उस प्रोजेक्ट में। उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से, एंड देन जो थर्ड ओपिनियन होता है वो लेने से आपका एटलीस्ट कुछ आपके रिस्क मिटिगेट हो जाते हैं, राइट, ठीक है। एंड जो गो लाइव होता है वो यू आर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका उसके अंदर बढ़ा होता है, एंड जनरली आई टॉक अबाउट थोड़ा सा नंबर्स भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि हम पिन पॉइंट करें या फिर इट्स नॉट ऑडिट। ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये कोई ऑडिट नहीं है, हम आके कोई पार्टनर का ऑडिट नहीं कर रहे, कोई रिव्यू नहीं कर रहे, ठीक है। वी प्रोड्यूस, हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, हम रिव्यू भी देते हैं, हम रिस्क भी हाईलाइट करते हैं, इश्यूज भी हाईलाइट करते हैं, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि हम लोग किसी को पिन पॉइंट कर रहे हो, राइट। पार्टनर इज स्टिल द पार्टनर, वही लीड कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन को, कस्टमर इज स्टिल देयर, ठीक है, कस्टमर का ये प्रोजेक्ट है, बट वी प्लग इन इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड ट्राई टू
reduce the risk. ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं कि यू आर कनेक्टेड, प्राइवेट प्रीव्यू प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, पार्ट कर सकते हैं, राइट, और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रोडक्ट की डायरेक्शन को, राइट, बिकॉज आपके पास डायरेक्टली एक्सेस है टू प्रोवाइड इन फीडबैक, ठीक है, जो भी नए फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज आ रहे हैं, आप जो प्राइवेट प्रीव्यू में जो कैपेबिलिटीज हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हो और उनको हमें एडवाइस कर रहे हैं प्रोडक्ट टीम को कि क्या सही है क्या नहीं सही है, राइट, एज वेल एज कि जो है कम्युनिटी से आप ओवरऑल जो है ना एक्सपर्ट से कनेक्टेड नहीं है, राइट। अच्छा, अब फास्ट ट्रैक जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, आई थिंक वी स्टार्टेड थोड़े अरसा पहले, लेकिन कुछ लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज आ रहा है, इवन इफ इट्स क्वालिफाइड के बाद भी ये ऑप्शनल है, बट बहुत सारे कस्टमर्स एज वेल एज पार्टनर्स, बिकॉज जो पार्टनर्स यूज टू हो गए हैं, दे आर गेटिंग यूज टू इट, उनको समझ में भी आ गया है कि अच्छा दिस इज इन लीवे सारा चल रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्लग्स इन themselves to the implementation, और एज यू कैन सी के 45% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है फास्ट ट्रैक गो लाइव्स में आ रहा है। फास्ट ट्रैक गो लाइव्स का मतलब कि जो है फास्ट ट्रैक के साथ मिलके जो है वो गो लाइव्स की हैं, क्लाउड माइग्रेशन की। अच्छा, ये क्लाउड फोकस प्रोग्राम भी है, ठीक है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कितने सारे बड़े इवन द लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स भी इसको ले रहे हैं, राइट, दे आर उसका भी इनको फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक हो गया, राइट, क्वेश्चंस होंगे तो मैं भी लूंगा, मैंने काफी टाइम रखा है क्वेश्चंस के लिए, लेकिन उससे पहले सक्सेस बाय डिजाइन, राइट, तो हम करते किस तरह से हैं। अब फास्ट ट्रैक जो है वो उनको भी हमें भी कोई मेथोडोलॉजी चाहिए, कोई मॉडल चाहिए, तो वो जो हमारा यू कैन से जो हमारा मेथड है दैट्स सक्सेस बाय डिजाइन, जो हमारा गाइडिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, एंड इट्स इसको हम लोग कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव गाइडेंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं आपको कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, हम सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दी एंड तो डिसीजन प्रोजेक्ट टीम के पास होते हैं, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट टीम है कस्टमर और पार्टनर की, राइट, लेकिन हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो चल रही होती हैं, और ये जो है ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो 3 कोर प्रिंसिपल्स की बेस पे चल रहा होता है। एवरी आर्किटेक्ट जो होता है, कोई भी लीड आर्किटेक्ट जो आप पे असाइन होता है, ठीक है, उसको इंश्योर करना होता है कि वो जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्ट कर रहा हो कोई भी मसले हैं, ठीक है, तो वो शुरू में ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होगा, राइट, कि आपको कट ओवर प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए, भाई टेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपने बनाई है कि नहीं बनाई है, किस तरह से बनाई है, परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे नहीं करें, परफॉर्मेंस ऑल दो बिल्कुल एंड में, वी ऑल नो, ठीक है, परफॉर्मेंस बिल्कुल आखिर में जाकर फोकस हो रहा होता है, लेकिन पहले से ही बता रहे होते हैं कि अच्छा ये कस्टमर और पार्टनर जो है वो सोच ही नहीं रहे परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, ये बहुत लेट कर रहे हैं, तो हम उसको रिस्क की तरह कर रहे होते हैं, थोड़ा सा पुश भी क्रिएट हो रहा होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये प्रिंसिपल ही यही है कि जितना जल्दी हम बता सकें ताकि आप प्लान कर सको उन चीज़ों को। यूएटी के बाद आके कोई चीज़ हम बताएंगे आपको, या फिर आप गो लाइव जाने वाले हैं उससे कुछ अर्सा पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं, तो उसका फ़ायदा बहुत कम होगा, राइट। हम जितना जल्दी बताएंगे तो मे बी वो थोड़ा सा बुरा लगता है, राइट, एंड दिस इज़ नॉर्मल कि यार ये तो अभी सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब पीछे पड़ गए, अभी तो टाइम भी नहीं आया इस चीज़ का, और ये लगे हुए हैं वो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के पीछे पड़े हुए हैं, इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, वी ऑल नो किस तरह से चल रहा होता है, रिक्वायरमेंट्स लेके अच्छा इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे, पहले सिंपल चीज़ें कर लेते हैं, डेवलप बाद में देखेंगे इंटीग्रेशन की चीज़ों को, और ये अप्रोच जो है हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि भाई जल्दी करना है, स्ट्रैटेजी पहले होनी चाहिए, अप्रोचेस पहले फाइनल होनी चाहिए, प्रोसेस पहले फाइनल, गवर्नेंस पहले फाइनल होनी चाहिए, किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी, राइट, ये एंड देन इसी वजह से बिकॉज ये जो कि हमें प्रेडिक्टेबल सक्सेस लेके आनी है, जब ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट फॉलो होगी ना, ठीक है, इफ़ यू हैव डन एवरीथिंग, ये जो सारे फ्रॉम द प्रोग्राम स्ट्रैटेजी की रिकमेंडेशन से लेकर योर एनालिसिस बिजनेस प्रोसेस की स्ट्रैटेजी कि भाई किस तरह से बिजनेस प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट होंगे, मैनेज होंगे, कम्युनिकेट होंगे, चेंज मैनेजमेंट क्या होगा, हर चीज़ अगर पहले से ही प्लान हो तो फिर वेरी लेस चांसेस के जो है वो सक्सेस जो है ना प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, डेफिनेटली की जा सकती है। अगर थोड़ा सा इसमें देखें अगेन अनदर नंबर राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है कि जो यूजेज है, एंड यूजेज इज समथिंग बिकॉज हम लोग फास्ट ट्रैक में
लाइसेंस के पीछे नहीं भाग रहे, या फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम लोग जो है वो लाइसेंस ज़्यादा करें, बट यूजेज जो आपने लिया है उसका यूजेज बढ़ाना है, राइट। तो अगर आप ये देखें तो 200% मोर यूजेज है, ठीक है, फास्ट ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट के बाद कस्टमर्स का अपने लाइसेंसेस का, राइट। डिप्लॉयमेंट भी फास्टर है, एडॉप्शन भी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली अगर यूजेज ज़्यादा है तो फिर आरओआई भी ज़्यादा होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही होती हैं, राइट। पार्टनर्स, कस्टमर्स, स्पेशली पार्टनर्स भी जो टीम्स होती हैं वो कि एवरी मंथ डिप्लॉयमेंट चल रही है, एवरी मंथ नया वर्जन आ रहा है, राइट। तो अब बहुत दफ़ा फाइनेंस के कंसल्टेंट हैं, वो पता है, हमें पता है किस तरह से करना है, इसी तरह से ही इम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। लेकिन थिंग्स हैव चेंज, राइट। अभी पिछले दिन में आपने देखा था खुरम ने भी और मोहम्मद आलम ने भी जो प्रेजेंटेशंस दी है, राइट, कि कितनी फास्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड ट्रेडिशनल ईआरपी नहीं रहा, राइट। तो इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन भी ट्रेडिशनल नहीं हो सकती, राइट। सो दैट्स व्हाई ये थोड़ी सी जो है हमारी तरफ से पुश आ रहा होता है। किस तरह से करते हैं, राइट। सक्सेस बाय डिजाइन में इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको इधर आंसर करता हूँ स्लाइड में। अब राइट साइड पे देखें तो ये इनिशिएट, इम्प्लीमेंट, प्रिपेयर, ऑपरेट। अच्छा, सक्सेस बाय डिजाइन इज द फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव गाइडेंस फ्रेमवर्क है। इसको आप जो श्योर स्टेप मेथोडोलॉजी है उससे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है, वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है। एंड यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट हैं, हमें तो आपको पता है कि जो है ना चीज़ें चेंज करने का बड़ा शौक है, नाम भी चेंज कर लेते हैं, कलर्स भी चेंज कर लेते हैं, लोगो भी चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप मेथोडोलॉजी है, लेकिन इन दी एंड वो वही है, 5 स्टेजेस हो, 5 स्टेप्स हो, ठीक है। तो इनिशिएट इज बेसिकली और एनालिसिस, इम्प्लीमेंट इज ये आपका जो डिज़ाइन और बिल्ड का जो डिज़ाइन एंड डेवलप वाला जो फेज़ होता है वो इसके अंदर आ रहा होता है। प्रिपेयर आपका वही प्रिपेयर है जो प्रिपरेशन फॉर गो लाइव है, एंड देन ऑपरेशन है, राइट। जो आप गो लाइव की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, तो शुरू में क्या होता है इनिशियल के टाइम पे, आइडियल टाइम वो होता है जब आपका एनालिसिस हो चुका हो, बेसिक एनालिसिस, और आपने फिट गैप भी कर लिया हो। आपको पता है कि अब आपकी प्रोजेक्ट टीम को आइडिया है कि किस तरह से अप्रोच करेंगे अब इस प्रोजेक्ट को, राइट। उस टाइम पे हम लोग सोल्यूशन ब्लूप्रिंट करते हैं, सेशन करते हैं, वर्कशॉप होता है, और उस वर्कशॉप के अंदर पूरा समझते हैं कि क्या स्कोप है सोल्यूशन का, क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन सोल्यूशन को सिर्फ प्योरली टेक्निकल या फंक्शनल नहीं कर रहे होते, एप्लीकेशन नहीं कर रहे होते, हर चीज़ को देख रहे होते हैं। क्या आपकी गवर्नेंस इन प्लेस है कि नहीं है, राइट, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या आपने हैव यू एडजस्टेड योर प्लान अकॉर्डिंगली, क्या आपने प्लान अपना एडजस्ट कर लिया है, क्या आपने अपनी अप्रोच एडजस्ट कर ली है, क्या आपने प्रोजेक्ट टीम अपने, बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि आप इनिशियल टीम से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बाद, सॉरी, आप डिसाइड करते हैं कि अब एक्चुअल टीम स्ट्रक्चर किस तरह से और क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से होगी, कि टेस्टिंग मैनेजर डेडिकेटेड होगा नहीं होगा, ठीक है, कट ओवर स्ट्रैटेजी किस तरह से होगी, रिक्वायरमेंट्स आने के बाद ही पता चलता है, राइट, कि आपकी डेटा माइग्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कट ओवर किस तरह से प्लान होगा, राइट। सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स आपको एनालिसिस के बाद डिटेल में पता चलती है। इस लेवल की डिटेल्स आप जनरली प्री सेल्स में, डायग्नोस्टिक्स में बहुत कम हो रही होती हैं, अनलेस उसका डेडिकेटेड प्रोजेक्ट हो। तो दिस इज द राइट टाइम के जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, आपसे। उसके बाद सोल्यूशन डिजाइन के कॉन्सेप्ट को, क्या आपकी अप्रोच, क्या थॉट प्रोसेस सही है कि नहीं है। यहाँ पे जो रिव्यू कर रहे होते हैं वो आपका थॉट प्रोसेस देख रहे होते हैं। अभी तो इतना वी अंडरस्टैंड के स्टार्ट में सारे डिसीजन, सारी डिटेल्स लाइन बाय लाइन हर चीज डिसाइड नहीं हो पाती, बट क्या अप्रोच सही है कि नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है, राइट। क्या आप सोच सही तरीके से रहे हैं, क्या आप इवेलुएट कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नई नई चीजें आ रही हैं, कैपेबिलिटीज आ रही हैं, ठीक है। अगर वो नहीं हो रही होती, राइट, तो फिर जो है वो, फिर हम ऑब्वियसली उसको रिस्क एंड इश्यूज में मार्क करते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, फिर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ये तो इनिशियल हो गया, ये यूजली 8-10 आवर्स की पहले ऑन साइट होती थी, अब ये हम लोग रिमोटली करते हैं, तो मल्टीपल सेशंस में आइटरेटिव हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि सोल्यूशन ब्लूप्रिंट के बाद हमें आइडिया हो जाता है, राइट, म्यूचुअली, कि इस प्रोजेक्ट टीम को कुछ एरियाज में ज़रूरत पड़ेगी, फास्ट ट्रैक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हम डीप डाइव सेशंस जो हैं वो प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कस्टमाइजेशन जो हैं वो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई इसकी एक्सटेंसिबिलिटी का एनालिसिस जो है वो या वर्कशॉप करना चाहिए, ताकि जो है वो टीम जो है वो अप टू मार्क हो,
राइट, और दे नो कि अच्छा उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, अप्रोच सही है कि नहीं है, बिकॉज सोल्यूशन डिजाइन लेवल पे तो लाइक आई सेड के हाई लेवल पे होगा, राइट, बट जब हम एक्सटेंसिबिलिटी एनालिसिस के या एक्सटेंसिबिलिटी डीप डाइव में जाएंगे तो फिर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि अच्छा आप लाइन बाय लाइन किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह से अनदर डीप डाइव एग्जांपल में दे रहा हूँ कि क्या होगी इंटीग्रेशन की, क्या इंटीग्रेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, एंड पॉइंट बाय एंड पॉइंट एनालिसिस अगर हमने करना है, इफ वी थिंक इट्स नीडेड, ठीक है, तो फिर हम उसका डीप डाइव प्लान करते हैं। इसी तरह से सारी अगर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में फॉर एग्जांपल न्यू है, फर्स्ट टाइम टेस्ट मैनेजर असाइन हुआ है एंड ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, एंड तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में भी, दूसरे प्रोडक्ट्स में किया हो डायनामिक्स के अंदर, तो फिर हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का डीप डाइव भी प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से फंक्शनल भी हैं, टेक्निकल भी हैं, गवर्नेंस रिलेटेड भी हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड भी डीप डाइव्स होते हैं, राइट, तो फंक्शनल भी, फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस का डीप डाइव चाहिए, एचआर की एप्लीकेशन डीप डाइव चाहिए, राइट, तो वो सारी होती हैं। एंड दिस, इसका क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, पैटर्न्स, प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं और अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, ये ड्यूरिंग दी पूरी आपका जो डिज़ाइन और बिल्ड फेज़ या डेवलप फेज़ के दौरान जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो लास्ट है, जो फॉर्मल हमारा बहुत सारे लोगों ने शायद इसको फेस भी किया होगा, बिकॉज़ ये फास्ट ट्रैक से सिर्फ फास्ट ट्रैक के लिए नहीं है। मैं बताऊँगा आपको कि फास्ट ट्रैक एंड डिफ नॉन फास्ट ट्रैक भी होते हैं कस्टमर। सो ये जो है, जो इनिशियल गो लाइव आपका होता है, जिसमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है, राइट? तो सबको पता होगा कि जब भी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट माँगने आते हैं, तो देयर इज़ अ प्रोसेस, राइट? तो वो बेसिकली दिस इज़ अ गो लाइव रेडीनेस प्रोसेस, ठीक है? जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करने के बाद देयर इज़ अ प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं, राइट? कि क्या अम बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मेट हो गई हैं, कि वो हो गई हैं पूरी कि नहीं हुई हैं, राइट? क्या यूएटी पास हो गया है कि नहीं हुआ है यूएटी एनवायरनमेंट के ऊपर ठीक है। क्या कस्टमर रेडी है कि नहीं है, विद कंफर्टेबल है कि नहीं है अपने टूल्स के साथ, राइट? एलसीएस टूल बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल आगे जाके वो एलसीएस चेंज होने वाला है, राइट? लेकिन एलसीएस है, अगर रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल पीपैक अगर टूल यूज हो रहा है, तो क्या उससे है एजोर डेवऑप्स से दे आर कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि एंड हो सकता है यस कि दे डेलीगेट एवरीथिंग टू अ पार्टनर टू आउटसोर्स इट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कस्टमर रेडी है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है सोल्यूशन, सोल्यूशन से कंफर्टेबल है, टूल से कंफर्टेबल है, प्रोसेस आगे किस तरह से होंगे, वो क्या सारे सेट हैं, सपोर्ट के प्रोसेसेस, माइक्रोसॉफ्ट को रीच आउट करने के प्रोसेसेस, सपोर्ट अग्रीमेंट्स हैं कि नहीं है, राइट? इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही होती हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग की है कि नहीं की है, कट ओवर टेस्टिंग की है कि नहीं की है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इवैल्यूएट की जा रही है। एंड इन द एंड ये सारी चीज़ें ये क्या है, राइट? ये जब करेंगे तभी पता चलेगा ना कि गो लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो तो जाएगा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, राइट, ये बताना है। एंड देन जब ऑपरेट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हाइपर केयर का जो पीरियड होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है फास्ट ट्रैक की, हम लोग देख रहे होते हैं क्या लेसन लर्नड है, राइट, कस्टमर का आउटकम क्या है, और फिर इन दी एंड कस्टमर एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सबके लिए। तो उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत हो रही होती है, राइट। अगर सब खुश होंगे तो आई थिंक उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो दिस इज बेसिकली इट। इसका थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा अनदर मिनट ऑन दिस, बस फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा इंशाल्लाह, कि किस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने स्लाइड में रखा हुआ है, राइट। ये वही बात है जो मैं पहले कर रहा था कि आपने देखा कि ये कस्टमर किक ऑफ जो होती है वो सक्सेस बाय डिजाइन या फिर फास्ट ट्रैक के साथ यू नो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई हो, प्रोजेक्ट गवर्नेंस सेट हो, फिट गैप हो चुकी हो, फिर उसके बाद होनी चाहिए। दिस इज नॉट टू लेट, दिस इज नॉट टू अर्ली, राइट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली डू इट। फिर उसके बाद सोल्यूशन ब्लूप्रिंट रिव्यू होते हैं, जो वर्कशॉप होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया डिटेल के अंदर। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंट फेज में होते हैं तो फिर आपके डिटेल्ड परफॉर्मेंस, ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इस तरह के, बहुत सारे और भी डीप डाइव्स प्लान कर सकते हैं नीड बेसिस के ऊपर, राइट। ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि बस हम यू नो हर चीज़ में डिले करते रहें और मीटिंग्स करते रहें, सेशंस करते रहें। जो चीज़ें वी आर कंफर्टेबल, वी ऑल एग्री, पार्टनर, कस्टमर, माइक्रोसॉफ्ट के, फास्ट ट्रैक के, ये एरिया सिंपल है, इजी टू अप्रोच है, इसके कॉन्सेप्ट भी सही हैं, इसकी अप्रोच भी ठीक है, तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इतना ज़्यादा उसको फॉलो अप या नहीं करते, राइट। हम कॉम्प्लेक्स या की क्रिटिकल एरियाज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। एंड दिस ऑब्वियसली डिपेंड्स
कस्टमर टू कस्टमर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद गो लाइव रेडीनेस जो है वो जनरली आपकी टेस्टिंग एक्सेप्टेंस होने के बाद, गो लाइव प्लानिंग होने के बाद, राइट, यूजर की रेडीनेस, ठीक है, एप्लीकेशन से नॉन एप्लीकेशन से एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, वो कितनी है, कट ओवर प्लानिंग होने के बाद फिर गो लाइव रेडीनेस रिव्यू करते हैं, राइट, और फिर उसके बाद जो पोस्ट गो लाइव रिव्यू हो रहा होता है वो ऑपरेट में हो रहा होता है, राइट। तो इस तरह से हम आपके जो है पूरे इम्प्लीमेंटेशन जो साइकिल है, राइट, एंड टू एंड, उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, राइट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट इज के हमने फास्ट ट्रैक जो है वो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने तक ना रखें, राइट। ये जो सक्सेस बाय डिजाइन है ये भी अपने तक ना रखें, या जो नॉलेज बेस बन रहा है, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन टाइम फास्ट ट्रैक जो है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, राइट। बहुत सारे आई थिंक वो हम लोग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स में जाने वाले हैं जो कि हम लोग हैंडल कर चुके हैं, राइट, कर रहे हैं। तो दे बहुत बड़ा नॉलेज बेस एंड एक्सपीरियंस जो है वो जमा हो रहा है, राइट। अब उसको हम लोग वन ऑफ दी जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, या जो हमारा यू नो प्लान है, वो ये है कि हम पब्लिकली जो है ये सारी नॉलेज को शेयर करें पार्टनर्स एंड कस्टमर्स के साथ, ताकि जितनी भी लर्निंग्स हैं, राइट, वो मार्केट में अवेलेबल हों, राइट, एंड वो यूज़ हो रही हों। एंड वन ऑफ द थिंग्स ये जो हमने की थी वो ये बुक लॉन्च की थी, 700 पेजेस की 600-700 पेजेस की बुक है, लेकिन आई थिंक द फर्स्ट 10 पेजेस जो हैं वो तो हर किसी को पढ़ने चाहिए, स्पेशली द कस्टमर्स एंड सी लेवल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बेस्ड ऑन द रोल एज वेल, प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैं कहूँगा कि सारी देखें, सारी पढ़ें। आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी कितना भी एक्सपीरियंस हो इम्प्लीमेंटेशन का, न्यू हो, दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड दिस इज द लिंक टू डाउनलोड इट। इट्स aka.ms D365 इम्प्लीमेंटेशन गाइड, राइट। और इसमें अच्छा सारे सेक्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी कोई भी सेक्शन उठा के आप पढ़ सकते हैं। तो वो आपको, फॉर एग्जांपल, आप इंटरेस्टेड हैं कि टेस्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या टेस्टिंग की अप्रोचेस होनी चाहिए, क्या किस तरह से हमें सेटअप करना चाहिए, राइट। इन्वायरमेंट प्लानिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल, राइट, तो इन्वायरमेंट के ऊपर हमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह के हैं, क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। इसके अलावा फिर हमारे टेक टॉक्स भी होते हैं, राइट। तो वो जो फॉलो वगैरह करते हैं वो टेक टॉक्स वगैरह फास्ट ट्रैक के देखते रहते होंगे। वी हम सारा का सारा जितना भी नॉलेज है, at least to the best of our abilities, we are sharing, right? So it's with everyone. ठीक है, so hopefully आप ये करेंगे। तो टू एंड इट, आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मतलब ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक शायद आपको अच्छा लगा हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। फास्ट ट्रैक में 100K का एनुअल स्पेंड अगर आपका होगा तो आप फास्ट ट्रैक क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। एंड जिसके साथ आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका पार्टनर है, वो गोल्ड और सिल्वर स्टेटस में होना चाहिए जो इस कॉम्पिटेंसी में, क्लाउड बिजनेस एप्लीकेशन, राइट। और उस पार्टनर ने सक्सेस बाय डिज़ाइन की ट्रेनिंग ली भी हो, तो अगर आप पार्टनर से बिलोंग करते हैं तो कंसल्टेंट्स हैं या इन एनी रोल आर्किटेक्ट्स हैं, तो ये सक्सेस बाय डिज़ाइन ट्रेनिंग पब्लिकली अवेलेबल है, नॉलेज चेक भी है, इसको आप देख लें और करें। आई थिंक इट हेल्प्स ओवरऑल इन बिल्डिंग द कॉम्पिटेंसी एज अ पार्टनर, ठीक है। और कस्टमर को तो आपको पता है लाइसेंस लेना है लाइसेंस लेंगे तो क्वालिफाई करेंगे इसमें मैंने लिंक्स डाल दिए, राइट। अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो बहुत ही आसान है, aka.ms/D365FT, राइट। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये जो मैंने स्लाइड दिखाई थी ये भी एक aka.ms/D365FT एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक कस्टमर हैं तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर से आप पूछ लें, दे विल हैव एक्सपीरियंस विद इट, या आप अपनी अकाउंट टीम से माइक्रोसॉफ्ट की पूछ लें अगर आप कस्टमर हैं, राइट। अदरवाइज मैं भी आपका उर्दू हिंदी स्पीकर फास्ट ट्रैक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है। सो कि कोई भी जो है किसी भी टाइम पे मुझसे इन टच हो सकता है। थैंक यू। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले लिया। अम्मार, आतिफ, over to you guys for any questions. Okay.
थैंक यू अदील फॉर द सेशन। काफ़ी इंसाइटफुल था, काफ़ी नॉलेजेबल था। मज़े की बात है, कई बार वेंडर्स को या कस्टमर्स को पता नहीं होता कि फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट को कैसे लेवरेज करना है इम्प्लीमेंटेशन में। क्या है ये प्रोग्राम? तो कस्टमर्स का और वेंडर्स का दोनों का कई बार अलग नज़रिया होता है, बट द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड हैज़ गिवन अस अ वेरी गुड समरी। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के बारे में जानना है। एज अ पार्टनर मैंने कई फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, और द जी बिगेस्ट वैल्यू जो आप लोग ऐड करते हैं वो है कॉन्फिडेंस। कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है और पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट हमारे साथ है, एंड वी आर ऑन अ मिशन टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट्स अक्रॉस द globe who are working with customers, partners, and I know how hard you guys work. So a big thank you to all of you. Okay, थैंक यू सो so मच रशीद। yeah. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन जी शेख असीम का है कि व्हाट आर द हर्डल्स दैट यू यूजुअली फेस फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ अप्रोच। एंड आई थिंक ये आपके रियल टाइम एक्सपीरियंस से ही आएगा कि क्या आपको लगता है क्या चैलेंजेस आते हैं डील करने में, क्योंकि द एक्सपेक्टेशन कैन बी वेरी डिफरेंट, राइट? ऑब्वियसली एक जो सबसे पहला तो जो मसला होता है, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, राइट, हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं। पहला एक तो ये बैकग्राउंड, कस्टमर और पार्टनर्स दोनों का एक बैकग्राउंड होता है माइंड में कि अच्छा ये अब आएंगे हमें बताएंगे पुश करेंगे कि जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की ही कोई चीज़ें यूज़ करो, एज़्योर डेवऑप्स ही टूल है तो उसी को यूज़ करना है, या फिर प्लानिंग का टूल है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स यूज़ करना है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, दैट्स नॉट द केस। यस ऑब्वियसली जहाँ पे वी फील कि दिस इज द राइट अप्रोच, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोवाइडेड आउट ऑफ बॉक्स कैपेबिलिटीज और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, वो हम डेफिनेटली रेकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड जो, तो ये एक चीज डेफिनेटली एक उनके माइंड में होता है, देयर आर 2 or 3 थिंग्स। सेकंड इज के जो परसेप्शन है ना कि अच्छा ये इनको ले लेते हैं फास्ट ट्रैक को और ये ना ऑडिट करेंगे पार्टनर का ना, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अच्छा हम डायरेक्ट मीटिंग्स कर लेते हैं, पार्टनर को ऑडिट कर लेंगे ये लोग, और फिर पार्टनर्स जो हैं वो थोड़ा सा, जो न्यू पार्टनर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट, आफ्टर फ्यू इम्प्लीमेंटेशन उनका हो जाता है, वो फिर थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि क्या हम किस तरह से इनसे डिस्कस करें, बहुत ही फॉर्मल भी हो जाते हैं, राइट, कुछ पार्टनर्स। एंड इन दी एंड यस इम्पॉर्टेंट है, वी नीड फॉर्मेलिटी, वी नीड ऑल द सॉल्यूशंस, रिव्यू भी करने हैं, लेकिन ऑडिट नहीं कर रहे, राइट, पिन पॉइंट भी नहीं कर रहे। तो ये कस्टमर्स को, एंड हमारी अप्रोच होती है कि हमारे सारे वर्कशॉप्स में, मीटिंग्स में, डिस्कशंस में कस्टमर्स एंड पार्टनर्स दोनों हो। सो सक्सेसफुल फास्ट ट्रैक प्रोग्राम जिसको हम कहते भी हैं, जो हुए भी हैं, उसमें तीनों पार्टीज फुली इन्वॉल्व हो, तो ये थोड़ा सा जो है चैलेंज आता है, बट यू नो थर्ड इज बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन, एक्चुअली मुझे भी याद आया कि स्टार्ट में जब हम बता रहे होते हैं तो ठीक है, वो कहते हैं हाँ ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं, चलो अवॉइड, मतलब ये तो बोलते रहते हैं, ये तो हमें, राइट, बट दे डोंट लिसन कि ठीक है टेस्टिंग, अब इतनी टेस्टिंग करेंगे, ये इतनी 3 अलग अलग तरह की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस भी करनी है, रिग्रेशन भी करनी है, रिग्रेशन होती रहेगी, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कोई रिग्रेशन की जरूरत नहीं थी और हो गया था काम, और फिर बाद में व्हेन इट्स टू लेट, तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि जो है अच्छा, वी शुड हैव डन इट दिस वे ना, तो बस ये चैलेंजेस होते हैं, बट यू नो market is learning, they are getting mature. Yep. No, definitely there are always learnings in every project, but yeah, fast track की guidance बहुत valuable है. Amar, you want to take the second question? Amar mute पे. You're on mute, Amar. I think he's on mute. I'll take the second question. I'll take the second question. दूसरा क्वेश्चन है, आपने बताया LCS में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ उसके बारे में आप elaborate करेंगे? जी People अच्छा, are really listening to you. people are listening, अच्छा, थोड़ा सा NDA कंटेंट भी हो जाता है तो I'll have to be careful, ठीक है, बट आपने देखा होगा ऑलरेडी जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर के ऊपर कैपेबिलिटीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, राइट। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड बेसिकली मैं इसका ये कहूँगा कि यूनिफाई कर रहे हैं, यूनिफिकेशन थिंक वो ऑलरेडी कल मेंशन भी हुआ था कि जो प्रोडक्ट्स हैं
whether Power Platform, Dynamics, ERP, F&O, Finance and Operations, या CE या other products भी HRM, unification आपको नजर आएगी, right? और वो unification not just application की होगी but उनकी administration की भी होगी, ठीक है? तो आप फॉर एग्जांपल अभी ऑलरेडी हो गया है कि आप F&O का जब डिप्लॉयमेंट करते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उसका डेटावर्स का एनवायरनमेंट भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, राइट? सो दिस इज ऑलरेडी लाइव, या पब्लिक प्रीव्यू में या GA हो गया उसका ऑलरेडी। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिफिकेशन जो है वो फ्यूचर में प्लान्ड है, एंड वो यूजिंग द पावर प्लेटफॉर्म होगा। ओके, थैंक यू। मेरा वाला सवाल ये था दिल के व्हाट आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन गिव टू पार्टनर्स टू लेवरेज फास्ट ट्रैक इन राइट वे। सो कुछ अगर आप अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स दें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पार्टनर्स के लिए देखें, जो पार्टनर्स लेवरेज करना चाहते हैं वो कर भी रहे हैं, ठीक है, एंड लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स हैं अभी तक वो आई थिंक वही ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ अभी तक डॉक्स भी नहीं देखे, ये जो ट्रेनिंग जो डायनेमिक्स 365 की सक्सेस बाय डिजाइन की जो ट्रेनिंग है या नॉलेज चेक है वो भी नहीं किया, राइट? जो बुक हम लोग ने लॉन्च की है या टेक टॉक्स है वो नहीं देख रहे बहुत दफा, फिर वो तो ये जो प्रोएक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि जो प्रोएक्टिवनेस है ना वो थोड़ी सी लेके आनी पड़ेगी। पार्टनर्स नीड टू रियलाइज नंबर वन के जब एप्लीकेशन इतनी फास्ट चेंज हो रही है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, अप्रोच, रिसोर्सेज उनको भी चेंज होना पड़ेगा। दे विल हैव टू, द लीडर्स विल हैव टू प्लान कि भाई के जो रिसोर्सेज हैं उनकी अपस्किलिंग के लिए डेडिकेटेड टाइम प्लान करना पड़ेगा, दैट्स वन। और जो रिसोर्सेज हैं देमसेल्व्स वो जब इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट मैनेजर है वो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है तो वो 3-4 साल पहले जिस तरह से करता था वो ना करे। देयर सो मच कंटेंट अब जो अवेलेबल है, टेक टॉक्स हैं, राइट, डॉक्स आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ लें एंड दे कैपिटलाइज ऑन इट। तो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में होने की जरूरत नहीं है, राइट? फास्ट ट्रैक का जो कंटेंट है उसको आप उसको सब्सक्राइब करें and keep it on their radar and try to obviously consume it before implementing it. That's what I would tell everyone. थैंक यू दिल, काफी अप्रिसिएशंस आ रही हैं कमेंट्स में आपके लिए। ग्रेट सेशन, पीपल आर लाइकिंग। नजर नहीं आ रही, थैंक यू। ओके, रहा so that message is from the whole community. अभी एक क्वेश्चन आया है आसिम जफर का जो पूछ रहे हैं कि how can fast track help in pre-sales in terms of sales page? अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि फास्ट ट्रैक का जो प्रोग्राम है इसकी इनिशिएशन ही एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, राइट? तो जो प्री सेल्स वाला पार्ट है या फिर जो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की डेडिकेटेड टीम्स हैं, हमारे टेक्निकल सेल्स एंड प्री सेल्स के लोग होते हैं, राइट? एंड उससे फिर आप जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हैं या अकाउंट एंगेजमेंट जो हैं, राइट, उनसे आपको इसमें ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। अगर कोई नीड बेसिस पे या एक्सेप्शन बेसिस पे यस फास्ट ट्रैक हेल्प ज़रूर करती है, बट वो इंटरनली जनरेट होती है बाय माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, राइट? जो माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट टीम्स है अगर वो एक्सेप्शनली रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी ये वर्कलोड इतना है राइट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, सो दैट्स आवर प्रायोरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल। ओके, थैंक यू अदील। एक और हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है डू यू हैव एनी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम फॉर पावर प्लेटफॉर्म? जी, अभी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम फॉर्मली डायनेमिक्स के लिए है फॉर CE एंड F&O, ठीक है? तो पावर प्लेटफॉर्म का डेडिकेटेड नहीं है, बट दैट्स अ गुड, दैट्स समथिंग जो इसके ऊपर काम हो रहा है। ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है, एंड हेल्प ऑब्वियसली जो आपके, अगर आप FO, F&O या CE के कस्टमर्स होते हैं तो फिर आप इनडायरेक्टली पावर प्लेटफॉर्म की हेल्प मिल जाती है। राइट, थैंक यू अदिल। अदिल एक क्वेश्चन और यूनिफाई होगा, सॉरी जस्ट टू ऐड, लाइक आई सेड यूनिफिकेशन हो ही रही है, राइट? तो right, wait and watch. yeah, because आजकल सॉल्यूशंस में CE एंड पावर प्लेटफॉर्म का काफी मेजर रोल हो गया है FinOps की इम्प्लीमेंटेशन में भी, तो इट वुड बी रियली ग्रेट टू सी इफ वी कैन गेट सम फास्ट ट्रैक सपोर्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम दोज स्ट्रीम्स। अदिल एक क्वेश्चन और है, लाइक इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट करती है फॉर पार्टनर्स एंड कस्टमर्स विच दे कैन लेवरेज, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि अपार्ट फ्रॉम फास्ट ट्रैक प्रोग्राम
what are the other programs where customers and vendors can engage with Microsoft during their project execution? देखिए इस तरह से देर आर कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर आप फास्ट ट्रैक कस्टमर्स हैं भी तो एक तो ये ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया होता है कि एवरी लाइक नॉन फास्ट ट्रैक कस्टमर्स भी जो अंडर 100 के हैं उनका भी गो लाइव रिव्यू तो हो ही रहा होता है, राइट। सो कुछ इन्वॉल्वमेंट उस तरह से होती है माइक्रोसॉफ्ट की, जो रिव्यू चल रहा होता है, ये मिनिमम इन्वॉल्वमेंट अब हो चुकी है, राइट। पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो यू नो वो अच्छा लेवरेज करने वाली बात है। अगर आप लेवरेज कर रहे हैं उस चीज़ को भी, इफ यू आर लिसनिंग, नॉट जस्ट कि अच्छा बस हमें किसी तरह से जो है ना बस माइक्रोसॉफ्ट को पेपर वर्क फिल करके उनको खुश करके, राइट। तो ये थोड़ा सा आई थिंक उसको भी वो किया जा सकता है। उसके बाद जो 100 से 300 के वाले जो कस्टमर्स होते हैं, फुल फास्ट ट्रैक 300 के अबव होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसके अलावा भी पार्टनर्स को फास्ट ट्रैक इज प्रिपेयरिंग फॉर पार्टनर लेड फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स, राइट। जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अभी सिलेक्टेड पार्टनर्स जो हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन होपफुली ये और हम एक्सपैंड करेंगे टू मोर पार्टनर्स, राइट। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें चल रहा है, जिसमें सारे पार्टनर्स ट्रेन होंगे इवेंचुअली टू लीड एंड टू ऑब्वियसली रन द फास्ट ट्रैक प्रोग्राम पार्टनर वाइज। फिर उसके बाद सोल्यूशन आर्किटेक्ट की बूट कैंप्स होते हैं, राइट। तो वो भी वी ट्राई के हम we are able to cater I think 30 each, about 50 to 60 architects every year, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि हर पार्टनर से डिफरेंट 40 to 50 पार्टनर से जो है वो आर्किटेक्ट्स आ रहे हो, तो वो ट्रेनिंग इट्स अ गुड 1 वीक लॉन्ग ट्रेनिंग जो आर्किटेक्ट्स के लिए। एंड एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो ऑब्वियसली जो सिलेक्टेड आर्किटेक्ट्स हैं वो जाके अपनी टीम्स में फिर इंफॉर्मेशन शेयर करें। सो दैट्स वन थिंग। उसके अलावा जो कस्टमर्स एंड पार्टनर दूसरे जो चैनल्स हैं वो ये हैं कि इनसाइडर ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ऑफिस आवर्स हैं जो कि होते हैं। सो अभी आपने देखा होगा कि कम्युनिटी ऑफिस आवर्स फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन का, यू हैव रिसेंटली हर्ड कि हमने एक्विजिशन की है, हमने सब्सक्रिप्शन का नया जो है वो मॉड्यूल प्रोक्योर किया है या एक्वायर किया है। तो अब सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग इनलिस्ट कर रहे होंगे प्राइवेट प्रीव्यू में उन कस्टमर्स को जो कि इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो आपकी उनसे एक कनेक्शन हो रहा होगा। ADLS जो था अभी रिसेंटली जो है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो कि प्रीव्यू में भी है, FNO की एक्सपोर्ट टू एजोर डेटा लेक, राइट। सो हुएवर इज इंटरेस्टेड कस्टमर्स एंड पार्टनर्स वो उन इनसाइडर यामर ग्रुप्स के ऊपर होते हैं, एंड वो डायरेक्टली प्रोडक्ट इंजीनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा एंड टेक पार्ट ले रहे होते हैं इन द फ्यूचर, राइट। तो दिस इज अनदर वे। ये इनसाइडर ग्रुप्स भी होते हैं, एंड देन ऑफिस कम्युनिटी आवर्स भी होते हैं जिसके अंदर रेलेवेंट टीम्स अवेलेबल होती हैं फॉर 1 आवर, राइट। और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हों वो आंसर कर रही होती हैं, राइट। तो वो ऑनलाइन देखें तो फास्ट ट्रैक के और दूसरे नॉन फास्ट ट्रैक भी प्रोडक्ट टीम्स के भी कम्युनिटी आवर्स होते हैं जो कि customers and partners can join in and ask their questions directly. Right. No, that's very informative. And like the way Microsoft has created all these programs and fast track, engagements where people can directly talk to the key architects, that's really helping the whole community. So thank you, Adil, for this. I think in the interest of time, if there are other questions, guys, you can leave it in the comments and we will try to get them answered. But yeah, back to you, Amar and Adil. Yeah. Thank you, Adil. So it was nice. We have now our next presenter. So I will hand over it to Kamar. Thank you, Adil. Thank you, Rachel. Thank you both. Thank you, guys. Hello, everyone. Thank you again thank you, Adil, for giving us that informative session. And the next session is that we are having a conversation with Mr. Hashim Zulfikar, and that conversation will be hosted by none other than Bilal Lakhani. So I hope you guys know Bilal Lakhani. Bilal is an aspiring journalist. He is, a social media influencer. He is a columnist, whatnot. So I'll just leave this to Bilal to come and introduce himself. I'll just add him here. Hi, Bilal. How are you? Hi, Kamar. Thank you so much. My name is Bilal Lakhani. I'm a columnist for Express Tribune. I'm a communications director for Procter & Gamble in North America and a winner this week, actually, of PR 40 Under 40.
I am absolutely thrilled and excited to be hosting this session today. आज हम लोग हाशिम जुल्फिकार साहब, who is an icon in the industry, आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे. He is the COO of Confiz. He has a very storied and interesting journey in life. वो अमेरिका में होते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी अमेरिका में छोड़ के वो पाकिस्तान आए. उन्होंने आईटी के अंदर डिफरेंट कंपनीज में काम किया एंड मूव्ड अप वेरी वेरी क्विकली अप द लैडर एंड देन स्टार्टेड हिज ओन थिंग. और आज हम उनकी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे इन हिज ओन वर्ड्स, एंड वी विल लर्न कि उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, what were the secrets to his success and what were the mistakes and failures that he made along the way, so that we can learn from him and his journey as well. So Hashim, first of all, welcome to our panel, and I'm looking forward to having a very exciting conversation with you today. Hashim, आप शायद mute पे हैं. You might want to go not on mute. Yes, now I think we'll be able to hear you. Thank you, Bilal. Thank you, Kamar and Faisal and everyone organizing the event. I'm very humbled and grateful for this opportunity and for a very glorified introduction. For a person with, who has had some struggle in life, tried to do some things, failed a lot, but very honored to be sharing my story with you guys. Hoping that my failures, my struggle in life can help others boost up their confidence and ambition level to do more in their lives. So very happy to be with you guys. बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर विद अस आल्सो. और आई थिंक कि ये बहुत जरूरी एक चीज है कि हम सक्सेस के साथ साथ फेलियर्स और जो असल एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में हम लोग बात करें, ताकि जो यंग जनरेशन है वो सीख सके कि एक्चुअली what is the real magic sauce versus what is the projected magic sauce. So Hashim, just to start off with, what are 2 or 3 pivotal moments in your life or pivotal decision points in your life that led you to become who you are today? Talk to us a little bit about your journey and what those big sort of moments were in your life, or perhaps there were no big moments and this was a series of happy accidents that led you to where you are today. So definitely जी कुछ ना कुछ key moments हैं life में. एक मेरी जो आदत भी रही है, I've life has been a mix of action, failures and reflections. जब मैं सोचता हूँ, I think a few key things in life, in my teenagers, जितना भी कोई arrogant या बड़े मिजाज का आदमी हो सकता है with zero accomplishments, I had that attitude. Perform in the school, I performed reasonably well. और फिर as luck would have it, मेरे माँ बाप ने मुझे GI के इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भिजवा दिया. और वहाँ पहले ही सेमेस्टर में वो पहले बैच में मैं GI के था और उन लोगों ने हमें बुरी तरह से उड़ा दिया. That was the first time जब मैंने ना मैसिव किस्म का फेलियर लाइफ में देखा, एंड आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग कि शायद नहीं, यकीनन इतना दम नहीं है मेरे में जितना मैं उससे पहले 17 साल की उम्र में सोचा करता था कि है. तो वो एक पहला टाइम था जहां आई थिंक ह्यूमिलिटी मेरी पर्सनालिटी के अंदर सही मानों में कहीं इंजेक्ट हुई. एंड एज लाइफ वुड हैव इट, धक्के वक्के खा के कहीं मैं अमेरिका पढ़ने चला गया. .com के बूम पे आई वर्कड इन startups, a very high profile, highly funded startup, जो कि again started with a seed capital of $200 million and in the end ended with a sale of $6 million. So I was a part of degenerating $194 million. वहाँ पे भी काफ़ी अपने नफ्स के साथ, अपनी अकड़ के साथ लड़ना पड़ा. और I realized ठीक है, failures are a part of life. But all this journey while I was in the US, एक बात कहीं मेरे दिमाग में बिल्कुल तय थी यहाँ से जाने से पहले कि मुझे वापस आना ही है. जब मैं वहाँ पे था,
तो आई थिंक जैसे मेरा ख्याल है जाने वाले दिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे शायद अभी भी ऑडियंस में पाकिस्तान से बाहर रहते हों, तो जाने वाले दिन तो बहुत सारे लोग ना वापस आने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर मैं देखता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग वहाँ नहीं आ पाते, और उस जर्नी में कहीं ना कहीं मैंने भी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन दे दी। वो बहुत बूमिंग टाइम, जैसे आजकल का टाइम है, फॉर एम्प्लॉइज इट वाज एन एम्प्लॉइज टाइम एट दैट टाइम। आई वाज ऑन एन एक्सेलरेटेड ट्रैक टू गेट अ ग्रीन कार्ड। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जब मैं इस जर्नी में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। उस टाइम पे फिर मैं इस सोच में पड़ गया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं यहाँ बैठा रहूँगा, पैसे वैसे कमाता रहूँगा, and happy to be counting money, but I'm really away from my family in this time. If I lose my life, somebody there loses their life, so it would be a huge regret that I cannot afford to take in life. So I resigned maybe within a couple of weeks after that and came back to Pakistan. और बड़ा सोच समझ के मैंने कहा जो भी हुआ देखी जाएगी, हम पाकिस्तान तो चलते हैं, एंड हेंस आई केम बैक टू पाकिस्तान। हाइंडसाइट इस बात को अब 20 साल हो गए हैं तकरीबन, एंड कुडंट बी हैप्पियर। I have cherished a lot of personal time with my family, closer to the values that I wanted to be in. पाकिस्तान आया और I started a job with a company. Interestingly उस वक्त भी ख्वाहिश बहुत strong थी that I would do something on my own. And while I actually started my company in 2005, मैंने उसका नाम 2001 में ही सोचना शुरू कर दिया, जैसे लोग अपने बच्चों के नाम सोचते हैं, एंड आई रजिस्टर्ड द डोमेन नेम इन 2001। तो जो नाम मुझे चाहिए, मुझे पता नहीं था मैंने क्या करना है, कंपनी बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, उस कंपनी का काम क्या होगा, बट नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2001 में रख के डोमेन रजिस्टर कर ली। सो देन आई स्टार्टेड माय जॉब, एंड इस जॉब में यहाँ से आई थिंक डेफिनेशन ऑफ माय सब्सिक्वेंट करियर स्टार्ट्स टू शेप अप। Acha, sorry, Hashim bhai, I'm gonna stop you here. I want to continue this part of the story, लेकिन इसके पहले I want to go to one or two things in the story that you shared so far, ताकि जो audience है उनके लिए ये चीज helpful हो। आपने ये तो कहा कि आपने नाम पहले select कर लिया था, even though the company started much later, लेकिन और आपने अपनी GIK का फेलियर, फिर अमेरिका में जाना, फिर अमेरिका से वापस आने का बड़ा डिसीजन भी आपने बताया। एट व्हाट पॉइंट डिड यू नो कि आपको अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है? मतलब आपने नाम तो चले रजिस्टर कर दिया, लेकिन इसके पहले आपने सोच लिया था, क्या GIK में था, क्या अमेरिका में था, कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस किस्म का काम करना है, या आप जैसे कि हमारी एक लार्ज डिग्री ऑफ ऑडियंस भी होगी कि हम करियर में थोड़े से आप आवारा फिर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, और फिर जो है वो पानी की तरह आपका रास्ता खुद ब खुद खुलते गया? कैसे ये जर्नी थी? क्या आपका एक डिलिबरेट विजन था, और कब ये बना विजन कि मुझे ये करना है? सर एक तो पहले यू हैव टू कंफर्म टू मी, ये सवाल आपने मुझे एम्बैरस करने के लिए पूछा है या इसकी इंटेंट क्या है? क्योंकि इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि इवन टुडे आई थिंक आई ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि लाइफ के साथ करना क्या है। सो आई थिंक अगर आप मुझे पूछें तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि मुझे 10 साल पहले या 40 साल पहले पता था। मेरे ख्याल में आज भी शायद नहीं पता, बट ओवर टाइम जो एक लेसन मैंने बार बार मार खा के सीखा है कि मे बी 1 in a billion people know very quickly कि उन्होंने करना क्या है। It is a gradual, at least it has been a very gradual discovery process for me, जहां आपको थोड़ा करके समझ आता रहता है। Again, the audience might have diverse religions, but my belief in God, there is a journey, there is a destiny जो आपको आहिस्ता आहिस्ता किसी तरफ खींच रही होती है। आप मेरे केस, मैं बार बार जब आप कहता हूँ दैट मीन्स कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देयर आर हाइज, देयर आर लोज, आई गॉट लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन हर दफ़ा ही कहीं ना कोई रास्ता निकल आता है। अगेन अगर मैं अपनी लाइफ को समराइज करूं तो इट इज़ full of failures and it is full of rescue from unknown divine sources. I just quickly I'll give you an example. जब मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया तो मेरे वालिद ने मुझे टोटल
$10,000 दिए थे और 7 नेक तमन्नाएं दी थी। उन्होंने कहा बेटे मैं, और ये वो टाइम है जब पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, डॉलर ऑल ऑफ अ सडन क्लाइंब फ्रॉम 40 rupees to 62, 63 rupees. He had been saving money in a dollar account which got froze. So we are forced to sell at 40 rupees and buy from open market at 60 something rupees. बहरहाल वो $10,000 लेके मैं गया, और जब पहला सेमेस्टर खत्म हुआ तो मेरे हाथ में 300 कुछ डॉलर थे और $5,500 का ट्यूशन बिल था, और सारे बिल तो थे ही थे। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैंने क्या करना है, एंड दिस वाज लाइक आई फेल्ट वेल दिस इज एंड ऑफ इट, अब शायद वापस जाने का वक्त है या ऑड जॉब, इलीगल जॉब करने का वक्त है। व्हाइल आई वाज थिंकिंग, तो 4 माह पहले मैंने किसी टीचर को अप्रोच किया था फॉर एन असिस्टेंटशिप जॉब. He had denied. 4 months had gone, and one day I just woke up and had his email, "Are you still interested?" And I said to myself, interested? What? I am actually desperate. So I said yes. My tuition fee was waived, and I started getting a stipend, which made me with what felt like a very rich guy overnight. So my life has been failures, and this kind of magical helps. So direction wise, it's a gradual discovery all along, जहां आपको अपनी strengths, time की needs, ये चीजें समझ आती रहती हैं, और वो आगे भी ऐसे ही मुझे लगता है कि चलता रहेगा. बिल्कुल. And now sort of we'll come back to your story where we left off. लेकिन the reason why I asked you this question and the reason why I think कि आपका आंसर बहुत powerful है is because I feel the same way कि जिंदगी में बहुत कुछ किया है लेकिन ये प्लान करके नहीं हुआ. प्लान तो पता नहीं क्या किया था, हो कुछ क्या रहा है, और लेकिन it's about going with the flow. तो अगर बहुत सारी हमारी सोसाइटी बहुत प्रेशर डालती है बच्चों के ऊपर और यंग स्टूडेंट्स के ऊपर के to have it all figured out, to know exactly what they want to do. एंड सच ये है कि जो लोग कामयाब भी हैं उनको भी नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बट देयर इज एन इंटेंट, देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ व्हिच सॉर्ट ऑफ हेल्प देम कंटिन्यू मूविंग. सो आई थिंक कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे एक इसको फुल स्टॉप देना था. अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं. इसके पहले मैंने आपको इंटरप्ट किया था. अब आप पाकिस्तान आ गए अमेरिका से, और आप जो है आपने अपनी कंपनी का इवेंचुअल नाम रजिस्टर कर दिया, डोमेन आपने रजिस्टर कर दिया है. अब आप वहीं से कहानी शुरू करें अपने पिवट. सोसाइटी का प्रेशर बच्चों और जवानों पे नहीं, मेरा ख्याल है सारी उम्र तक रहता है. I think हमारी सोसाइटी इज अबाउट प्रेशर, बट समहाउ वो प्रेशर हैज टू बी अ डाइग्रेशन फॉर एवरीवन. अगर आप उसको अपनी जिंदगी में डाइग्रेशन से ज्यादा जगह दे दें तो आप अपनी ज़िंदगी में से किसी और चीज़ की जगह बाहर निकाल रहे हैं. इट्स अनफॉर्चुनेट. मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनका ना कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि मैं तो ये चाहता हूँ और मेरे अब्बा, मेरी अम्मा या फलां ये चाहते हैं. So for anybody who wants to pursue anything worthwhile, मेरा एक जवाब थोड़ा सख्त, थोड़ा तल्ख जो लोगों के साथ रहा है कि अगर आप ये चैलेंज ओवरकम करने को तैयार नहीं है कि मैं अपने अब्बा या अम्मा या बीवी की मुखालफत के अगेंस्ट कुछ परस्यू करना चाहता हूँ, तो फिर उसकी अगली हार्डशिप्स जो हैं वो बर्दाश्त करनी शायद मुमकिन ना हो. सो या दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी where we feel far more accountable to the society than you actually ought to, but this is something which should be just one of the many challenges that you would face in life, and this is what it should be. Bahral, coming back, मैं पाकिस्तान आ गया and I started working with a company, और वहाँ पे हमारा पहला चार्टर, this is again, ये बात है 2001 की. It is immediately after 9/11. So all businesses who had flourishing, thriving software export businesses to the North American market were kind of grounded at that time. So, geopolitical situation was at its worst that it has been historically. तो हमने एक जर्नी शुरू की पाकिस्तान में कारोबार बिल्ड करने की for the company that I was working with. मुझे उस टाइम पे सेलिंग के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता थी. But thanks to the people who mentored me, they encouraged me, and I started trying to build a business for the company in Pakistan. और हमने fortunately, मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने की जर्नी में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, which was मेरी ओपिनियन में a little ahead of time, supply chain optimization का
यहाँ पाकिस्तान में सर्विस शूज़ के साथ शुरू किया इन कोलैबोरेशन विद कैनेडियन कंपनी, और वो प्रोजेक्ट अगेन मेरी लाइफ का एक और बड़ा सिग्निफिकेंट चैप्टर था. सो फॉर द नेक्स्ट 2.5 years मुझे उससे पहले सप्लाई चेन का मतलब भी नहीं मालूम था, रिटेल का भी मतलब नहीं मालूम था. और मैंने कहा अब हम अपनी कंपनी में भी बार बार ये कहते हैं कि youthful naivety is something actually very good and you should retain it in your life as long as you can. जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं शायद हमें अकड़ थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, बट वेल दैट वाज आई वाज यंग, 25-26 साल का शायद मैं होऊंगा उस टाइम पे. सो विद यूथफुल नाइविटी आई अंडरटूक अ मेजर अंडरटेकिंग कि मैं 100-250 दुकानों की चेन की सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करूंगा without really understanding what I was getting into. So next 2.5 years were extremely hectic. I put in a lot of midnight oil और हमने बहुत सारा काम किया only to discover के उसमें से बस हमें बहुत महंगी सी ट्यूशन मिली, बेचारे क्लाइंट को सिवाय कागज़ों किताबों के कुछ भी नहीं मिला. तो this was actually the third time that I had crashed in a major way. और the client had spent over $250,000 at that time. From Pakistan standard, that was a very major kind of a money for that time back in 2001, but they did not get anything. The project was kind of called off. My employer was bleeding money, the customer was running out of patience, and also I kind of ran out of patience, and I switched jobs because the project was being called off. And this was what I would call, probably from a personal confidence standpoint, the lowest point in my career. मेरा उस वक्त कहीं ख्याल ये था कि मेरे बस की बात नहीं है. मैंने अपनी कंपनी का भी ढेर सारा नुकसान कराया है और मैंने क्लाइंट का भी ढेर सारा नुकसान कराया है. वो सारे बड़ी तसल्ली देते थे. Nobody was rude or harsh or anything, but I felt that I have let down a lot of people in a big way, including myself. So I kind of took an escape, और ये escape मुझे आज भी कई दफ़ा haunt back करता है. I feel like I quitted, whereas maybe I should have had a thicker skin. मतलब यहाँ मैं qualify अपनी statement को यूँ ज़रूर कर दूँ कि यहाँ 2-2.5 साल की काफ़ी ठीक ठाक ख्वारी थी. I tried to push it as much as I could, but perhaps I could have pushed more. आज मेरा ख्याल ये है कि maybe I should have pushed more. Bihar, I moved on to a new job, which turned out to be very good for me. और again यहाँ मैं कहूँ कि वो जो destiny वाला factor है, that maybe played in, and I went to start software services for TRG. I was the first guy to start software services for a call center company. मैं पहले दिन जब गया तो my boss was based in Boston, whereas I was in Lahore. There was no desk or computer assigned to me the day I joined. और कहीं ना कहीं accounts department में किसी कुर्सी पे मैं बैठ गया with a laptop, and later in the day when the US day started, I was told my first job would be to look for an office space because the call center office did not have an office space. And we also started to sell here. So that was a journey जहाँ पे मुझे team, office, client base वाला part थोड़ा easy था, सब build करना था. So fast forward the time, 12 महीने बाद तकरीबन we were at $1 million per annum revenue run rate. 25-26 बंदों की हमारी टीम थी. Office had been built, and I felt like यार जो मैं साल पहले सोच रहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, ये तो ठीक ठाक ही हो गया काम. इस पॉइंट पे जरा रुकिएगा, and then I'm going to ask you to continue. कहाँ से आया वो कॉन्फिडेंस फिर? मतलब आप you were at the lowest point of your life confidence wise as you were leaving the previous job where you quit, where you felt कि you weren't good enough, और फिर आपने एक नया रोल शुरू किया और वहाँ फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ तक कि डेस्क भी नहीं था बैठने का, वहां से उठा के आपने 25-26 लोगों की टीम बनाई, $1 million रन रेट के रेवेन्यू तक पहुंचे. ये क्या सिर्फ did it come because you showed up at work every day and said okay I'm going to take it on, या
अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन थी, कुछ कहीं से आपने स्ट्रेंथ पाई कि नहीं यार ये करना है, ये क्या हुआ बीच में साइकोलॉजिकली? अंदर तो कुछ भी नहीं था जी उस वक्त। अंदर तो डिजेक्शन थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था. आई थिंक टू मेन थिंग्स हियर. Tanveer Hussain was my boss at this time, and he was instrumental in building my confidence, because मुझे बहुत दफ़ा एक बात ये लगी that I lose my patience very quickly, and every time when I was like, I felt like कि मैं तो यहाँ गुस्से से या किसी प्रॉब्लम से फट जाऊंगा, he was very calm, very cool, and he would always have some kind of solution to the problem or some things to explore. So वो 3-4 दफा when I saw, yeah, this guy doesn't lose his cool and is always able to find some kind of an answer, that made me again start to reflect, why do I get jittery about any problem situation? Well, things can be solved always, and this guy has shown that he can solve the problem. And again, by far, my belief, again, apologies to anyone who may not have the same belief set as me in the audience. जितना जितना मैं करता गया, आई थिंक उसमें जितनी मेरी एफर्ट थी उससे ज़्यादा ही आउटकम मुझे मिलती रही. तो वन थिंग एट अ टाइम, वन ईयर इज वन थिंग, इट्स 365 days, एंड देयर वाज सम पार्ट ऑफ मी दैट फेल्ट कि यार करना तो है. तो जो वो फ्रस्ट्रेशन या depression वाला time है, I did not allow that to be more than maybe 3 weeks or so, and you fall down and you rise up again, you say let's get going, and that's something that has helped me a lot. So you do fall down a lot of times, and a lot of times एक और जो problem शायद मिलता जुलता है उससे जो आपने पहले बात की, when you fall down there are always people very happy and blowing whistles when you fall down. That's also a part of the thing. So because for one person who's happy that you fell down, there are at least 10 who are willing to help you get up. So it's like training yourself कि आप उन 10 लोगों को देखें और अपना हौसला बढ़ाएं और आगे बढ़ जाएं. तो कोई मैजिक सॉस नहीं थी जी उसमें. इट्स जस्ट हरकत में बरकत है. आप जब कोशिश करते हैं तो यूजुअली उसमें से, मेरे केस में जब भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है उसमें बहुत अच्छी ही आउटकम निकल आती है. वी ऑफन अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्ट्रगल, ऑफन. तो लगता आपको ऐसे ही है कि ये कोई पहाड़ है. जब आप शुरू करते हैं तो इतना कोई पहाड़ नहीं होता, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ दैट यू चेज समथिंग तो फिर आपको लगेगा यार ये क्या हो गया. मतलब देयर आर सम फेलियर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई रास्ता निकल आता है सबके लिए. तो द गुड थिंग इज लाइक, मतलब यहाँ पे अब the next chapter going towards starting the company, मुझे जो लगता था जिन लोगों ने साल पहले मुझे सिर्फ तसल्लियाँ दी थी, they actually appreciated and had some respect for the hard work that we had put in there. तो at this time जो project मैंने service shoes को बेचा था, again this guy has been a mentor to me. Their CEO Umar Saeed is a Harvard MBA. He called me in because the guy who was leading IT for service was being shifted to lead a new business venture for them, for surveyed pharmacies, and the position for head of IT was vacant at that time. So he invited me to try and convince me why don't you lead IT for service. I was very happy, like I was on cloud 9 at that time. I also had a huge respect for this guy. तो ना करने के चक्कर में, when I was having that conversation, तो I, without thinking anything, I said, okay, I'll do it if you outsource it to a new company that I can create. I don't know where that came to my head from. Whatever happened, and this guy said, okay, give me a day to think about it. My office was a 20-minute drive from their office when I had that conversation. Although he had said he wanted a day to think about it, when I was in the parking of my office 20 minutes later, I got a call from him, let's go. And then I had no space to go back except to start a company, and hence the domain name that was registered 4 years ago had to come to fruition, and I started the company. So वो company start हो गई.
informally in March of 2005 and formally with legal structure in July 2005. और पहला 1.5 साल तो जो उनके डिफरेंट अफेयर्स थे उनको स्ट्रीमलाइन करने में लगा, और 1.5-2 साल के बाद वी स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट इज द शेप ऑफ द कंपनी टू टेक. यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना शुरू किया, एंड व्हाट आई रियलाइज कि ये सारी ख्वारी धक्के खाने में आई हैड अंडरस्टूड, आई एंड आल्सो quite a few people in my team had understood retail to a very good degree. We had been working with the largest retailer, organized, at least nationally organized retailer in the country. मेरा पिछला 2.5 साल का experience और 1.5-2 साल ये, तो we had a team that understood retail, so we figured that technology का अगर हमने कोई impact to business देना है, तो it has to be driven by business, for which knowledge of industry, the problems that matter is essential. यहाँ एक और side note, because a lot of people here are from consulting background, एक ऐसा lesson है, this is again different from my journey, but I'd love to share. In 17, 18, 20 years of my career, most of which is consulting, मैंने बार बार एक चीज देखी, मैं आज तक इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाया. हम टेक्नोलॉजिस्ट लोग यूजुअली प्रॉब्लम्स को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. we feel the solution to problems has to be a sci-fi kind of a solution, whereas mostly businesses have very simple problems. तो वो बड़े सादे से प्रॉब्लम होते हैं और हम अपने घर बैठ के उनको कुछ और ही इमेजिन कर लेते हैं और उनका सोल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं, whereas the real life problems are much simpler. So what I learned, going back to my time, what I learned was we understood retail, we understood what the problems were, what simpler solutions to those could look like, and we decided कि हमारा focus तो retail में ही होना चाहिए. At that time एक और बहुत ख्वाहिश होती थी, जो अभी भी है किसी हद तक वैसे, that I wanted to build a product company, and I've spent a fair share of my life building software-based, technology-based products as well. But at that time, if I go back to 2007 when I was doing this discussion of what our strategy should be, so we felt कि यार product बनाना for a single territory is useless. You just cannot be competitive. And hence we decided to partner with product companies rather than build a product of our own. So, I started exploring, we talked to SAP, we had quite a fair bit of conversations with Oracle as well. And as luck would have it, I had, fair bit of connection inside Microsoft. तो हमने Microsoft के साथ business applications के around partnership sign कर ली. और this was the time when we started implementing Microsoft RMS. So RMS, for anyone here who has used RMS, was a very simple software meant for mostly small and medium भी शायद थोड़ी stretch हो, but lower middle market और small market retailers के लिए point of sale और inventory management का एक basic सा product था. Which we started selling and implementing in Pakistan, and I think by 2011 we had a very significant market share in the Pakistani market. I think anyone who had any sizable business, उनका एक बहुत बड़ा part अल्हम्दुलिल्लाह मंतक के साथ उसमें काम करता था. This is the time when Microsoft acquired, I think एक IP उन्होंने Columbus IT से ली थी और एक I think LS retail वालों से ली थी, and they clubbed those together and launched AX for Retail 2009. And again, not realizing what I'm getting into, Microsoft offered all RMS customers to trade in their RMS licenses and get equivalent licenses for AX 2009. This was meant to be a fully integrated solution. जहाँ फाइनेंस, HR, रिटेल ऑपरेशंस ये सब एक सिस्टम में आ जाएंगे. Sounded like opportunity of a lifetime, and we just took the leap and jumped into it. The good thing for us was, एक चीज जो हम आज भी बहुत religiously करते हैं, we've done a lot of work, we've made money,
in most of the work that we do, but at times when we don't make money, we've never jeopardized the interest of our customers. So in Pakistan, because मैं एक ही industry में बहुत देर रहा भी हूँ, we've had very good relationships with retailers. So I generally, when I try to sell something, it's not that difficult to convince someone. तो हमने एक retail का पहला project sign कर लिया with Stylo shoes. This was the first customer, and we started implementing. And I don't know, so मैं numbers यहाँ ना share करूँ, लेकिन कुछ share जरूर कर दूँगा. और आप शेयर कर सकते हैं by the way numbers if you want to and you're comfortable. क्योंकि इसमें और लोग भी involved हैं, but वो project हमने सोचा था शायद कि 100 man days का होगा, and that ended up to be more than 1500 man days. So it was a huge slippage. It was a fixed cost project, and when I completed that project, I told the customer कि देखें यार, जो मेरा man day rate है ना, जो consulting industry में हम रोज सुबह शाम use करते हैं, वो मेरे घर में जो पेंट करने वाला बंदा आता है ना, उससे भी कम है. So I have these high profile consultants who've been working for you, who transformed whatever degree your business has been transformed. However, what we've charged is that of an ordinary, some low skill labor class kind of rate. तो बहरहाल वो सारी की सारी मुश्किल फाइनेंशियल काटने का एक फायदा ये हुआ, we had developed a new competency which we were ready to go ballistic with again. तो well, AX 2009 के साथ एक फायदा और जो हुआ वो, I think this was the time when Microsoft had at least I haven't seen Microsoft look backwards on going business applications as a major focus. Although उस टाइम पे डर ही लगता था कि ये विंडोज और ऑफिस वाली कंपनी है, किसी भी दिन अबैंडन ना कर दे. Microsoft had 4 ERP systems. At least I never felt confident कि ये GP के रास्ते पे चले जाएंगे, कि किस रास्ते पे जाएंगे. Maybe they understood, but there was this fear. But since that day, every year Microsoft has had an improved, better, more sophisticated product that has helped us also build better, more meaningful, stretching, growing relationship with our customers as well. So 2011 onwards, अगर आप मुझे पूछें, तो from the standpoint of giving a competitive offer to our customers, Microsoft has been a great ally in this journey. हम 2014 में कहीं पाकिस्तान तक ही अपना फोकस रखते थे. The great thing happened, 2 of my friends, Zartash and Raza, who were running Confiz in parallel, and I was running Mantak in parallel. Mantak needed some funding at that time. I was talking to friends because we wanted to expand regionally. So I was talking this to friends. First thing, we got some funding from Confiz. 6 months later, we decided, well, we should actually deepen our marriage. From an investment, it became an acquisition, and Mantak became a part of Confiz. So वहाँ से फिर एक और जो one thing that other than money and regional presence, Mantak में एक चीज जो हमें महसूस होती थी, और जो आज भी I think is predominantly correct for many Microsoft partners, and I think implementation partners from other ERP players more so. Microsoft की एक strength है that Microsoft is an engineer-friendly ERP system. So if you want to adapt the technology to the business, at least in my understanding and opinion, Microsoft is more customization friendly. Whereas Mantak में हम क्योंकि बहुत ज़्यादा consulting background से थे, तो we were not great engineers. So जब ये acquisition हुई, उस वक्त I think Mantak का headcount 60 something लोगों का होगा, Confiz का 150 people का होगा, but Confiz had a very strong engineering culture and practice. So the combined entity had a much bigger territory, much bigger set of capabilities, and enhanced our capability to do more interesting stuff with our customers. So again, मैंने कहा 2011 से onwards अगर आप पूछें, there's been no looking back. फिर हमने UAE का chapter खोला. UAE has been, alhamdulillah, a great success. And about 4 months ago, we've been very actively seeking to grow in the US, and that thing is also shaping up nicely. हमारा
footprint in terms of territory भी बढ़ना शुरू हो गया, industries में भी बढ़ना शुरू हो गया. So, alhamdulillah, gradually one thing leading to another, things have been getting better and better. So this is a little about me. बिल्कुल. I mean, what a dramatic story. और बहुत सारी spaces as you were telling your story, I was like, I want to stop you and ask you more about this part and this part and this part. And I think if I started that, we would be at this till 2 days from now. लेकिन एक बहुत powerful सवाल है और आपकी जिंदगी का रियली एक टर्निंग पॉइंट था जिसको आपने बहुत प्यार से कहा कि यू डोंट नो व्हाट टुक यू ओवर इन दैट मोमेंट, लेकिन मुझे उसको थोड़ा सा अनपैक करना है. आपको जब बेसिकली द पॉइंट वेयर यू सेड कि आप नौकरी कर रहे थे एंड देन सर्विस वांटेड यू टू सॉर्ट ऑफ कम ऑन बोर्ड और आपने बोला कि नहीं आप उस कंडीशन में आएंगे कि जब आप एक नई एजेंसी खोलेंगे और वो ये बिजनेस जो है आपको नई एजेंसी में देंगे तो देन वी विल स्टार्ट. एंड एसेंशियली ये एक ऐसा डायलेमा है जो बहुत सारे यंग लोगों के माइंड में होता है, इनफैक्ट नॉट सो यंग लोगों के माइंड में भी होता है कि यार मुझे नौकरी करनी चाहिए या मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए, अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए. और स्पेशली आजकल के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज वेरी प्रोनाउंस्ड क्योंकि स्टार्टअप कल्चर जो है इट्स ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल कि अगर आपने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया और एक प्रेशर भी है यंग लोगों के ऊपर टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स. तो you said, or it feels like it was a spur of the moment decision for you to start your own business or to start your own firm. Lekin ek spur of the moment decision, maybe there's a lot that goes into it behind the scenes that allows you to make that decision. So was it genuinely a spur of the moment decision? Yeah, were you thinking about it for a long time and when the right opportunity came you said ki ye cheez ab theek hai? Aur kya advantages hain aur disadvantages hain in your journey having done both sort of successful and not so successful at jobs and struggled and not so struggled in a business? क्या आपने सीखा in context of both of those? And what advice would you have कि किस किस्म का person can start their company, should start their company, what sort of person or at what age should you focus on doing a job or learning from your boss? Give us a little bit of color कि आपने वो कैसा decision लिया और दूसरों के लिए आपकी क्या advice है? देखिए मैंने कैसे लिया, it was genuinely 100% spur of the moment thing. I had this deep desire to do something, otherwise I would not have registered a domain name. But when I went into this conversation, I just wanted to say no in a way that salvages my relationship. Coincidentally, I realized, the guy was crazier than I thought. तो मेरे केस में ये ऐसे नहीं था, मुझे ये भी नहीं अंदाजा था कि whether this would be a viable business or not. But since I had said it, I had to own it. एक चीज़ जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा हेल्प करती रही है और अभी भी उसका रिवर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा आज भी तंग करता है, is analysis paralysis versus just taking the plunge. Sometimes or most of the times in life, you just go ahead and do what you think needs to be done. I mean, I'd say there is a feeling to things which goes beyond a certain kind of calculation. Be it in my case, अगर मैं 2-3 बड़े फैसले आपको बताऊं तो अगर मैं उनकी प्रोज एंड कॉन्स करने बैठ जाता ना तो शायद कभी भी कोई क्लियर कट आंसर ना आता. Should I have returned to Pakistan or not and quit my green card application? The day I quitted my green card application, I was not even sure कि ये अगली दफा बिजनेस वीजा के वक्त कहीं कोई ऑफेंस तो नहीं होगा इनको, ये मुझे बिजनेस वीजा ही डिनाई करना शुरू कर दें. But what, I just did what I wanted to do. Similarly, the day when I started the company, it was a pay cut to me. और मैं अच्छे भले बड़े ऑफिस में से 1200 स्क्वायर फुट के दफ्तर में आ गया. People reporting to me had much bigger offices than the desk that I had in my office. And एक और चीज जो मुझे उसमें याद है, sorry, but the first non-service, which was my anchor customer sales call, was to a company, for whoever knows, in Lahore, Anarkali Bazaar में उनका एक दफ्तर था. And I went to their office and the guy made me wait for him for at least 45 minutes on a wooden bench. It was not even a proper seat.
And those 45 minutes were actually, I don't know how I forgot about that being a defining moment in my life. I absolutely hated every minute of those 45 minutes. और मैं वो 45 मिनट में बार बार सोचता रहा कि यार मैं ये करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में या मैं नहीं करना चाहता. I can't tell you why, but maybe I asked that question to me 45 times in those 45 minutes, and every time the answer was an astounding yes. By the time I did not get that business. I still absolutely love the guy who made me wait for himself. बट उसका एहसान ये है कि मुझे आज भी ये बात क्लियर है कि मैं उस दिन क्लियर था कि मुझे यही करना है और इसकी जो भी ख्वारी है, पे कट है, इस तरह के लोगों से डील करना है, वो सब मुझे कबूल है. लेकिन क्यों? क्या आपको दिख रहा था? क्योंकि एक तो आपकी बहुत पावरफुल आपकी जिंदगी का जो एक उस स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन का मुझे जो लेसन दिख रहा है वो ये है कि you weren't afraid of asking for what you wanted. मतलब you asked for the stars, you said मुझे आप business separate उसमें दें. You were never expecting them to say yes, so you actually verbalized something big. लेकिन जब आप उस बेंच पे बैठे हुए थे गर्मी में for 45 minutes, तो that was a difficult moment. क्या आपको दिख रहा था कि ये कंपनी एस्टैब्लिश हो सकती है, इट कैन मेक इट बिग, दैट्स व्हाई इट्स वर्थ इट? क्या आपको दिख रहा था कि यू सेड कि नहीं मुझे ये चीज करनी है? In all honesty and fairness, I don't want to over glorify or hype up anything. I think to me it was not about making it big. It was creating something that I had created. So maybe starting point of the journey it was my signature, it was my legacy. So this was me in 2005. And then there is the next episode to this question, 2015. Despite against all advice, जब भी मैंने plunge ले ली, is to be acquired by Confess. So multiple things going against that. Family pressure of social pressure, family नहीं कहना चाहिए, of foregoing the title of the CEO. So from CEO of a company to not the CEO of a company. 10 years of not having a boss to having a boss, taking permissions, a lot was about to change. And people said, Pakistan में partnerships कभी काम नहीं करती, तुम लोग आपस में लड़ पड़ोगे, so on and so forth. Because I had known the guys for well over 10 years, दोनों को, मुझे ऐसा कोई टेंशन ना थी और ना अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कभी हुई. तो what I learned was it was great to have your signature, but two are better than one. So collaboration की उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो वैल्यू नहीं थी जो फिर 2015 तक या आज के दिन में है. The next lesson learned was collaboratively you can do a lot more, and you need to learn to create space for each other. ये आप शादी में भी सीखते हैं, जिंदगी में और जगह पे भी सीखते हैं. तो the next chapter in my life was how can you have your signature as well as some kind of collaboration. And I think maybe 2 or 3 years into Confess, we took it another step, which I think is the most evolved part of our thought process, and is very, very common in modern cultures like Bay Area. So हमने 2017 या 18 में we started offering every employee in Confess to become a shareholder in the company. So we offered, I do not know of any other company who allows or offers stock option plan to 100% of their workforce. So we created a pool of about 20-something% of the company, which could be purchased by our employees at a significantly discounted rate, and hence company की जितनी भी growth है, profitability है, उसमें वो सब हिस्सेदार भी हो सकें. The great thing outcome of this, I think, the moment we started it, our revenues, मेरा ख्याल है, tripled in 2.5 years. So this was another evolution to our thought process कि आज की लाइफ में जरूरी नहीं है that you have to start something to make money. So you have to be careful what you want in life. अगर मैं यहाँ किसी का को भला कर सकूं तो वो ये है कि जो नाइविटी में मैंने कभी चीजें सोची नहीं थी वो आज लोग सोच सकते हैं. You have to understand what you want. Is it freedom? Is it money? Or if it is something else. अगर तो वो freedom है, so I would say you think about why you need that freedom, because that freedom actually, in my case, that freedom made me make so many mistakes
that a more structured, accountable system probably would have prevented me from making. So if you think you are ready for that kind of freedom, you really know that you are different and you want to do something different, by all means go ahead and do it. लेकिन अगर आप मतलब if it's about financial gain, it's about collaboration, so there could be different ways to it. I mean, कंपनियां शुरू भी करनी है तो I think as groups of people करें, where you have a grander vision to do it. So as long as you know what you're chasing, you can decide based on that what is the right way for you. लेकिन अगर आप कुछ शुरू करें कंपनी, तो एक बात को बस ध्यान में रखिएगा कि फिर डर भर नहीं होना चाहिए. Failure, embarrassment, and all those things, they are part and parcel of this. Sitting on that wooden bench, in all my previous jobs, my money was paid to me in a very dignified way. Sometimes, at least if you are dealing with not so well developed economies, that can also go sour. A lot can go wrong. A lot can go wrong. इस डर और शेम को किस तरह खत्म करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक कहने को तो बहुत आसान बात है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है. और क्या कोई तरीका है इसको टेस्ट करने के पहले, बिफोर डिप योर टोज बिफोर जंपिंग इनटू द ओशन, कि क्या आपका ईगो जो है वो ये धचका उठा सकेगा या नहीं? हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ डू यू टेस्ट इट आउट? सर, आई डोंट थिंक ईगो कभी भी वो झटका, आई डोंट नो, देयर इज नो स्ट्रेट आंसर, बट आई थिंक ईगो वो झटका तब तक नहीं उठाएगा जब तक कि आपकी रीजन वो झटका उठाने की आपकी ईगो से ज्यादा बड़ी ना हो. सो दैट्स व्हाई आई सेड यू शुड नो व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. एंड एवरी टाइम मैंने कहा किसी भी बड़े फैसले में जब आपको ये पता हो कि मैंने ये क्यों किया है, एंड अदर थिंग्स कैन बिकम सबसर्विएंट टू इट, then you are happy to let go of the smaller things. Like I said, when I was starting my business, I was married at that time. I just asked my wife once that I'm about to take a pay cut. So, are you okay with it? And she was, luckily for me, she was perfectly fine. So, I understood I'm happy to take lesser money. I was happy to sit in a smaller office. What I did not realize, I was happy to lose my sleep not knowing I will get my paycheck on time or not. But to me, I think it was creating a signature जो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी एम्प्लॉयर बिलीव करने को तैयार नहीं था. वो ये था कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होने चाहिए. एटलीस्ट मुझे कोई नहीं मिला who believed in specialization as much as I did and do. This is much more normal today. बिल्कुल. अच्छा, वी गॉट आखिरी आई गेस 2 मिनट या 1 मिनट, तो इसके अंदर आई गेस द फाइनल क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज कि कोई ऐसा एक sort of takeaway है, either sort of that you believe has fueled your success, और कोई ऐसी mistake हो जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, which the audience can learn from. So any sort of ingredient to your success or a learning from your failure that you would like to leave the audience with? Sir, if I pick top 2, maybe you should have given that question to me in advance, but the top 2 I'd pick, embrace your failures. It's perfectly fine. और मैं सुबह शाम अपनी टीम को भी कहता हूँ, I mess up bigger than anyone else in my team. As long as I'm open to admit it, as long as I'm willing to learn from it, it's okay. Life doesn't stop on any failure. दूसरा, persevere. गुजर जाता है वक्त. जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, वो गुजर जाता है वक्त. तो अकड़ ना रखें, शर्म ना रखें. Be true to the cause and everything passes. At least it has passed for me and everyone else that I talk to. People with much, much bigger successes have had much, much bigger failures. Everyone that I know of who's done something would agree to this, has agreed to this. Wow. Hashim, that was one of the most insightful conversations that I have ever had the pleasure of hosting. And just for your background, I've interviewed the president of Pakistan, I've interviewed the finance minister. He resigned 4 days after I interviewed him. अभी डॉक्टर इशरत का इंटरव्यू किया था, वो भी रिजाइन हो गया. I'm actually known as a person who people resign after interviewing with them. But जो आज मैंने आपके साथ सीखा है,
it is it's so true, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ultimately it boils down to, देखें आप चाहे टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आप चाहे रॉकेट साइंस में काम कर रहे हो, ह्यूमन साइकोलॉजी is at the core of whatever we are trying to achieve in our lives. और पाकिस्तान में particularly ego, social pressure, conformity, ये हमें ज़रूरत से ज़्यादा डिफाइन करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स वर्सेस कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्यों करना है, जो आपने वाई की बात करी है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ द ऑडियंस कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कहाँ मैं सिर्फ पैसे ज़्यादा बना सकता हूँ, या कहाँ किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, या किस डिसीजन से मैं ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली सक्सेसफुल हो सकता हूँ शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, बजाय इसके ये सवाल करना कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और वो क्यों करना चाहता हूँ, एंड लेटिंग दैट बी योर गाइडिंग स्पिरिट, and then having the appetite to take those risks, to take those sort of bullets to your ego, and to keep going and to keep persevering. I think these are very, very powerful lessons that sort of scream and come out of the page from your life. And it is a very inspiring sort of journey and a very inspiring life. So thank you for being so honest and for sharing this with us. Sir, I am very thankful. Again, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, I feel embarrassed to be showcased like a man of accomplishment. There are people who do much bigger stuff. Allah kare, I be one of those guys. The verdict would be out. I'm on my journey, and I hope this. I'm not as gutsy. Satya Nadella is a great guy. He wrote his book when he started his journey as the CEO. I'd request everyone to pray that this be a successful journey. It still can go anyway. But yes, very happy to share whatever little I've learned in life. And I think most people underestimate the power of their will and efforts, and overestimate the pressures that they have. So if anything I want people to take away from this is, pressures are actually weaker than you think, and your own power is much bigger than you think. ये दो चीज़ें हैं जो हम जनरली सही तरह से एस्टिमेट नहीं कर पाते. तो अगर हम ये अपने दिमाग को फीड करना शुरू कर दें कि ये जो जिन मुझे नज़र आ रहा है वो सोशल प्रेशर है, वो कुछ भी है, ये इतना बड़ा नहीं है जितना मैं समझता हूँ, और मेरी ताकत जितनी मुझे कम नज़र आ रही है वो इतनी कम नहीं है जितनी मैं समझ रहा हूँ. तो if we can look into our own selves and take that decision right, हर तरह की जर्नी में लोगों को बहुत सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है जितनी वो ले लेते हैं. Bilkul. What a powerful message and note to end on. Thank you, Hashim, for your time and for your story. Kamar, I'm going to hand it back over to you. All right. Thank you, Kamar. Thank you so much, Hashim. Thank you so much, Bilal. And yeah, it's been inspiring to listen to Hashim Saab. I think 9 years ago when we first met, and till this day. And I would also like to thank Bilal, because this is your anniversary day and it's 2 a.m. Now I think it's about 3 a.m. Your time. So thank you so much for being part of this session and this stream on Pakistan User Group. Best of luck to you both, and we'll now head to the next session. Thank you so much. Thank you again, everyone. Have a good session. Have a good event. Goodbye. Thank you. Thank you so much. I think, and I hope you have enjoyed that conversation. It's very good to learn from the industry leaders. And before making any other delays, so just a quick reminder, this is a stream where you will see now all the content that is related to customer engagement applications. So if you will head to the pakistanug.com, and if you have seen that schedule, so whatever sessions are planned for the customer engagements will be hosted in this stream. And if you are interested in learning, like Power Platform, finance operations, or the Azure and AI stuff, then do check out those streams as well on our website. So our next session and our next awesome speaker is Furqan Ali. So let me just add Furqan to the stream. He's with us. Hi, Furqan. How's it going? Hello. It's going good, really good, really nice. Thank you so much for joining us here at Pakistan User Group, and just the stage is set for you. Thank you so much. Thank you. Let me share my screen.
So I hope you guys can share my screen as well, right? Hello, good morning, good afternoon. I heard that there is some, for someone they are like it's 2 or 3 a.m. as well. So good evening, depends upon where you are. So today I will be speaking about how you can improve the communication and collaboration among your colleagues, among your users with Dynamics 365 and Teams, right? So that's the topic. And if I So those who don't know me, I work as a customer engineer for Microsoft, and I provide technical advisory to the premier customers within EMEA region. Um, and I am coming from the technical background, which means like I started my journey back in 2006 when I started developing CRM systems. And currently, some of my interests include, you can say, the Power Platform, like which is the low code, no code platform from Microsoft, the design thinking approach, which I really love about how you can leverage this thinking to get some requirements out from the customers when they are not willing to give the requirements. And because of my technical background, I love this DevOps platform as well, right? Perfect. So let's jump into the agenda. Let me switch off my camera so that I can see a little bit better. Yeah. So the agenda of today's session would be how can we improve the Dynamics 365 and Teams integration, right? That what I will show you with some PowerPoint slides to start with. Then I will jump into a quick demo. I'll try to spend a little bit more time into the demo so that we can grasp all the information from our side, right? And last but not the least, I'll talk about what our wonderful product team is doing, right? As far as how I can share the details, I'll share the details. What are the plans? Where are we going in terms of this very needed and very beautiful integration, right? So when we talk about these two products, right? So these are the you can say the two products, very powerful products, Dynamics 365 and Microsoft Teams. So these are the two most used products in a business applications domain, or for the users within industries or premium customers. So there are two types of personas, you can say. So the one persona who usually work with business processes or biz apps applications like Dynamics 365, and there are people who usually work with teams for collaboration. And these type of people, when they want to work closely on some of the business processes, for example sales or customer service, or to close the deals or to close the cases, whatever you can think of, they have to collaborate. And there was a missing integration point, and that's where Microsoft is investing heavily for the past some years. That now they now we have Dynamics 365 app for Teams, right? So what we started with is that we started with Dynamics 365 app for Teams when we started the concept of apps within everything, right? So with this with this application, or with this integration point, you can say, what you usually get is that the first of all you get the collaboration hub, which means that you get the you have the liberty to access Dynamics 365 records, which you usually work with, together with the Office applications, and which can, for example, help you
close the deals which you are working on, or it helps you close the cases, or relationship selling, or whatever, right? So it helps you in that sense. The second bigger thing which you can get from this cross-functional collaboration is you can work together with the customers, with your suppliers, with your partners, or any colleague across different departments or functions, right? Even if they are not Dynamics 365 or Biz Apps user. So that a huge milestone by having this application within Teams. Then you of course get the file integration. So what you can do is that you can co-author the documents using Office 365, and you can automatically sync those files, folders to Dynamics 365 custom engagement apps, right? And last but not the least, the Teams mobile app, which means like it has the possibility to search and update records from Microsoft Teams mobile app using Dynamics 365 bot while you are on the field, while you are speaking with a customer on like on a specific opportunity or whatever, right? So when you are speaking at the customer location, you can leverage that mobile app as well. So when we talk about Dynamics 365 and Teams integration, so there are basically two types of integrations. There is the one to start with is the basic collaboration experience, which means that it gives you the possibility to add a model-driven app in a Dynamics 365 tab to a channel in Microsoft Teams, right? From that channel itself, you can connect a model-driven app record or a view, like such as my active accounts or my geographical accounts or whatever, or opportunities or open opportunities or something like that. So you can connect both. You have the liberty to connect a record or views from Dynamics 365 into a Teams channel. When you can say when you configure this basic collaboration experience, so all the configuration happens within Teams, right? And then the next type of integration is the enhanced collaboration experience. So which means like apart from what you have already got from the basic collaboration experience, you will have the functionality to add team members if you are a channel team owner as well. So that what you get on top of that. And for the enhanced collaboration experience, the configuration occurs in Dynamics 365, right? So let's further. So what are some of the requirements? So I highly doubt it that someone is running in an online version, at least for versions below 9.x. So that is almost gone. We have already deprecated the old interface. So the requirement of you can say running the unified interface is you can say almost gone. So all customers in an online version are running unified interface now. So this left us with these requirements, which means like the SharePoint integration should have been enabled, because this Dynamics 365 and Teams integration uses or leverages SharePoint, so it should be enabled behind the scenes to fully utilize the functionalities of this integration. For basic Teams integration, right, you need to have the system administrator permissions on that environment. And to utilize the enhanced Microsoft Teams integration, you require to have a tenant administrator rights. So as you can see on the right hand side in the screen as well, right? So let me show you like in reality how it would look like. So once you have enabled the integration, once you have installed the Dynamics 365
app in your Microsoft Teams, and once you have tried to connect a record from Teams to Dynamics 365, so that's how you will it will be shown to you on your Microsoft Teams. So as you can see over here that you have you have one of the team called computer team. It could be these teams could, depending upon your business scenarios, it could be geographical teams, it could be teams working on any specific opportunity or product or verticals, whatever, right? It could be whatever. So when you have connected a record, here I have connected an opportunity. You can see over here that I have connected an opportunity. So now I can work on this opportunity directly from the Teams, so that I don't have to you can say switch the apps, and I can edit records, I can edit some fields, I can associate some other stuff with this opportunity, and of course I can collaborate, which I will show you in a second, right? And that's what I was talking about regarding collaboration. So if you want to collaborate related to this opportunity among your colleagues, if you want to notify, if you want to use the mentions functionality within Teams, that's what you can do, which you can see over here as well. So you can, here I was trying to mention one of the other colleague of mine, Kashan, and I was trying to mention the team channel or the whole team as well, so everyone gets involved. So this is the way how you can improve, you can say, the collaboration and the communication related to your Dynamics 365 processes, or not processes, I mean like business processes which are being run into Dynamics 365. Okay. uh, like there are some cases that you are done with some of the records from Dynamics 365, which means, like, for example, if you were working in for an opportunity, take an example, right, and that opportunity has been won or has been lost, whatever, right? Now you don't want to have a linked record from Teams to Dynamics 365. So what you can do, you have the possibility to remove that link, and so that you can keep your spaces clean and tidy, right? So what you can do is that you can go into this channel tab and then just remove this, and what it will do is basically it will remove the link which you have created before while you were trying to integrate Teams and Dynamics 365 records. Okay, so there are two types of connection types when you try to connect Dynamics 365 to Teams. So it could be successful depending upon your configurations, or it might get into some trouble, or that linking throws you an error, right? So as you can see over here, that once the record is being successfully connected to Teams, or the Teams can see Dynamics 365 records successfully, plus everything is working fine, you will see this message over here that this record is successfully connected to Dynamics 365. There are cases that when you try to connect or try to integrate Teams with Dynamics 365 records or views, it might throw an error. So if this is, you know, that for example, if you have activated previously for opportunities or accounts, whatever, and that was working fine, so just try once more and it should work fine. But in some cases it will throw an error, which means there are some configuration issues, and then you have to follow a troubleshooting guide which we have on the Microsoft Docs, like why any specific type of error is being thrown to you or to your users, right? So there are different cases. I can show you by the end of the session. I can show you that troubleshooting site website as well. Okay.
So let's talk about one of my favorite functionality with this integration, which is the document management, right? So you can manage documents from any of the application when this integration is working fine, right? So what you can do is that if you upload or if you create any documents from Teams file tab, right, it will be shown into Dynamics 365 files or documents, right, in that section, and the vice versa is also possible. So it's one of the most innovative, collaborative, you can say, way of having documents or contribute to the documents which you are uploading, or if you are writing any Word documents, you can contribute. I'll try to show you in a quick demo that how you can do that as well, which is very straightforward. Is just like I need to show you like how you can do it from Teams, which is associated with Dynamics 365. Okay, and that is basically how it will look like. So for example, here you can see that I am working on Teams, right? And and I have connected this opportunity to this channel, which I have named it Mobile Computing Purchase channel, and all the documents which I upload over here, right, will be visible in this Teams files tabs and over here as well, right? And the good thing is that I can connect this specific record, or you can say this opportunity. Take an example, this opportunity, mobile computing purchase opportunity. So I can connect this opportunity to multiple Teams channels, right, as I have done over here. So I had two teams, internal collaboration products, right, and then I have computing teams. So in those two teams, there are two channels where I have associated this opportunity, which is mobile computing purchase. And what it gives you, that it gives you different locations to store different documents, which means like the security for, you can say, for your documents is already in place. You don't have to do anything. So if I am part of a specific team, I can see that that document, and if I have access to the whole opportunity, I can see all the documents in all the places, or which means like in all the document locations, right? So that what you get out of the box, right? So you don't have to think about like where to store, who has access to what, and things like that. Okay. uh, yeah. Another thing is like, of course, you have the possibility to run the whole Dynamics 365 application from within Teams, right? So what you can do is that it adapts your configuration. So for example, here I have pinned this sales dashboard for me. So what it will do, that whenever I will move, whatever I will come to this dashboards, it will show this sales dashboard. If, for example, if I have what you call pinned a specific view from any specific table, right? Accounts, contacts, opportunities, whatever table we are talking about. So it will respect that, and it will show you your configured, your preferred way of showing Dynamics 365 application into Teams, right? And in some of the cases, right? So in if you think that, okay, this was one of the team which you can see on the screen, like Teams cases, it we are not going to use Dynamics 365 for this team, right? So you really want to delete the whole integration point. So what you can do is that, of course, you have the possibility, you can come over here, you try to go to this applications tab by managing team, by clicking on the manage team icon over here, and then you just remove
remove the whole integration between the team and Dynamics 365, right? So so with that, let me go through with a demo. So let me see. Yes. So first of all, let me start with that I have one of the environment which I will be using, right? This is the environment which I have created, and I will be using this one. And this is the tenant which is called Furkan Trial 2019, right? And as I was showing you that there were two types of integrations, right? So here those integrations configuration are here. So you can come on this advanced settings from different ways, but depending upon which way you like, so you come over here. If you only want the basic collaboration experience, you click over here. And if you want to have the enhanced Microsoft Teams integration, which means like you get the collaborate button on a specific views and records, you and inclusion of the team members, you basically enable this enhanced, you can say, Teams integration over here, right? So as one of the user, I am one of the user, the Furkan Ali, and for example, I have this Dynamics 365 application. I work with this out of the box Sales Hub application over here, and I believe that almost all of you must have are familiar with this application. So I have like the accounts, contacts, leads, opportunities, whatever. So depending upon my business scenarios, I will be showing different entities over here, and I can show some custom entities, and I have to enable integration, SharePoint integration for custom entities if I want to integrate between Teams and Dynamics 365, right? And this is my Teams, right? The same user, and this is how my Teams environment looks like, right? And let's take an example. So let's start a private team then. So I'll show you from the scratch. So let's create a private team and call it, let's call it Urdu Hindi Bootcamp, right? And as a business user, I know that there are some colleagues of mine who really want to with whom I really want to collaborate. So I will go over here and I'll try to start writing their name, for example Elisa, and take Kashan, right? And I'll add them in this team, right? So there are two ways now how you can start interacting with Dynamics 365. One is you can go over here, and in the general tab, you can start creating connecting to Dynamics 365 records. My personal best practice, you can say, is that if I would like to connect to a Dynamics 365, I create a specific channel where I connect different records to Dynamics 365, which means like it will be easier for us to delink it in the future, or remove it, or have some security, inbuilt security, which works behind the scenes for you automatically, right? So let's take an example of uh, home entertainment maybe, or yeah, home entertainment. So I will be working on this home entertainment opportunity, right? uh,
and that's where I will connect this opportunity which I have chosen now to my team's channel over here, right? Let's show this to everyone who are part of this team. So it has done, that it has I have created just a channel, a teams of typical teams channel over here. And now what I will do is that I will go over here, I'll try to connect to Dynamics 365 record, because I have never been connected to this Teams channel and Teams. So that's why it shows you the ad. And if I click on add, it shows me, okay, which view or record you want to connect with. So here I will say that I would like to connect to an opportunity, and home. If it was this. So it's just the naming convention. I can connect to anyone, any other opportunity, but I just want to remain consistent with the channel name and the opportunity name. That's why. So I'm selecting this and I click on save. So now what it has done is that it has connected, you can say it has connected my team's channel to this Dynamics 365 record, which will show in a moment. So now it is loading the same opportunity record which I have selected over here. So this is the opportunity record which I selected. So now what happens is that you have the possibility to work for this Dynamics 365 record from this Teams channel, right? So you don't have to leave this. So if you want to change anything, you just go over here and change any of the fields, and basically you can start collaborating related to this opportunity which you are working with, right? So the next thing which I want to share is this collaboration and communication features. So what happens is that now because we know that we have given access to this team to two of the users, the Elisa and Kashan. So now I can easily interact with them. So for example, if I say Elisa, right, I heard that you are the key account manager for this opportunities account, Fourth Coffee. So what happens is that now, because I am logged in as Elisa as well over here. So what happened behind the scenes when I was creating what you call when I was creating teams and when I was including the members. So she got this Urdu Hindi bootcamp in her team environment, and now she can see the team's channels over here as well. So now he gets the mentions as well, that okay, somebody is trying to mention me in some of the chats. So she goes over here and she can basically starts communicating with her with other users, right? So yeah, for example, I say like, oh, the Elisa responded, yes, it's correct. Any help needed, right? And then if I was the user, so who started this conversation, so I can basically look at all the conversation, or you can say follow all the conversation which is specifically related to this opportunity, right? So over here what I'm doing is like I'm trying to communicate related to this opportunity or related to this account or whatever entity you will choose in your scenarios, right?
Okay, so now the second thing which I wanted to discuss is the document management, which I showed you earlier, right? So because this one has been connected, so if I, for example, if I go over here, let's see if I have the luck, yeah. So you can see over here that now uh, all the document location, or the document location which we usually see over here, is basically this teams which we created, right? So which means like all the documents which we will upload over here will be accessible into the teams files tab, which means like it, irrespective of if I am a user of Dynamics 365 or not, I can collaborate related to this opportunity. So let's take an example that I upload a document. Let's take annual analysis. Right, so what it has done, that I have uploaded a document, right? And if I go into this Elisa's account, and if I go into this files tabs, then I should be able to see the document which I or the other user has uploaded. So it's basically uploaded by Furkan, and I can basically start collaborating with this you can say with these documents. Another thing which I wanted to discuss is the security thing, right? So for the non Dynamics 365 users, right? So for example, I have a user, Ahmed Roy, you can say, and just for the sake of clarity, I named him that finance, so which means like he works for finance, which means he doesn't have, at this moment, he doesn't have anything to do with our sales application, which is Dynamics 365. So it only has the Microsoft 365 E3 license, which means like he can run Teams environment he can run Teams, right? But he doesn't have access to Dynamics 365. So what I will do over here, that I would like, for example, some financial figures from Ahmed, right? So what I will do is that I will go into this team. I'll try to find him. Yeah, I found him. I'll add him to this team, right? And what happens is that now you can see this is Ahmed now. This is the third profile which I'm using. So now this Urdu Hindi Bootcamp team has been shown to his team's environment, and now he can see like what is going on over here, right? So he can see that okay, something is going on, and if he responds like hello there, uh, how can I help, right? And which means like everyone else, irrespective of if I am a Dynamics 365 users or not, I will see, or those users will see that there is some communication going on. And we know that this user, Ahmed Roy, is from finance, just by the naming convention, by the way. So so I can like, yeah, yes, we need some financial advices for fourth coffee. and and uh, and what I can do is what I was telling you about the co-authoring with the help of Office 365 applications, right? So I can, what I can do is that I can go and create a Word document over here, right? I can say that financial figures, I create this one, which means like it will open a Word document for me to collaborate, right? And let's give it a second so that it loads. So now this Word document has been loaded, and which means like I want everyone within that team
the people which I have included, like Kashan, Elisa, Ahmed, to collaborate for this document. So that you can start doing it. So we need to create a proposal, and for example, okay, proposal here. Figures here would be someone else would need to give some offer details, whatever, right? And then if I save it, if I go to this, you can say this is, by the way, Elisa, and I'm trying to see if she can be able to see the documents or the document which I just created using Office 365. It should be visible over here. Yeah, this is the document. So if I, as an Elisa and another user, would like to, you can say, contribute to this document, I can start writing my own stuff over here as well, right? So for example, I know the typical way of collaborating, that Furkan is also doing something, right? And in the meanwhile, if the same concept goes with Ahmed, which is not a Dynamics 365 users, and if he wants to collaborate for this document, he can write and collaborate and give his input in this, maybe the financial figures instead. Okay, so now if I go back to this one, so I know that there are people who are contributing into this document, which is based on the SharePoint, right? So that's how you can communicate and collaborate. Another thing which I wanted to discuss, which I wanted to show you, is basically right now you have this one. So this document location where all the documents are being stored, right? So what I can do is that, let's take an example okay, let's create a channel over here, and the same home entertainment channel, for example. So what I'm trying to do is that I will show you how you can connect the same Dynamics 365 records to different teams channels, so that if you, for example, if there are different geographical based teams, right, geographical teams which are working on the same opportunity or for the same account, which is a global account, right? So you might want to include different records into different teams, right? So here I'll do the same, right? So I'll go over here, I'll try to connect these teams into Dynamics 365. I'll say I don't have the recent one, so select once again this home entertainment. And let's see, I think so. Who are the guests? Let's remove Elisa, right? So now Elisa should not see this demo team. Yeah, that's good. So now what I have done, the same thing once again, I have connected a Dynamics 365 record to my teams, and now I can start communicating and collaborating related to this opportunity.
The only thing which I wanted to show over here is basically the files or the document management system, right? So now you can see the document location is demo home entertainment, which is the team and the channel name. So if I basically upload a document, let's take an example, this one, right? And if basically Eliza is already part of one of the team for a connected record, right? She will only see the records which are associated, which are accessible to her. So it's like the new record which which I just uploaded, right? She is not able to see that document, right? So but in the meanwhile, if I go into files tab, because I have access to both of these teams, I can see that, okay, this is one of the document related to this team. And if I go to then another team, I can see that there are some other documents which are associated. Right. So you can see over here, right? So there are already, you can say, separate locations for different documents. And in the meanwhile, if I go into my Dynamics 365 and if I go into my files tab, so here I have the possibility, depending upon my access, right? I have the possibility to see all the documents which are uploaded into any kind of the teams or teams channels. So here you can see that this record has two locations, teams based locations where I can upload documents. And you have already seen that you can see that the documents are already secured in a way that only the people who have access to the team have access to those specific documents. Okay, so that was a quick demo which I wanted to show to you guys. Let's jump into some last slides from my side. And like hopefully you would have got like how you can improve the communication and collaboration with the current features with the basic and enhanced collaboration. And now I would like to talk a little bit about what's coming next, because because the Microsoft product team is working very hard on this integration, right? So I think so in the month of August we Hi, will be Furkan. releasing. Sorry to cut you off there. If we can finish up in a couple of minutes, Yeah, most sure. people Yeah, can it's talk. just the live Thank you slide. so much. Thank you so much for So understanding. so this is basically what we are doing is that we are providing a contextual list of Microsoft Teams channels and chats, which means like you don't have to connect anything. All of the chat will be coming to your Dynamics 365 automatically, and you can collaborate directly. So you can link chats and communicate and collaborate from within Dynamics 365. So the next thing is which is coming is basically you can engage into in Teams chat from within Dynamics 365, as I already said. The next thing which is coming is basically you can start sharing CRM records in Microsoft Teams messages. So with the help of interactive cards, and basically you can have activities or notes on a Dynamics 365 record from the context of a Teams message, you can say. So and there are a lot of other functionalities until the end of until the end of this year which are coming, and just keep you updated. Keep looking at the Microsoft Docs and some other blogs where we are trying to publish when any of the functionality going into a public preview will try to publish over there. So with that, I'll that's all from my side. Thanks a lot to the Pakistan user group for giving me an opportunity to to share a stage with you all. Thank you from my side.
Thank you so much, Furqan. It was great having you here, and I hope the audience will catch up on LinkedIn for any follow-up questions. I'm sorry we have ran out of time and we were not able to get the questions in the session. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you all. Nice work. Thank you. Thank you. Thanks, man. Bye-bye. Bye-bye. All right, so now the next up, we have two remarkable individuals presenting about digital transformation. So I have with me Lipi Sarkar and Samit Saini. Hello, guys. How's it going? Hi, amazing. Good morning. Can you hear my voice? Absolutely fine, Lipi. And I think Samit, if you can just unmute yourself. That's the best part of it, right? Absolutely. No, thank you for having us, and good morning, good afternoon, everyone. Thank you for having us. It's amazing to be here. So, no, really looking forward to this. Thank you so much. The stage is all yours. Thank you, and welcome to Pakistan User Group, or all listeners tuning in for Pakistan User Group. I'm going to share my screen now. Let me know when you can see my screen. Kumar, if you can give me a hands up. Okay. We can absolutely see your screen now. Thanks. Brilliant. Okay. So let us first introduce ourselves and put that into. So I'm Lipi Sarkar. I'm Digital Transformation Director working at CloudSource. I'm ex-KPMG, and I've also been a co-author of the book Building a Digital Future with my co-author Vinny Bansal. And we are talking to you from UK. Samit, do you want to cover your side? Yeah, no problem. So my name is Samit Saini. I work for London Heathrow Airport. I've been working there for 16 years now. And I'm a solution specialist at Heathrow Airport by finding solutions using the Power Platform, and also training people to start their digital career as well. So if you have an idea at Heathrow, I'm here to support you and bring your idea to reality. And that's me. Brilliant. So without further ado, we want to talk about how to stay ahead of the curve in digital disruption and digital adoption. By that, we want to unpack a little bit in terms of what we mean by digital transformation. So we want to talk about, the first thing we want to talk about is what is digital transformation and why you need it. Then we would also like to cover the digital maturity and roadmap. By that, we mean how to assess your digital maturity in your organization and how to define a roadmap from there. Then we will also cover Power Platform and Power Apps, and this is how you use Power Platform and what we can do with Power Platform, empowering our organization, empowering the workforce. And finally, the last bit is about the digital governance, because once you have done all of it, what kind of level of governance do you want to implement on top of it? So on this session, you have a chance to win a copy of my book, Building a Digital Future. We are giving out 4 copies, so keep an eye in terms of the question. We will ask the question towards the end of the session. Brilliant. Okay. So moving on to digital transformation. So, Satya has said, like, we have seen 2 years worth of digital transformation in 2 months with the pandemic. And we have seen remote working, we have seen remote education, we have seen remote working through the doctors and nurses. We have seen in so many industries, and, you can see some examples, fantastic examples. And obviously the retail is another example that we have seen, the digital transformation has been accelerated, and it has been accepted worldwide. So they also said over the next 10 years, we will reach a point where nearly everything has become digitized. So what does that mean is when we talk about digital transformation, it is mainly to analyze your organization's business, whether it's a B2B, business to business, or business to customer services, whether you want to enhance the customer experience or internal operational efficiencies, and rethink about the model, rethink the ways of working, rethink the ways you are reaching out to customer. So that's what digital transformation is. It's not what it is not. It's not about upgrading
from one platform to another platform, or upgrading from one version of Dynamics to another version of Dynamics. It might be there, but it's mainly about the benefit that you are giving to the customers. That what can we do for using the technology, what can we deliver, what benefits are we delivering. Now, if we are thinking about key drivers for the digital transformation, it's mainly about, I have listed a couple of it, but you might think about so many different kind of drivers that is pertaining to your organization. One of the key things that we have seen is rising customer expectations. Now, today's world, customer is time poor. By that, I mean everything is happening by apps. You can call a cab, you can order your food through app, you can make an appointment through an app, and whatnot. So it's rising customer expectations, and is your organization geared for that? Speed is happening. Speed is more important than ever before, and the delivering the services with speed is also important. Then customer insight. Do we have the customer insight? Do we have the 360-degree view of the customers? Where the touch points of your organization? Do you have all the views of the customer? So, for example, if one business unit want to go and talk to a client and another business unit want to talk to the client, do they have a view what kind of information has been shared? And do the touch points on so that it doesn't look bad on the organization when two different teams are reaching out to the customer, talking about different benefits, talking about different areas of the organization. So hence it's important to key that to remember all these key drivers and to think about defining the strategy of your digital transformation. And disruption is happening everywhere, whether you've seen that through pandemic or it has been earlier, like Kodak company. I can give so many examples, but let's take the printing business. Let's take the photography business. So it has always been disrupted. So how is the organization geared up for the disruption? So there will be competitors. There will be new markets. Do you want to enter into the new markets? Do you want to create a new business model of operating? New channels of operation. If you're in retail, do you have retail channels through mobile, through apps, through digital channel? So we have to think all of it. When we think all of it, take into a perspective and define our processes and define a business model to enter into that new market, to cater for that, to deliver that benefit. That's what we mean by digital transformation. If you look into our book, we have tried to, in our chapter 1, we have tried to cover that digital transformation in details, and we have taken insights from different industries, thought leaders. Then the next slide is talking about, and this is not just Dynamics, this is talking about different businesses that have gone into different ways of working. So some of the examples you might already know, and this is from UK, and some I have picked up some local example as well, like Dukan in Pakistan. It's an e-commerce retail channel, and it's about doing business in a different way. And if anyone coming into setting up a retail market, they will have this app ready. Then, for example, G&J, Pepsi, Hickory Farms, Tillamook, you will find the case studies in our book and what were the challenges that they have come across and what they have done with Dynamics. And this is pertaining to the challenges that they have covered, the benefits they have delivered. In some cases, the benefits are very, how you empower your workforce. When you go into digital transformation, you need to think about how you prepare your organization, whether the leadership team knows where to start and where to go, whether it's a 1-year journey or whether it's a 2-year journey. It's thinking about that roadmap upfront. And again, we'll talk about London Heathrow because we have got fantastic speaker, Samit Saini, who will talk about the London Heathrow and how we have empowered the workforces. But there are so many examples like Breville, Stay Michelle, Wine Estates, Airbnb. So everyone has disrupted the business of normal ways of working and have done it differently. The next one I wanted to talk about is digital maturity and the roadmap. And by that, you need to assess where the strength on capabilities of your organization. So I want to introduce a map or a scale. This is called digital maturity scale.
And on the left-hand side, you can see on the horizontal axis, we have the operational efficiency. So one is traditional ways of doing things, and the other is how you're transforming your business. And on the vertical axis, we have the customer experience. There's this traditional way of doing things and how you're transforming. Now, stage one is about how you bring in your digital assets and optimize the existing IT, move into the infrastructure, and experiment with new on-core applications in the cloud to save IT operating costs. So if you have not thought about anything, so sometimes, organizations think about, okay, let's put our digital assets in the cloud and use the core application in the cloud and think about moving forward in the stage two with some digital experience. And stage two comes in where you optimize your current business model, move your core business data and processes into cloud-based applications, and to achieve operational excellence. By that time, once you have moved from digital assets to digital experience, you might have set up a center of excellence within the organization. And how you gear up with that is the final stage is digital transformation, where you create new business models. You think about new channels, you think about new markets. So some organization, we can see that they have moving from digital assets to stage one to stage two to stage three. Some organizations are already there. Some organizations are far behind. So we need to think about how we can bring that journey together. And it's about working out the key changes, the key drivers behind the business. Now, I would like to ask a question to Sumit. What do you think about London Heathrow? Do you see in any of the stages, where do you see London Heathrow in the digital scale? I would say we're definitely at the digital transformation stage still. We're still learning, we're still growing, and it's been amazing because we've got all these new applications coming in. But for us, it's not just about the technology, it's about the people. And when the people come up with an opportunity to use these applications, this is when we can transform. So for us, it's definitely where we are with digital transformation. Absolutely. And it's brilliant in terms of seeing that how we are growing with people, because your strength and your capability is your workforce. And you need to identify how you need to work together. And that helps along the journey. And digital transformation is not about 3 months program or 6 months program. It is a continuous improvement. And how you can build that roadmap to go through that continuous roadmap. And then the next target is this is the roadmap. This is not to say that this is the final all the items, but you can create your own target operating model. You can create your own digital roadmap. This is just a synopsis in terms of how and when and where to go. So if you have defined your target in terms of whether you want to improve your business efficiency, or you optimize your business processes, or you want to improve the customer experience, that might be quite a lot to cover in one go, in one phase. So think about which is a priority for your business. Do you want to first think about improving the customer experience? Then that's the roadmap you need to think about. If you want to think about improving the business of operational efficiency, then there is another model that you need to think about. So again, it's up to you. Which one do you prioritize, and what do you want to think about bringing in next, and build that roadmap, year on year. And where do you need to start? You need to think about what are the key drivers for change. Do you need to improve the customer experience? Do you want to counter the disruption? Do you want to go into the new market? Or it could be business impact due to COVID-19, because lots of businesses have geared up and had to react quite rapidly to sustain and to continue with the business, to keep the lights on their business. Once you have done that drivers for change, then you need to think about how to execute the change, whether you prepare your business internally, bringing in consulting partner, or whether you want to engage a delivery partner. I'll get ready for change, and change is a big thing. It's not to be underestimated by any means, because a change could be a very small change, or change could be a very big change. When it's impacting on the organization, you have to always think about what kind of change you're impacting. And then thinking about the defining guiding principles, which you have to set from the very beginning.
Then once you have done that, execute the change, and you have to think about the innovations, identify the makers and shakers within the organization, get ready for after you have gone live with the technology. Because in the session, we are also talking about Dynamics. If you're delivering Dynamics or Power Platform, think about how you're going to support after you have gone live with that platform. And build a continuous innovation and improvement roadmap so that helps you to reach your target. And so again, a question to Sumit, in terms of your journey and in terms of driving the innovation, how do you feel? I mean, are you in the continuous improvement journey? Absolutely. I'm always learning, and again, continuing to help others as well at the same time. And it's great because you don't need a background in solving problems. When you're in an organization that you work in every single day and you find an opportunity to solve a problem, it's great because then you're part of the solution. You're trying to help yourself, but you help the organization as well. And it doesn't matter what position you are, doesn't matter what type of background you have, you can help improve where you work, basically. And it's really, really great to see. And now we've got this great technology. It's even better now. Absolutely. Thank you, Sumit. So with that, we move on to the next section, which is about the Power Platform, how you are going to use Power Platform and Power Apps to empower your organization. So the floor is all yours, Sumit. Okay, so yeah, so those who don't know me, my name is Sam Matheny. Again, I work at London Heathrow Airport. This is my day-to-day job before Power Platform. I joined Heathrow when I left school when I was 16. I was still remember the day when I left school when I was 16. I was called like a duffer to leave school that age. But I said I wanted to follow my dad's footsteps, and he worked in the airport for 27 years. And yes, that was my day-to-day job for 14 years. So, and I loved it. I absolutely loved working at Heathrow Airport, and I still do. My day-to-day job was asking passengers, whoever flies in the airport, you'll see someone like myself, like in that picture, asking you, do you have any liquids, laptops, iPads? Can I search your bag if you left any items in your bag? And yeah, and that was my job. Like I said, I absolutely loved it. This is where I met my wife. She's also a security officer, and we've been married for 10 years. And they call it Heathrow Airport like a small city, and it's a great environment. But how do I go from this to becoming a solution specialist? Is because of one person, our business change manager. Her name is Komal, and she introduced Office 365 to all people, frontline colleagues as well, not just for office workers, and said, you got all these applications available to you, go check it out. So when I finished my shift, I went home, I read a blog that says how you can create an app in 5 minutes. And as soon as I read the blog and created the app, it was so simple steps. It's like open up Excel spreadsheet, create the columns, name the columns, save it to OneDrive, go to the Power Up Studio, open up Excel spreadsheet in the Power Up Studios and click create. And within seconds, I was able to create my app. I was like, wow, why does no one know this? So I was so empowered that if I can do it, someone who's got no background in IT or in data science or anything like that, if I can create an app, then anybody can create an app. And we don't have a centralized team in Heathrow to build apps. We used to pay externals. We used to pay suppliers to build apps for us at Heathrow. So now with my new knowledge, I wanted to help others. As a security officer, I said, look, I can do this. You can do it too. I showed it to the IT team, and they said, would you like to join our team for 3 months? I said, absolutely. So I started building a small team without me knowing. People who have got no background in IT, just like myself, I wanted to show them that you can bring your ideas into reality, because sometimes you work in an organization and you have some great ideas, but someone above you or higher than you or smarter than you says to you, it can't be done because it costs too much money, the idea doesn't seem right, we can't see your vision. But now you have the ability to bring your idea, your vision into reality by using Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agents to create your ideas into reality. And these people that you see on the picture, they have no background in IT, but they've been working at Heathrow. They know what would work for them to make their jobs easier. And this is where it's great to share your knowledge with people, because you don't know where
the transformation change will happen. For me, it didn't just transform my career; it changed my life completely. And that's why I want to show people that, that it doesn't matter what your skill level are like. Anybody can learn this technology and help not just your career, but your organization as well. So it's been absolutely great to see Heathrow grow. We're growing individually. I'm growing every single day. Since the day I learned about building an app, I haven't stopped learning since, and it's given me a passion to learn. And at Heathrow, we have trained over hundreds of people with different backgrounds, with different job titles, to learn how to build apps. We do in-house app training. We do show and tell now. And we've seen people being promoted by learning this skill, by learning this tool, to go in an interview now and say, I can save you time, money, and paper. Because when I built my first app, that's exactly what I did. I showed them that this is what you can build, and this is how much time saving you can have in your organization without costing any money by using Power Platform. And then this is it. We've been training people every single day. But the great thing is, it's not just about building apps. It's about, okay, now we can build apps internally. Is there a structure in place? And now we've built a structure where we look at your ideas and we'll show you, okay, we can use this application for this, or this application for that. We will review it. We help you design it so it's branded and so on. My job is not to help you to help build apps for you. I teach you to build apps for yourself so you can teach others. So we help you build it. You document it. So if your app is built, we document it before we launch it. We make sure we test it, pilot it, then we monitor it. So with Power Apps, you can monitor your apps and see how well each app is doing. If it's not doing well, we design it, we build it. If it's doing well, great, we sign it off. And in 3 months' time, we check it again to see if it gets, if the usage is high or low. If its usage is low, we design it, we build it. So, or dismantle it. There's no harm in that, because this platform is great that you can do anything with it. So it's been absolutely great to do that as well. But going back to the first ever app I built was the language app. We at Heathrow Airport uses a language book, and for 2 years I've been saying, look, can we convert this into a app? And when I went to IT, they said no, it costs too much money. We don't find it feasible. I said, okay, fine. My idea goes straight to the graveyard, because that's where most ideas go. Once someone tells you no, it goes straight to the graveyard. But when Power Apps came and I learned my first app, I was like, how easy is this to add pictures, add buttons, without no coding, add videos, and I could build a language app within days. And that's what I did. I took the book home, the language book home, scanned all the pictures, add images into the app, asked my colleague, Mohsin, to speak in Urdu about, how to remove liquids, laptops and iPad in his language. And he did that exactly. And it was amazing. Showed the app to my manager, and he absolutely loved it. Didn't cost anything, no coding is involved, and this is how I started my career, just by building that one simple app within days. So that's one of my favorite apps. So it's a very good point you mentioned, Samit. When your idea came up and you were told no, and from that point onward to your first Power App, what was the time frame we are talking about here? Okay, so 1 month. So when I built this language app, I was asked, during my shift, can I spend 1 hour and go to different departments, from human resources to IT to finance, and show them how easy it is to build Power Apps so they can use it in the department. So that was 1 month. And then after that month, I got the opportunity to say, Samit, would you like to join our IT team? And I said, I would love to, but I have weaknesses where I have trouble reading and writing because I'm dyslexic, and I have ADD, attention deficiency disorder. And she said, look, I'm not looking at your CV or your resume. I'm looking at what you're bringing to Heathrow and to my team, which is experience. You took the time to learn something like Power Apps, which no one has done at Heathrow at the moment. So I would love to have you in my team for 3 months. Within a month in her team, I was coming up with solutions to remove paperwork and Excel spreadsheets and make it into an app, and put these Excel spreadsheets or these paperwork into a nice data frame where we can visualize that data using Power BI.
So I was bringing more value into her team, and this is where my journey even more started, even more grew. I'm delighted to hear that. I mean, it's so powerful journey, Samit. So, in terms of when you thought about the idea and then you bring that idea to fruition, so it has helped so many people in terms of when you're talking about Power Apps. So it's not just within the department. It's like so many people traveling to Heathrow Airport. It's such a busy airport. So yeah, great. Yeah, I mean, this tool has been amazing to me and to my colleagues and to anybody who uses it because I'm a very introvert guy, I'm a very shy guy, but this is how the tools, when I start learning Power Apps, I've been helping, it helps me grow as a person as well. When I built my first app, I wasn't building, when I was building this app, the passenger service app, and to remove paperwork, this app wasn't for me, it was for other people. So I had to look at their point of view and see what they wanted in this app. So I had to do stakeholder management, voice of the customer, wireframing. I didn't know none of these tools, but along the line, building apps allowed me to learn new tools as well, and made me more confident in myself as well. So, like I said, yeah, it helps you grow as well as an individual. Absolutely. Okay, so and you continued your journey with passenger reduced mobility app, and then I can see so many different, you can talk about special assistance app. Yeah, absolutely. I mean, this is one of them because again, it's one of my first apps. But what I learned is that we use tools like Facebook, Twitter, and other applications that don't need training to use these applications. So when you build an app, my framework was that, okay, let's make this app simple, less text, more buttons, and it gets the job done. And this is what we wanted, and that's what people love is simplicity. No training. You don't need to train someone to use an app. You want to make it simple as possible, and that's what Power Apps can do. And you don't need a UX or UI design for that. I don't have it, but it's just making sure that the people that are using it are happy. And yeah, we built apps within minutes or within minutes to months, depending on the app. The app that You have done a lot of manual paperwork, isn't it, Amit? And Oh, you have to convert that in terms of how many trees you have saved. Absolutely. I mean, so with this app, we save 7,000 sheets of paper a month. The whole process beforehand was a manager would go into the office, go to a desktop, print out 6 or 7 sheets of paper a day, go to terminal 2 to terminal 5, do a lot of checks for different places. One day shift is over, take the piece of paper, give it to the admin person. That admin person would fill in all that information. End of the month, not during the day, end of the month, everyone's piece of paper on an Excel spreadsheet and convert and make it into a pie chart or bar chart. But that was becoming more reactive than proactive. If we made a loss or something, if we were losing equipment, you won't know until the end of the month. But with Power Apps, you eliminate all of that, which is great. And it's fantastic because we're trying to take out the machine out of the person. The person, I haven't seen no person say, oh, I'm happy to fill in Excel spreadsheet an average 2 days. Now that person can add value somewhere else. They don't have to spend the whole day inputting Excel spreadsheet. This is where the Power Apps comes in. The example that you see here, Martin Shelley, he had an amazing idea to save money because we used to pay someone £700 a month collecting data for us on a transfer bus. He says, Samit, can we build this app together to save money? And I'm like, no, I'm not going to build this app. I will teach you. And within 2 weeks, he was able to build the app. He's able to showcase it to his manager. Not only he got promoted, but also saved £700 a month as well. And it was amazing to see because when he first wanted to learn about Power Apps, he goes, Samit, you heard that trick, you heard that quote, all dogs cannot learn new tricks. But he was able to learn a new trick and is able to build apps. So it doesn't matter what age you are, if you've got a passion for something, if you've got a vision to bring an idea to reality, then nothing should stop you. And this is what Power. I think that's really a powerful Power Platform is so powerful, and Microsoft has introduced this, given the power to the citizen developers, to people who doesn't need the IT technology knowledge. You can build your app from scratch. Absolutely. Yeah, and like COVID happened, and we, it was bad, but we was able to quickly build apps quickly. So we had people like Matt Bourne and people in our organization, not me, but people in our organization were just building apps straight away, well-being apps, remote equipment apps. Those kind of things were built instantly without thinking about how much it's going to cost us, what plan does it do.
It was just, what do we need? When do we need it? How do we need it? And then that's it. So these things were built instantly. We didn't go for months and months for designing or planning. These are simple solutions for simple outcomes, and it was absolutely great to Simple see. benefit as well to the people. And you have built an amazing community. I mean, that's really inspiring for anybody coming into the Power Platform and not having technology background. And it's about the community, how you share with community, build with community, and also, you know, amazing. This is so powerful to see that you have got some photos with Satya and lots of community people. I'll be honest with you. I mean, the community helps me a lot. It's not me. I'm here because of the community. When I used to need help about Power Apps, I used to reach out on LinkedIn or Twitter, and I have people, not just one or two people, I have loads of people helping me, which is great. The community at Heathrow helped me a lot, from my managers to my team. I learn from them. I'm growing because of them. I have no background in office work and IT. I'm learning. I'm growing because of them, and I wouldn't be here if it wasn't for the community. They ask questions. When they ask questions, if I don't know it, I go and find it. But I grow by people asking questions, because I don't have all the answers, and I'm always learning to grow and learn. And you see the pictures here. I mean, that one blog, and I say this to anyone: you don't look at, oh, what's it going to take me the next 5 years if I do this. For me, when I read that one blog, it was just curiosity. I wanted to read a blog that says I can create an app in 5 minutes. I did that, and it changed my career and my life completely. It made me more confident. I went back to high school and finished my English and maths exam in high school. I failed, but because I had confidence of, if I can build an app, I can do anything. So I went back to high school, finished my exams, as you can see there. I went on stage with the CEO of Microsoft, and that's one of my highlights, because not because I was just on stage with him, but when I was on stage, I told my mum and dad that I'm going to be on stage, and they didn't believe me at first. But when I told them I'm going to be on live, and I said to my wife, "Here's a link. Don't share it to no one else. Share it to mum and dad." She comes back and says, "By the way, mum shared a link to everyone in India." And I was like, I got really, really nervous. But when this all finished, and I went back to my hotel, and my dad calls me and says, "Samit, I'm really proud of you." To me, that was my highlight of my career, because my journey has always been to make my parents proud. And I'd never thought I'd do that. But learning that one blog, I felt like I've done that, and I tell anyone that just learn for, just for curiosity, learn for a passion, because you just don't know where it's going to take you. And as you see there, my personal highlights, there's many more, but these are the highlights that I will always cherish, and I will just continue growing. So it's so fantastic to share the platform with you and talking with you. And I feel, say, I'm getting goosebumps hearing about your story. But it's really, it's about that point where you get that, cues and start getting something, building on your own. And the community is there, and you can help with each other in terms of grow. And we are trying to build that community together here with building a digital future. So, Samit, you want to talk about the digital governance also when you have put those Power Apps in place, what kind of governance you put, and yeah, then we will wrap up with our quiz questions. yeah, absolutely. I mean, I'll show you a quick slide here. Bear with me 1 second. And I'll stop sharing now. yeah, so if you can see here, are you able to share? See? Oh, is that? Yeah, perfect. Yeah. So, the governance in Heathrow is the heart of what we do now. Is absolutely, because we look at who's building our apps and how they're building it. So anyone who's got a Heathrow account can build apps within Heathrow, which is fantastic. And let's go here. We get to see, what type of data source someone's building using. Are they using Excel? Are they using SharePoint? Are they using Dataverse? We look at loads of things, and the Center of Excellence is amazing at Heathrow, because, I would say, if you're joining the Power Platform journey, Center of Excellence is the key, because you get to see all these information, who your app makers are, what department they're in, who they're sharing with, how many people they're sharing with, and so on. The trends, how often apps are being built, and that's what we look at. We look at connections. Are they using Excel, SharePoint, Twitter, Facebook connections, and so on?
We look at the risk as well. The more the app's being shared, the higher the risk, because if something happens, you want to make sure you're on top of it. Help check, does the owner exist still? When is the last time the app been used? Has it been months? Has it been years? If it hasn't been used in years, then let's you stop it and then build something new. And should we archive these apps? We look at security. So people get forms. So as soon as you create an app, they get an email to say, these are our guidelines, these are branding guidelines, these are policies, please fill this information in before you even think about your apps being signed off, and so on. We look at things like, again, when Excel, we tell people that when people use Excel, this is just a starting point for using it to learn, but it's not a good way to for published apps. So it's good for learning, but and nothing else at Heathrow. SharePoint we use, it's not a data source, but it's a great way to store data because it doesn't cost us anything, but it has limitations. It only can hold up to 6,000 rows of data. And Dataverse at Heathrow, we have a great amount of licenses available, but it doesn't. You don't just connect to Dataverse. You can connect to other payment connectors as well, which is absolutely great. And then we've got DLP policy in place where we get to see what connectors are allowed to connect with and what isn't allowed to be connected with. And the support is more important. It's not about just the technology, it's about giving that support to the people. When someone's new, where do they get that support? So we've got the welcome email, the community meetup, show and tell every month, hub sites, Yammer, Teams. I have a one-to-one catch-up with all new app makers, and to support, I'll do the mentoring, best practices, and sign-offs, all these apps. So, when we're looking at app sign-off and governance, this is what we look at. We look at documentation, we look at branding, we look at data type, we look at connection type, we look at data privacy, and we look at access, who you're sharing these apps with and how. And that's it, basically, for when it comes to governance. That's just an overview, but there's so much more into it. But I would say governance is important because it helps your community grow, it helps yourself grow. When you have the central excellence in place, you get to see who your new app makers are and you want to support them. The future should be that when someone learns an app and how to build it, they pass it forward. So central excellence has been amazing to us. Thank you so much, Samit. So that brings us to the end of the session. And I would like to, if you have any questions and would like to hear about that. But this is the quiz question. How many colleagues have been trained in Power Apps at Heathrow Airport? So Samit has mentioned that. And the question number 2 is how many stages of digital maturity scale? If you have gone through, if you have listened to us, so you can put it in the chat window and we can select the winners and we will let you know. I see a question coming up in terms of, if you would like to hear a more knowledgeable session. So yes, please reach out to us and we are happy to go through that. Even if it is one-to-one, we are trying to build a community here and digital transformation is a massive one. If you are thinking about where to start, how to start. So if you have, so people have got that book and they were really interested, but we'd like to hear your views and we'd like to hear, it's such a big, thing about digital transformation. We cannot put everything in the book and we had to cut down, in our old version, we had to cut down on so many chapters and so many things we would like to share. But yes, there is always a way, there is always a beginning. And I think with this book, we are starting to bring out a new journey. Connect with us. We are here to help you, really. So with that, if any questions, I'm happy to answer them. And if you can, I'll go back to the quiz questions if you have any answers. So please let us know so that we can select some winners. Yeah, I have a few questions from the audience here. One question was where and how they can buy this book, if you wanna share that. Absolutely. So you can buy that book from Amazon. And Wiley as well. So Wiley is in US, but you can buy it from Amazon Marketplace. It's available worldwide. Oh, that's cool. I have one question where someone is asking, like, this is for Samit, like when you met Satya, what you actually told him. Oh, it was obviously a pleasure to meet him, and I never thought in a million years that I'll be on stage. I never seen a Microsoft event before, so I had no expectations. I was just full of nervousness. But
he was such a down to earth person. I just felt calm and relaxed with him, and yeah, I just we're just having a normal conversation about what we've been doing at Heathrow, and I will never forget that day. So yeah, that's all. It's a blur to me now, but it was nice. Yeah, that's, I think, yeah, I think what was, I was just thinking like what was not to like about this session. I think I learned a lot myself, and I'm pretty sure the audience has the same experience. One question for Leafy, like, do you have any blog or any other like website? We have created Where a you, Building a Digital Future website. I haven't yet started blogging, but we'll soon. I'm just testing the water really to find out how many people would like to hear from me. So yes, I'm quite new and overwhelmed with the fact, with all the love that I have received after the book has been published. So yeah, I'm very much into writing, so we'll start the blog soon. Thank you. And yeah, another question. I think it may not be very relevant, but yeah, because of the mood, so people are asking like Sumit, like any chances when we can see the airports back on full capacity. And the second thing is, like how that adoption of Power Apps has the connection with the overall COVID situation. Was it poses a different challenges, or you had like lesser work, or it actually increased your adoption towards it? Well, the first question, airports will be are opening up soon, so I would love to see all of you again. But our aim is to be safer. So whenever it happens, it happens. But the airport's always going to be there, touch wood, and we'll be flying one day. So yeah, it's getting there, which is good. The adoption is increased because whereas people were looking at other places where they should buy these applications, or you're looking at third parties, because the amount of money is costing to go outside now, we're just fully focused on the platform. It's like now we're increasing more on adoption, because before we weren't using Teams as much as we do now. Now we're dependent on Teams, which has been amazing. Our team's growing. It hasn't decreased in our digital team. So it was just me and my business change manager before. Now we've got a SharePoint SME, we've got an Office 365 SME. So it's growing. It's actually growing even more. And we are growing more app champions than ever before, because most people have left or changed positions. So we're getting more people eager to learn this new tool, because there's new ways of working. There's new ways to save money now, even more than ever before. So our adoptions have gone increased even more now. So watch this space. There'll be more people here for building the stuff. So that's great. Thank you so much. Guys, anything you want to share? Because I can see like some comments in, but they're not like syncing on this platform. But definitely we'll figure out the winners of these questions, like who will give the most realistic answers to these. Any final remarks you want to share before we head up to the small break? Yeah, absolutely. I just want to say thank you so much for this opportunity. The organizers, everyone who's put the hard work into this. It's been truly amazing experience. And I would wish you all success and grow even more. And looking forward to many years of this, which is going to be, I think, it's going to be amazing. And like I said, I'm not a smart guy. And like what I've achieved, anybody else can achieve. I've got full support from everyone for my journey, and you can too. Doesn't matter what your background is. So yeah, just keep going. So absolutely, and I echo that thought. And thank you, Kamara and to Fazil, for organizing such a brilliant boot camp. And you have been at the whatever help we needed. So, and thank you for all the listeners and all the comments that you have passed on to us. So share your love on the book as well, and happy to reach out to you and connect to you. So anytime, I'm here to help the community. Thank you, Kamara. Thank you so much. And we have already received the books which Lippy has just committed for the audience as a gift. So yeah, so you guys are all safe. So we can just ship you, once we will receive your answers in there. Thank you so much, guys. Have a nice rest of the evening or the day. Take care, everyone. Thank you. Bye. Bye.
All right, so with this, we will now just take a few minutes break, and once we will come back, we will have Dynamics 365 Field Primer from Ali Khan, and the session is scheduled to start in just about 10 minutes. Yeah. Yes, so it will be starting in about 10 minutes. So I'll just put up the banner, don't go anywhere, and then we'll come back to that. Thank you.
Hi Ali, how's it going? All good, mate. Oh, that's great. So, really excited to learn about field service. Yep. That's it. 100%. Cool. So, stage is all yours. Thank you so much. So should I be sharing my screen now? Yeah, sure, absolutely. And am I live? Yes, you are. Cool. That's great. Is my screen live now? Yep. Yeah, I can definitely see the bootcamp slides. And am I live? You can start? Yes, 100%. Thank you so much. All right, cool. Hello, everyone. I'm very excited to be here today in this amazing event. My name is Ali, and I'll be talking about Dynamics Field Service. But before we go any further, let's just do a quick introduction of mine. So my name is, so welcome again. Khosh Amdeed. Very happy to be here. And my name is Ali Khan. I am leading Dynamics practice in Valrada. Valrada is one of the leading consultancies in Australia and few areas we are leading globally as well. So I lead Dynamics practice. We design and develop Power Apps and Dynamics and Azure-based applications and solutions, and that involves everything that we're going to be something in that area we're going to be talking about today. But before I go further and talk about the technology, I also wanted to mention that I share my experience. I talk about what I learned. I talk about the solutions that we develop, any new learnings and playing with the technology. I share that on my blog and Twitter. So I will love after this conversation, अगर questions हैं, कोई सवाल हैं, कोई आप भी in areas में काम कर रहे हैं, you want to talk about it, I'll love to talk about that to you and have fun the conversation. अच्छा, तो ये तो क्विक इंट्रोडक्शन हो गया और हम ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा इंग्लिश सादा सा उर्दू हिंदी में बात करेंगे, थोड़ा इसमें इंग्लिश का तड़का डाल देंगे. But the reason I thought to talk about Dynamics Field Service is that this is one of the new apps, right? Newer apps. So Dynamics की जो family है, इसमें सब products हैं, उसमें कुछ तो हैं जो कि अगर आप पहले काम करते हैं Dynamics में कि जो पहले होती थी CRM जिसे कहते थे, इसमें sales होता था और customer service वगैरह होता था. Field service is a relatively new thing. It's anyway, even if you look at globally and even not just Microsoft platform and other platforms like Salesforce, etc., it's a new platform which is actually developing, actually one of the fastest growing products, right? So why not we just quickly talk about क्या है field service, कैसे काम करते हैं, कहाँ use करते हैं, right? And my goal is if I am able to give you this quick primer in next 45 minutes, then when you're going to be working on a real project, real life project, you should have enough information or understanding about the jargons, terminologies, कि क्या terminologies हैं, किसका क्या मतलब है, कहाँ use होता है, क्यों use होता है, उसका कुछ idea हो जाए, right? So हम करेंगे ये कि हम थोड़ा सा field service के बारे में बात करेंगे और हम कुछ demo भी करेंगे, सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि कुछ काम भी करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, तो आप ऐसा करते हैं कि थोड़ा फील्ड सर्विस का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है भाई? फील्ड सर्विस से भी थोड़ी अलग सेलेक्ट करते हैं. फील्ड सर्विस है क्या? So Dynamics Field Service is what is called a first party app, right? So it's an app which is developed by Microsoft. It's on a Dynamics platform and actually helps organizations to manage, schedule, and maintain their entire portfolio of field service related activities and operations and tasks and projects and all of that, right? And also helps you to maintain the portfolio of assets for your own assets or your customers' assets. अब ये सारे मोटे मोटे अल्फाज हो गए. मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? पहली एग्जांपल हम लेंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेट्स से एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? अब कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, उनको कहीं जाकर कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कुछ हो रहा है, and they are approached by the customer के will you build this for us? So अब सेल्स है, राइट? तो सेल्स ने कहना है कि पहली बात कि हाँ हम कर सकते हैं. अच्छा, आप कर सकते हैं तो फिर आपके चार्जेस क्या होंगे, क्या फीस होगी, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, वगैरह वगैरह. So they have to send out their engineers, they have to send out people who specialize in that area out in the field,
राइट. सो वो अब उनको वहां भेजना है तो कोई टाइम होगा, किसी टाइम पे भेजना होगा, कोई सर्टेन एक्सपर्टीज वाले लोग होंगे वही जाएंगे. अब ये सारा जहां भी आपके पास लोग जा रहे हैं फील्ड पे, बाहर जा रहे हैं, ऑफिस से निकल के बाहर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, these people are called field service. अब उनकी शेड्यूलिंग कैसे करनी है, कहाँ उन्हें ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको डायनामिक्स फील्ड सर्विस हेल्प करता है. That's one example. The another example, let's take an example from the different side of the business. So this is a customer service organization. Let's say you are installing all the heavy machinery. अपने जहन में लेकर आए, like for example Siemens या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं वो ट्रांसफार्मर्स लगा रही हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स लगा रही हैं, काम कर रही हैं, and now they got a call from the customer that hey, this thing is not working, right? Or this was supposed to run with certain parameters and those parameters are not being met. So maybe it's running, but it's not running up to its optimal limit. So something is wrong. Basically, send us your technicians or engineers जो आए आके देखें इसको fix करें. So again, बात शुरू हुई है सर्विस से, लेकिन जाएंगे लोग वहाँ पे, देखेंगे, काम करेंगे, कुछ होना चाहिए जिस पे वो अपने चीजें रिकॉर्ड करें, फिर वापस आए, राइट? अगेन फील्ड सर्विस आ गया. तो जहां भी फील्ड सर्विस आएगी, जहां पे लोग आएंगे जिनको फील्ड पे जाना है, काम करना है, वहां पर आपके पास डायनामिक्स फील्ड सर्विस की जरूरत पड़ गई. क्यों पड़ गई? क्योंकि अब आपके जो लोग फील्ड पे जा रहे हैं वो कोई पेंसिल पेपर पे तो काम नहीं करेंगे, उनको कोई अच्छा कोई सोल्यूशन चाहिए. सो डायनामिक्स फील्ड सर्विस इज अ सॉल्यूशन दैट लेट्स यू मैनेज द एंटायर पोर्टफोलियो. It starts with the sales, like we talked about sales, yeah, or service or any other avenue, and then first of all it gets the work inside into the solution. It can come from any of those avenues, and then you're able to schedule the right persons against the job, and it helps you, and it has got a scheduling engine which helps you to find the right person for the job. It also has got an AI powered engine जो कि AI के थ्रू आपको हेल्प करता है कि ये पर्सन बेस्ट है, खुद ही बुकिंग भी कर देता है, खुद ही आपके रिसोर्स भी आपके कि कौन किसको जाना है ये भी कर सकता है. एंड देन इन द एंड आउटपुट क्या है? Customer is happy. Customer knows who is arriving, when they're arriving, their status is, and all of that. They get this information. So this entire portfolio, that is what field service helps you manage. एक सवाल आमतौर पे होता है कि ये सीआरएम है या ईआरपी का सॉल्यूशन है, क्या है? तो वैसे तो ये टर्मिनोलॉजीज अब ओल्ड हो गई हैं, अब कोई यूज नहीं करता. ये ऐसी बात है जैसे कि पहले हम सब कहते थे कि यार डॉक्टर के पास चलना है, ठीक है? अब ऐसा नहीं होता. अब होता है कि गला खराब है तो ईएनटी के पास जाना है, कुछ और मसला है तो किसी और के. आपका स्पेशलाइजेशन हो गई है ना हर चीज में. अब यही है सीआरएम में भी, अब कोई सीआरएम का इतना वर्ड यूज नहीं करता. अब सब बात करते हैं कस्टमर एंगेजमेंट की, कस्टमर इनसाइट्स की, सेल्स की, कि भाई सेल्स में सिर्फ सेल्स नहीं है बल्कि और भी स्पेशलाइजेशंस हैं. सो इस लिहाज से देखा जाए तो सीआरएम का तो नहीं है, लेकिन ये ईआरपी भी नहीं है. लेकिन फील्ड सर्विस के कुछ कंपोनेंट जो है वो ईआरपी से रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और डायनामिक्स में भी हो सकते हैं, डायनामिक्स फैमिली के अंदर और डायनामिक्स फैमिली के बाद भी हो सकते हैं. एक फनी बात मैं आपसे कह दूं इसमें कि आपस की बात है कि जो सीआरएम और ईआरपी के वर्ड जो है, क्योंकि अभी ओल्ड लोग हैं, अब ज्यादा यूज नहीं होते, तो अगर आपको कोई ऐसा कहते हुए मिलेगा तो वो शायद मेरे जैसे थोड़े से ओल्ड लोग होंगे जो कि शायद देखने में यंग लगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती. खैर, बहरहाल, तो ये हो गई हमारे पास फील्ड सर्विस का इंट्रोडक्शन. अब आप कहेंगे कि बात तो हो गई सारी कि ठीक है फील्ड सर्विस करता होगा ये सारे काम, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा. तो बिल्कुल यही स्पिरिट है, देखना चाहिए चीजों को, समझना चाहिए कि भाई हो कैसा रहा है काम, जो सारी बातें कही जा रही है वो होती भी हैं, नहीं होती तो कैसे होती हैं. तो उस पर बात करते हैं. हम एक केस स्टडी लेके चलते हैं. केस स्टडी हमारी है, इसका नाम है बिजली सर्विसेज. ये करते क्या है, ये जाते हैं, दे प्रोवाइड न्यू कनेक्शंस, दे डू इंस्टॉलेशंस ऑफ इक्विपमेंट और डिवाइसेस और machineries and all those things. They also do break fix, and break fix is what is generally called comes under maintenance, right? So something wasn't working, and now you're sending out technicians and engineers to go out there and fix it. So that's break fix. And other services to customers, like कुछ connection नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ और problem है, they do all of that related to electricity, बिजली, electricity, right? Number 2, assets, right? Assets क्या होते हैं? जो सब चीजें स्टॉल हैं, आपकी हैं, कस्टमर की हैं, उनको मेंटेन करना है. अब ये जो आप इमेजिन कर रहे हैं, हम क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, ये सब चीजें, इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब लगे तो नहीं रहते, इनके जाके मतलब ये चलते तो नहीं रहते हमेशा. यू गॉट टू सर्विस देम. इट्स जस्ट लाइक मेंटेनिंग योर कार और बाइक्स और सब चीजें, राइट? यू गॉट टू सर्विस देम every 6 months or so. You have to service them after a certain number of a running period or running parameters, right? जैसे कि कार में होता है कि 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करानी है, ऐसा ही इन सब इक्विपमेंट के साथ भी होता है. अब ये सारे जो एसेट्स हैं, इतने सारे होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, इनको कौन मैनेज करेगा? कैसे सबको याद रहेगा कि ट्रांसफार्मर नंबर 5672 की सर्विस मार्च में होनी है, उसके बाद सितंबर में होनी है?
राइट अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिस्टम चाहिए, एंड दैट्स फील्ड सर्विस. एंड लास्टली आपके स्टाफ हु गो आउट ऑन द फील्ड डू द जॉब, दे नीड अ सिस्टम, राइट. सो अब ये हमारे पास कस्टमर है बिजली सर्विसेज, ये कह रहे हैं कि यार ये हमारा मसला है, हमारा मसला सॉल्व करो, किसी तरह से ये चीजें जो है इम्प्लीमेंट करो. सो वो जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो जो हम करने जाएंगे, वो डायनामिक्स फील्ड सर्विस है. All right, so let's get started. Let's start working on Dynamics Field Service. Acha, Dynamics Field Service. First time you get access to Dynamics Field Service, or you see the screen, this is what you're going to see, right? So it's going to say, hello, that's great. It's inviting you or welcoming you. And then they have this, this is a new thing, by the way, it's called Get Started page. And this is an amazing place to start working on Dynamics Field Service, right? एक बात मैं कह दूं यहाँ पे कि अब फील्ड सर्विस की जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, हाउ यू गोना गेट एक्सेस टू दैट. सो दो बातें हो सकती हैं. यू माइट बी वर्किंग विद एन एक्जिस्टिंग कस्टमर, दे मे ऑलरेडी बी यूजिंग समथिंग सम अदर थिंग इन डायनामिक्स, राइट, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन डायनामिक्स फील्ड सर्विस एज वेल. या तो ये होगा तो आपके पास एक्सेस है ऑलरेडी. दूसरा तरीका ये है कि यू कैन गेट अ ट्रायल एनवायरनमेंट. So go for trial environment, select customer engagement. So start with the customer engagement, you know, the dynamics trial पे जाके, and then you get your field service up and running. So trial पे ये भी trial environment है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. Trial environment पे you can very easily get the environment. अच्छा, dynamics field service आ गया. This is our home screen. Let's run the scenario, right? So बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर. इसको आराम से करेंगे, एक एक चीज को जाके एक्सप्लोर करेंगे. अगर पहले हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे रन करेगा, वो जो बिजली सर्विसेज वाली जो कंपनी है, जो हमारा कस्टमर है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा ये. ठीक है. सो imagine, let's start with this scenario that a customer is calling. A customer is calling Busy Services and they are saying कि we're getting this power fluctuation, right? It's not working. इसलिए आ रही है, जा रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, वोल्टेज सही नहीं है, तो अब क्या करें. एंड इमेजिन जब आप कॉल करते हैं कॉल सेंटर पे या आप ट्वीट करते हैं, तो यहीं से बात शुरू होती है कि कस्टमर बात करता है. कस्टमर कहता है कि यू नो दिस इज माय प्रॉब्लम. अब कहाँ जाके वो सिस्टम कैसे उसको लेता है, सिस्टम कैसे उस चीज को उस इंफॉर्मेशन को लेके आता है अपने पास ताकि वो उस पर एक्ट करे. अगर हम डायनामिक्स से पहले वाकिफ हैं, आप काम करते रहे, तो डायनामिक्स में इसके लिए कैच ऑल वर्ड जो है वो केस है. केस इज दैट थिंग व्हिच कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी a problem, it can be a complaint, it can be a feedback, it can be any input from customer, right? So हम भी ये करेंगे. हमारे पास क्योंकि कस्टमर कॉल कर रहा है, हम जाके पहले केस बना लेते हैं. ठीक है. और हम कह देंगे कि भाई my power type, सुबह से पावर फ्लक्चुएशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा करें क्या, और केस बना लेते हैं. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करते, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालते, अभी सिर्फ इतना करते हैं कि केस बना लेते हैं. अच्छा, अब होगा क्या इन द रियल लाइफ बिजली सर्विसेज, दे विल either get this case like this, or they might get an email, same thing, or they might be on a phone call with a call contact center, and contact center people will be doing the exactly same thing. They will be actually creating a case, right? So they created a case. Now this case goes to somebody, right? So you can actually assign this case to a team, or you can do automatic assignment, right? So and that's how case goes into a respective team. Now imagine, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन करेंगे अपने टाइम के लिहाज से. अब इमेजिन करें कि ये केस आ गया, केस देखा इन्होंने, इन्फॉर्मेशन देखी, जगह देखी, उन्होंने कहा ओ अच्छा ठीक है, हमें जाके चेक करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा मसला क्या है. तो जब आपको आपने अब आपको टीम भेजनी है बाहर. ठीक है, जैसे आपको टीम भेजनी है, फील्ड सर्विस में जाएगी टीम, फील्ड पे जाके काम करेगी, प्लांट पे जाके काम करेगी, एसेट पे जाके काम करेगी. अब आपको वर्क क्रिएट करना है. ये तो था केस, ये तो था कस्टमर की इंफॉर्मेशन, लेकिन अब कोई वर्क बनाना पड़ेगा और जाके वो कोई वर्क पैकेज बनाना पड़ेगा, राइट, जो आप किसी को देंगे कि यार जाओ जाके ये काम चेक कर आओ. ठीक है. अब इसके लिए क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट इज, राइट. सो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. I'm gonna ask you to focus on this particular tab, right? So go to field service, and यहाँ पे हमें select करना है कि टाइप ऑफ वर्क क्या है. ठीक है, इसका इस फील्ड का नाम है इंसिडेंट टाइप, but incident type is a fancy word for work templates. So होता ही है कि if you are an organization, and imagine again organizations like Bijli Services or other organizations who are into the business of providing services to assets,
right? And if you're working on the variety of assets, they would have many type of templates, right? It's not that every time if they're gonna do work, they will be like, okay, what do we do? How do we do that work, right? हमेशा नहीं सोचते वो, आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, आपको बहुत पता होता है कि ये काम करना है तो कौन सा टेम्पलेट यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन हम गाड़ी के एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि वो बड़ा फेमिलियर एग्जाम्पल है हम सबके लिए. अब गाड़ी की सर्विस होती है 10,000 पे, 20,000 पे, 90,000 पे, उसका पता होता है पहले से. 10,000 पे जाएंगे ऑयल चेंज होगा, 20,000 पे जाएंगे ब्रेक पैड भी चेक होंगे, ये सब चीजें होती है. ये टेम्पलेट है बेसिकली, ठीक है. किसी ने एक दफा बैठ के ये सारे टेम्पलेट बना दिए मेहनत से. अब आपको बार बार नहीं सोचना, आपने सिर्फ देखना है सर्विस कौन सी है, जाके कर लो, राइट. यही चीज जो आपको फैसिलिटी है, जो शायद आपके पास पेपर्स पे होती है, रजिस्टर्स पे होती है, कहीं लिखी हुई होती है या एक्सेल फाइल पे होती है. Dynamics field service lets you do that through incident type. So you can go and select incidents, right? We'll talk about how to define incidents, but fundamentally, once you do that, the next thing that we're gonna do, we need to create work, right? So how do we create work? We go and click on this button on the top, convert to work order. So work order kya hai? Work order is that work piece of work, the package of work that you're gonna give to your field service, your staff, your technicians, your engineers to go out and do the work. So this is what the crux of Dynamics field service is, right? So and the way I explain to people this particular concept is that you cannot imagine dynamic sales. अगर आपने sales पे काम किया dynamic sales पे, तो आप imagine ही नहीं कर सकते उसको without opportunity, या imagine नहीं कर सकते without lead, right? क्योंकि that's a centerpiece of the entire thing. Similarly, dynamics customer service क्या आप तस्वीर नहीं कर सकते unless कि you have got cases, right? In the same vein, dynamics field service की भी बात नहीं हो सकती है, तो क्या work order की बात ना करें? Work order sits at the center of everything which exists in dynamics field service, right? It is one of the fundamental records or record types in dynamics, and that is what we're gonna create now. So हमने case को बना लिया work order, और ये हमें कह रहा है कि the work order was created successfully. अब मैं ओपन कर दूं तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ओपन कर दें, दिखाएं कि आपने वर्क ऑर्डर में बनाया क्या है. अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, राइट? हमें कस्टमर की कॉल आई है, पावर फ्लक्चुएशन हो रही है, हमने लोगों को भेजना है, वो जाएंगे तो वो कुछ इक्विपमेंट भी लेकर जाएंगे चेक वैक करने के लिए. शायद केबल खराब हो तो कोई केबल वेबल भी फिक्स करनी होगी, शायद कुछ चीज इंस्टॉल करनी होगी, कोई सर्विस भी करनी होगी, राइट? ये सारे काम करने हैं. अब ये सारे काम हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई किसी को बुला के कि भाई सलमान इधर आओ तुम ये कर दो, राकेश तुम इधर आओ ऐसे कर दो, ऐसे तो नहीं होगा. हमें एक सब चीजें एक ही रिकॉर्ड में रख देंगे डायनामिक्स में, जो कि वर्क ऑर्डर है, और ये वर्क ऑर्डर हम किसी को दे देंगे कि भाई पूरा वर्क ऑर्डर है, ये पूरा वर्क पैकेज है जो आपने जाना है और जाके काम करना है, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट दैट वर्क पैकेज. सो फर्स्ट थिंग टू नोट ओवर हियर, एक काम ही करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं. First thing to notice over here is that work order has got a lot of stuff, right? It's got all these tabs on the top, also got a lot of fields in here. हम इसमें बात करेंगे उन चीजों की जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हर चीज पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम क्योंकि हमारा ये प्राइमर है, इस प्राइमर में हम हर की चीज को, जो इंपॉर्टेंट चीज है, उनको हम जरूर टच करेंगे, ठीक है? So the first thing that we can see over here is that work order has got a unique number, and that's important because if you're a supervisor and your team is out there on the field, you can call them and ask them what's happening with the work order 511. What's the status of that, right? वैसे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फील्ड सर्विस से आपको स्टेटस खुद ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बात करनी है, ठीक है, कस्टमर से बात करनी है, तो ये सब चीजों के लिए आपको यूनिक नंबर चाहिए. सो यू गॉट द वर्क ऑर्डर नंबर, यू गॉट द कस्टमर, जो कि हमारे पास ये कस्टमर है, हमारे पास स्टेटस है, एंड द स्टेटस इज साइंग कि आई एम ओपन अनशेड्यूल्ड. तो पहले तो मैं ओपन हूं, ऑब्वियसली आई एम ओपन, दिस इज ओपन रिकॉर्ड बिकॉज इट्स नॉट क्लोज्ड. अभी कस्टमर की कंप्लेंट तो हमने रिजॉल्व नहीं की है, एंड इट्स अनशेड्यूल्ड. नोबडी इज शेड्यूल्ड टू डू दिस वर्क, राइट? वी आर स्टिल क्रिएटिंग द वर्क. And then we can see that the type of the work order type is diagnosis and repair. So it's going to be either we're going to do the diagnostics कि भाई problem है क्या, and then we're going to repair it. And फिर आपके पास कुछ और details हैं, आप summary भी बता सकते हैं, कुछ और information बता सकते हैं. आपके पास incident type है, जो कि हमारा वर्क टेम्पलेट था, हमने बात की थी, टेम्पलेट है कि इस काम में, और उसकी वजह से हमने क्योंकि वो सिलेक्ट किया तो हमें पता चल गया है कि इस काम में 2 घंटे लगेंगे. So they are very efficient. It's going to take just 2 hours. But the point is कि based on the templates, जैसे कि template है, आप बता सकते हैं कि इस काम में कितना टाइम लगता है इस काम में, ठीक है? ये चीजें तो लेफ्ट हैंड पे हो गई.
बीच में आपके पास ये टाइमलाइन कंट्रोल आ गया, जो कि आप अगर आप डायनामिक्स पे काम करते हैं तो ये हर जगह मौजूद होता है, ठीक है ना। इस पे आप नोट्स ले सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, आप तस्वीरें ले सकते हैं, कस्टमर से बात हुई वो रख सकते हैं, ईमेल जा रही है वो भी यहाँ जाएगी, सब चीजें इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ही स्क्रीन पर है। On the right hand side, the important thing is, since this is a company who have called us, they have got a person who we can call and ask for further details, right? So once we reach there, maybe we need access to the equipment. So imagine, Kare, maybe this is like a factory, right? And they've got this huge environment or huge, I mean, infrastructure. आपको जाना है, access चाहिए, gate pass होगा, कहीं ना कहीं से जाके काम करना होगा. So this is your primary contact, who you can call and ask for further details, right? Okay. ये तो इतनी बात हो गई कि अब ये वर्क ऑर्डर का, अब थोड़ा सी चीजें और इसमें ऐड करते हैं, राइट। सो इसे कहते हैं कि वेयर अ डिफरेंट हैट, राइट। सो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम कस्टमर की हमने भी कॉल ली है, राइट। अब आप काम ये कर रहे हैं कि आप वर्क पैकेज बना रहे हैं। सो लेट्स वेयर अ हैट ऑफ सुपरवाइजर। लेट्स से आप हम सब वर्क सुपरवाइजर हैं, हम वो वर्क पैकेज बना रहे हैं जो जाके हमने किसी को असाइन करना है। तो अब क्योंकि हमने असाइनमेंट करनी है तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और डालते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या डाल रहे होंगे हम लोग? इन्फॉर्मेशन हम ये रख रहे होंगे, पहली बात कि भाई कौन सी प्रोडक्ट यूज होंगी ये काम करने के लिए, right? So we are going for work fluctuation. So let's click some on the products now. Let's click, and I clicked on this new thing, new button, and now the record window which has opened is called new work order product, right? So a work order product में हम बताते हैं कि कौन-कौन सी products are gonna be used in this work. So let's go in there and let's select electrical cables. Okay, we will need electrical cables to do the to solve the problem, right? And there are a few other things here, but important thing is that we have selected the product. It's an estimation, and how much do we need it, right? So we've got the cost of that over here as well. But for now, let's say I just need one of that. One electrical cables box is enough for me to do this work, right? So I've added that. Number two, प्रोडक्ट तो हो गई। नंबर 2 अब ये है कि सर्विसेज भी हम कुछ करेंगे, राइट। सर्विसेज भी एक तरह से जो है वो वर्क प्रोडक्ट ही होती हैं। ये इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं जो कि टेंजिबल नहीं होती, यू कैन नॉट टच एंड फील देम, बट यू यूज देम एंड देन कस्टमर पेज फॉर यू फॉर दैट, राइट। सो अगेन वी गो हियर और हम कौन सी यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम कहते हैं लोड टेस्टिंग करनी है हमें। फिक्स करने के बाद हम लोड टेस्टिंग करेंगे एंड देन दिस इज गोइंग टू बी टेकिंग, लेट्स से दिस, इसमें भी हमें आधा घंटा लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्राइसेस वगैरह चेंज हो रही हैं। सो अब ये कैसे हो रही है, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है। डायनामिक्स एज अ प्लेटफॉर्म में अगर आप सेल्स पे काम करते हैं, कस्टमर सर्विस पे काम करते हैं, कहीं भी आपने पहले काम किया है, प्रोडक्ट कैटलॉग जो है वो एक ही मॉडल है उसका, वो हर प्रोडक्ट में वही यूज होता है। तो अगर आप पहले से फेमिलियर है तो ये वही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कई दफा देख रहे हैं तो आप कहीं भी प्रोडक्ट कैटलॉग पढ़ेंगे, उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, प्राइस लिस्ट होती है, सब चीजें होती हैं, तो उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने सर्विस ऐड कर ली, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये किया, मैं सर्विस टास्क पर आया हूँ। सर्विस टास्क क्या है कि वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं कि आपका जब क्रू जाए बाहर, जब काम करने जाए, या कोई एक इंजीनियर जा रहा है तो एक इंजीनियर जा रहा है, जो भी जाए वो ये सारे काम करे, राइट। सो and you can, what you can do, you can actually create those tasks for them over here, right? यहाँ मैंने टास्क बनाए नहीं, खुद आ गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे रीड डायग्नोस्टिक कोड, इशू, डायग्नोज इशू, परफॉर्म रिपेयर वगैरह। ये कैसे आ गए जादू से? ये आ गए, हमने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया था ना पहले, जो हमने यहाँ पर जाके ये जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था, पावर फ्लक्चुएशन, इस टेम्पलेट में ये था कि भाई ये प्रोडक्ट यूज होगी, सर्विस यूज होगा और ये सारे काम करने होंगे। जबरदस्त हो गया, राइट। हमारे पास सारा काम तैयार है, हमने बता दिया क्या काम करना है, कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है, क्या सर्विस करनी है और काम कौन कौन से करने हैं, यानी कि चेकलिस्ट बना दी एक तरह से। जबरदस्त। अब क्या करें? अब बुक करते हैं, किसी को असाइन करते हैं ये काम ना। कीवर्ड हियर इज के असाइन नहीं करेंगे। आमतौर पे डायनामिक्स में जो हर जगह यूज होता है वर्ड, वो असाइन होता है। यहाँ असाइनमेंट की बात नहीं है। यहाँ से ये नहीं है कि भाई सलमान, राकेश तुम जाके काम, ये बात नहीं हो रही। बात ये किस टाइम पे होना है काम, because you are going to be, for example, doing this work in a plant which is running 24/7, right? So you got to go in that power, एक window है जिसके अंदर जाना है, अपने काम करना है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही काम होगा। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, कस्टमर ने कहा है कि भाई मैं तो घर पे जो होऊंगा वो 6 से 8 बजे तक ही होऊंगा, आपने उसी में आके काम करना है, राइट। सो अब क्योंकि इसमें टाइम का भी एलिमेंट आ गया, ये भी एलिमेंट आ गया, किसने जाना है, ये भी एलिमेंट है कि भाई उसके पास वो सलाहियत है, वो स्किल्स है, वो सर्टिफिकेशन है कि वो काम कर सके ना कर सके, तो इसे कहते हैं बुकिंग। हम बुक करते हैं लोगों को, राइट। सो अब व्हाट वी आर गोना डू हियर इज गो बैक टू सर्विस। Actually, let's just zoom out a little bit.
अब हम वर्क ऑर्डर्स पर हैं, ठीक है। बात हमने शुरू की थी केस से वर्क ऑर्डर बनाया। अब हम यहाँ पर आते हैं वर्क ऑर्डर पे। इतने सारे वर्क ऑर्डर यहाँ पे पहले से बने हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पहले से कर दूं कि थोड़ा सा कई दफा देख के ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है, वो घबराना नहीं है। बात ये है कि जब आप ये जाएंगे डायनामिक्स में फील्ड सर्विस, जब आप लेंगे ना ट्रायल एनवायरनमेंट, ये बहुत सारा डेटा पहले से होगा इसके अंदर। ये मैंने सारे टेम्पलेट नहीं बनाया, ये मैंने सब चीजें नहीं बनाई, बहुत सारी वर्क ऑर्डर मैंने बनाए जैसे भी मैंने आपके सामने बनाया, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो सारा डेटा पहले से ही होता है। आपने जाके क्या करना होता है, आपने जाके उसको यू स्टार्ट प्लेइंग विद इट, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स सर्टिफिकेशन, यू स्टार्ट प्लेइंग विद इट एंड देन गो एंड डू सर्टिफिकेशन, राइट। सो सारा डेटा आपने पहले से नहीं बनाना, ठीक है। इसीलिए मैंने बात बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि यार जाके पहले टेम्पलेट बनाओ, ये करो, वो करो, प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। अच्छा, अब करते हैं थोड़ा मजे का काम। लेट्स बुक समबडी टू डू द वर्क। सो देयर नंबर ऑफ वेज टू डू दैट। वन वे इज दैट कि मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने कहा कि भाई बुक का बटन आ गया, तो लेट्स बुक, क्लिक कर देते हैं बुक पे। लेट्स सी कि क्या लेकर आता है। अब ये क्या गया है, ये गया है पीछे और ये देखने गया है कि यार ये जो काम है ये कौन कर सकता है, किसके पास स्किल्स हैं, किसके पास टाइम है। एंड देन इट केम बैक विद दीस ऑप्शंस। सो इट इज टेलिंग मी कि बिटवीन 7:30 और 9:30 दो लोग कर सकते हैं। दो लोगों पे क्लिक करेंगे तो उनके नाम भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो लोग हैं, ये भी बता रहे हैं कितना टाइम लगेगा। 14 मिनट बाद ये पहुंच जाएंगे। 7.4 माइल्स दूर है, इतने इसको किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। इतने दूर है ये बंदा, इसको भेज देंगे तो ये पहुंच जाएगा पहले, राइट। सो ये एक तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, सारे आपके पास ने ऑप्शन ला के दे दिया आपको, ठीक है। यू कैन गो एंड सेलेक्ट एनीबडी। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई for example, customer said ke bhai last time I want same engineer to come to my place and do the work who came last time because he or she was brilliant, so maybe you can select that particular person. हम select कर लेते हैं particular person और उसको book कर लेते हैं, right। अब मैंने select किया तो वो कह रहे हैं कि वो resource जो है there are no resources that meet this search criteria, so ऐसा भी हो जाएगा। अगर वो person busy है तो आपको बता देगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप जाएंगे, आपने वर्क ऑर्डर खोल लिया, अब वर्क ऑर्डर के अंदर आपके पास बुक का बटन है, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो वही विंडो आ जाएगी आपके पास, वही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आप जाएं डिफरेंट डेट्स पे सिलेक्ट करें किसी को। एक और ऑप्शन यहाँ पे नीचे और नजर आ रहा है, शेड्यूल असिस्टेंट, इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको फर्दर डिटेल बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि बहुत सारी आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये सारे लोग अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास बता रहे हैं ये अवेलेबल है, देखिए सारे लोग आ गए, हु इज अवेलेबल, क्या टाइप्स हैं, किस स्टार्ट टाइम एंड टाइम तक आ सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, एस्टिमेटेड टेबल ड्यूरेशन, सब चीजें आ गई आपके पास। आपने सिर्फ बंदा सिलेक्ट करना है, आपने बोलना है इसको बुक कर दो, ठीक है। ये एक और तरीका आ गया आपके पास करने के लिए। हम जाएंगे एक और थर्ड तरीके पे। वो थर्ड तरीका पे हम इसलिए जाएंगे क्योंकि वो सबसे मजे का तरीका है। वो तरीका हमारे पास है शेड्यूल बोर्ड। तो शेड्यूल बोर्ड मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग स्क्रीन इन द एंटायर डायनामिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। दिस इज also one of the most powerful. So what it does, it basically shows you all the people on the left hand side, right, and it could be people, it could also be crews. अगर आपके पास 4-5 लोग एक ग्रुप की तरह काम करते हैं तो वो क्रू भी आ सकता है इसके अंदर, और भी सब चीजें आ सकती है इसमें, फैसिलिटी भी आ सकती है इसमें। अगर आप कोई मशीनरी बुक करना चाह रहे हैं कि मुझे मशीन जाके पहले चलाना है ताकि मसला सॉल्व करूं, वो भी आ सकता है। ये सब चीजें यहाँ आ सकती हैं। सो ये आपके पास यहाँ आ गई, ये आपके पास सारा टाइम आ गया। आप देख रहे हैं ये पूरा आपके पास ये डी आपके पास पूरी डेट्स आ रही हैं, ठीक है। ये संडे चल रहा है, ये मंडे आ गया। ये देख रहे हैं पूरा ग्रे था, ये ग्रे इसलिए था कि ये लोग काम नहीं करते, ये सारे लोग सैटरडे संडे को काम नहीं करते हैं, मंडे को काम करते हैं सुबह 8 से 4, ठीक है। तो आप लोगों के, तो आप देख रहे हैं कुछ लोगों के अगेंस्ट व्हाइट कलर है, कुछ के अगेंस्ट ग्रे आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए खुद ही बता रहा है, आपको बता रहा है एज अ प्लानर। नाउ वी आर वेयरिंग अनदर हैट, नाउ वी आर वेयरिंग अ हैट ऑफ अ प्लानर। सो सिंस वी आर प्लानिंग वर्क, we can assign this to anyone, right? For now, what are we gonna do? We just gonna so we just gonna take this work and assign to this guy. ये जो बंदा लग रहा है अली, ये थोड़ा सही लग रहा है, इसको असाइन कर देते हैं वर्क, ठीक है। वजह इसकी सिर्फ ये है कि ये ट्रायल एनवायरनमेंट है, मेरे पास एक ही यूजर है, तो उसी यूजर को हम सारे काम कराते हैं, ठीक है। सो अब हमने ये काम असाइन कर दिया अली को। ये कुछ भी नहीं किया, हम देखा, हमने ड्रैग किया और ड्रॉप किया, दैट्स इट। ये हमने काम कर दिया, काम असाइन हो गया। So basically, this screen called schedule board, this lets you book resources against time, against the people. अब हम पीछे आते हैं। ये अगर आप इससे फेमिलियर होंगे कि ये हमारी स्क्रीन है जो कि
सिक्योरिटी रोल असाइन करने के लिए होती है। तो हमें थोड़ा सा हमारे पास एक जुगाड़ यहाँ पर ये है कि एक ही रिसोर्स है तो उसको डिफरेंट रोल असाइन करते हैं। अब मैंने इसको रोल जो असाइन किया है वो मैंने असाइन किया है रोल रिसोर्स का, कि अब मैं एज अ रिसोर्स का काम कर रहा हूँ। तो जब हमने असाइन कर दिया ये वर्क अली को, तो अब होगा क्या, अली साहब को ये काम कैसे मिलेगा। अब हम जब जाके यहाँ पे ऐप सेलेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फील्ड सर्विस सिर्फ एक ऐप नहीं है, यहाँ पे दो ऐप्स हैं, फील्ड सर्विस भी है और फील्ड सर्विस मोबाइल भी है। तो फील्ड सर्विस मोबाइल वाली ये जो ऐप है ना, दिस इज दैट ऐप दैट यू विल सी, it's exactly same user interface which you will see on your mobile, on your tablet, iPad, Samsung, Huawei, जो भी सिस्टम है, जो भी है, ये ऐप है, ये Microsoft Dynamics Field Service की ऐप है। This is not the same app as the app which you have got for Dynamics, right, or the Power Apps। ये एक और third kind of app है जो कि specific to Dynamics Field Service है, and it has got all the capabilities which are required for field staff। For example, आपको ऑफलाइन कैपेबिलिटी चाहिए, आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको उसमें सारा चेकलिस्ट बनानी है, बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं जो कि सिर्फ इस मोबाइल ऐप में होते हैं। अब मैं आपको ये डेमो इसी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी ऐप्स हैं हमारे पास, उनका यूजर एक्सपीरियंस सेम रहता है, चाहे आप उनको कहीं भी यूज करें, चाहे आप उनको ब्राउजर में यूज करें या टैबलेट में यूज करें, क्योंकि यहाँ बस टाइम को हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको वो काम यहीं पे दिखा रहा हूँ। सो होगा क्या, जब अब मैंने दूसरा हैट पहन लिया, राइट, अब मैं वो बन गया हूँ जो कि अब मैं वो टेक्नीशियन या इंजीनियर बन गया हूँ जो बाहर जाके काम करेगा। सो व्हेन यू आपको अब आपके पास जब काम असाइन किया आपको प्लानर ने, आपके पास वो आ गया एकदम से प्रॉम्प्ट आ गया कि भाई आपको काम असाइन हुआ है। सो आई विल ओपन माय ऐप and this is what I'm gonna see. I'll see all the work that is assigned to me, right? So I'm gonna go to bookings, I'll see my work. Let's go to week view. So this is very similar to the view that we have got in Outlook and other places, right? So it's telling me कि एक तो काम मेरे पास यहाँ ये था, और भी मेरे पास ये सारे काम असाइन हुए हुए हैं। देखें ये वही सारे काम है जो अभी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखे थे, ठीक है। So अब मुझे काम असाइन हो गया, I'm an engineer, I'm gonna go out and fix that power fluctuation issue। So अब मैं यहाँ पे ये सारे काम कर सकता हूँ कि मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि इसमें एड्रेस है, आप देख रहे हैं एड्रेस है, मैं ड्राइविंग डायरेक्शन ले सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम किसी भी एक इसको पावर फ्लक्चुएशन वाले को ओपन करते हैं। अच्छा, जब हमने ओपन किया तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं बताता हूँ कि भाई मैं ट्रैवलिंग करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स चेंज द स्टेटस। सो यू कैन चेंज द स्टेटस, यू कैन से ट्रैवलिंग, राइट। सो once you change the status, what's gonna happen, वापस चलते हैं शेड्यूल बोर्ड पे, और आप देख रहे हैं वो वाला चीज यहाँ गायब हो गई। वो क्यों गायब हो गया? वो इसलिए गायब हो गया कि मैंने स्टेटस किया है उसका ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग तो अभी हो रही है ना, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखें वो 511 का स्टेटस चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, वो कह रहा है ट्रैवलिंग हो रही है, वो बंदा जा रहा है फिक्स करने के लिए, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ऐसे ही मैं काम करता रहूंगा। मैं काम कंटिन्यू करूंगा, मैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देख लूंगा कि भाई कस्टमर कौन है, कहाँ है, ये मैप वैप आ गया मेरे पास, जबरदस्त हो गया। अब मैं सर्विस पे करूंगा, राइट। सो अब इमेजिन करें कि वही बंदा जो पहले ये सारा चीजें कहीं पेपर पे थी, कहीं एक्सेल फाइल पे थी, अब ये सब एक ही सिस्टम है, ये एक ऐप है इसके अंदर मैं सारे काम कर रहा हूँ। इट इज टेलिंग मी दैट आई नीड टू डू ऑल दीज 4 थिंग्स। सो लेट्स से आई डिड दैट। It has got all the services that I need to perform. It has got the cable, all the products that I need to use. So I've got, for example, for products, मैंने ये product ले ली, मैंने कहा कि भाई ये वाली product मैं use कर रहा हूँ, कितनी use कर रहा हूँ। Let's say I was supposed to कितनी थी, 1 मेरे पास है, so I can use that one, right? I can say ठीक है भाई ये 1 वाली product हमने use कर ली। So actually asking me how many did you use? So maybe I'll say कि I was supposed to use 1 but I did actually use 2, right? So इस सारी की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास यहाँ पर आ सकती है। वेयर हाउस भी हमने दे दिया इसको। अच्छा, अब मैं काम कर रहा हूँ, राइट। ड्यूरिंग द वर्क आई एम एक्चुअली अब मेकिंग दीज अपडेट्स ऑन द सिस्टम, राइट। सो हमने ये कर दिया, हमने कोई रेजोल्यूशन हो जाए इशू का तो उसकी भी डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं। अब हम ये करते हैं कि स्टेटस भी चेंज करते रहेंगे हम लोग। पहले ट्रैवलिंग का स्टेटस था, अब जाहिर है काम कर रहे हैं तो उसका स्टेटस होना चाहिए इन प्रोग्रेस, कि भाई हम काम कर रहे हैं, ठीक है, काम चल रहा है। काम फिर चलता रहेगा, आप ये ऐप अपडेट करते जाएंगे, आप इसका स्टेटस अपडेट करेंगे, यू विल कीप ऑन अपडेटिंग व्हाट प्रोडक्ट्स आर यू यूजिंग और व्हाट्स हैपनिंग, एंड एवरीथिंग विल keep on communicating to here. You see color again changed. So basically the schedule board screen is not only a tool to drag and drop work against people, it's like a live stock tracker, right? A stock exchange का tracker होता है. It's actually telling you on the field क्या काम हो रहा है,
क्या चल रहा है, कोई डिले हो रहा है, पहले हो रहा है, क्या स्टेटस है. And so now if you think about it, the organizations which have got a lot of these assets to be serviced, who have got these सारे सब चीजें जिनके पास होती हैं, बहुत सारी services होती हैं, बहुत सारे assets होते हैं, got a lot of customers, and the business that I'm talking about, frankly, it's very common to run into customers who have got 500 such people, technicians and engineers and field service staff who go out and do the work. So imagine if you got, and 500 is a very nominal number. Actually, they are even 10,000 and even more than that. So imagine if you got these many people, how much busy your schedule board would be, right? You will see all the boxes all around, and you will see all the colors changing, right? And then you can create different views so that you can only see how much of the maintenance work is going on and how much of the installation work is going on, and so on and so forth, right? So ये schedule board वो screen है जो आपकी scheduling में भी, planning में भी help करती है, but it also helps you to track and see the work. So for example, during the work you get a call from your customer, you can tell them कि भाई वो जो हमारी टीम है वो पहुंची हुई है, वो कर रही है काम, उन्होंने काम शुरू कर दिया है, काम करे उनको 1 घंटा हो गया, and so on and so forth. आप भी अपडेट कर सकते हैं. अच्छा, अब ये बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, काम खत्म हो गया, लेट्स से हमने ये सारा काम कर दिया, राइट? अब हमने ये सारा काम जब कर लिया, सब चीजें हो गई हमारे पास, तो अब हम कस्टमर से कहेंगे कि काम हो गया भाई, ठीक है. सो अब अगर आप मोबाइल पर है, यही वाली स्क्रीन याद रखें कि हम फील्ड सर्विस मोबाइल के अंदर है, ये ऐप आप यूज करेंगे टैबलेट पे या मोबाइल पे, ये एग्जैक्टली सेम यूजर इंटरफेस वहां पर होगा. तो ओवर देयर यू कैन ऐड नोट्स, you can also take pictures, right? So from notes you can also take pictures, right? And then you can also ask customer to sign. So customer ने जो है वो यहाँ पर let's say sign कर दिया, right? ये आपके पास पूरा यही होता है बहुत सारे वर्क में. Customer actually sign at the end that yeah, we are happy, we have seen it working, thanks for solving the issue, end of the story, handshake and bye bye, right? So यही आपके पास होता है. ये काम आप यहाँ पे पूरा आपने अपने स्क्रीन के पे रहते रहते कर लिया, आपने काम भी कर लिया, आपने काम का नोट्स भी ले लिए, आपने कस्टमर के सिग्नेचर भी ले लिए. एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगी? आप कहेंगे कि भाई काम खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, मैंने काम कर लिया, 2 घंटे का काम मैंने 5 मिनट के अंदर कर लिया, जबरदस्त. आपने इसको सेव कर दिया. जब आपने ये सेव कर दिया, तो ये काम आपके पास वहां से आपकी लिस्ट ऑफ जो चीजें आपने करनी थी उस दिन का, जो आपका एजेंडा था, तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसका मैं बुकिंग कैलेंडर खोल लेता हूँ इसका, उसमें से ये चला जाएगा, गायब हो गया यहाँ से, राइट? क्योंकि हमने काम कर लिया. अब हम अपने वापस चलते हैं. तो हम इन साहब को दोबारा से बाकी रोल भी दे देते हैं ताकि ये अब दोबारा से वहाँ वहाँ की स्टोरी देखेंगे बैक ऑफिस में क्या हुआ है. अच्छा, जब तक ये खोल रहा है, यहाँ पर हम आके देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, ये इतना छोटा सा रह गया. ये याद है, ये इतना बड़ा सा बॉक्स था, ये इतना छोटा सा रह गया. तो इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं भाई. ये छोटा सा क्यों रह गया? इसकी वजह ये है कि ये आपको sorry, the size of the box is actually related to the duration as well, because you see this is like that graph, right? XYZ जो होता है, तो क्योंकि ये वाली जो डायमेंशन है वो टाइम की है, तो उसके अंदर उसका साइज उतना ही बड़ा है जितना कि आपके पास duration of the work है. So it was 2 hours, that's why it was showing like a big box. Now we did it in only 5 minutes, so we can see it's done. पर आप इसमें और थोड़ा सा इस पे आप गौर करें तो इसमें एक टिक का मार्क भी नजर आ रहा है. वो टिक मार्क आपको इसमें नजर आ रहा है कि काम खत्म हो गया. सो मैं अगेन इसमें थोड़ा सा जाते देखते हैं कि काम किधर था वो. ये तो हमारे पास बाकी काम था. ये देखें आप, इसके अंदर आपके पास टिक मार्क भी आ गया. सो एक्चुअली वर्क गॉट कंप्लीटेड, यू डिड इट, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट? सो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस पे जाके इस वाले वर्क ऑर्डर पे आता हूँ, जो वर्क ऑर्डर था हमारे पास, जो कि हमारे पास काम हमने करना था, वो अगर हम उस पे आते हैं तो ये कंप्लीटेड हो गया, ठीक है. सो द वर्क वाज असाइन्ड टू अस एंड इट वाज कंप्लीटेड, स्प्लेंडेड, वी डिड ग्रेट वर्क. सो नाउ लेट्स डू द क्लोज पोस्टेड. तो लास्ट स्टेटस जो है हमारा वो क्लोज पोस्टेड है. हम कहेंगे कि भाई हमारे पास काम आ गया, हमने कर दिया, वेरी गुड. अब क्या रह गया? एक काम रह गया सिर्फ. वो काम क्या रह गया? कि कस्टमर को कॉल करनी है, उनको बताना है कि आपका काम हो गया. तो वापस चलते हैं. कस्टमर का जो केस था उस पे चलते हैं कि कस्टमर का केस आ जाए हमारे पास. यहाँ से मुझे नजर नहीं आ रहा इस वक्त, थोड़ा सा मैं टाइम का भी कॉन्शियस हूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ से चले आते हैं.
ये वाले कस्टमर था जो कह रहा था कि हमारे पास ये काम प्रॉब्लम है, हमने इनके लिए वर्क ऑर्डर बनाया था, सारा काम किया था, काम हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले पूरे केस को रिजॉल्व कर देंगे, राइट? सो दैट्स हाउ यू बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, issue solved, right? we started with the customer. इसके कस्टमर ने कॉल किया, केस बना, हमने वर्क पैकेज बनाया, उसके अंदर में चीजें ऐड की, हमने प्रोडक्ट ऐड की, सर्विस टास्क ऐड किए, चेकलिस्ट बनाई, हमने असाइन किया एक बंदे को, वो टीम गई, उन्होंने जाकर सॉल्व किया प्रॉब्लम, उन्होंने मोबाइल ऐप यूज की, उन्होंने स्टेटस चेंज किया, उन्होंने साइन ली और आ गया। ये पूरा एंड टू एंड बिजनेस आपके पास डायनामिक्स फील्ड सर्विस ने आपको दे दिया, मोस्टली आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें कोई बहुत ज्यादा होशियारी नहीं है, ये ज्यादातर आउट ऑफ द बॉक्स है। एक चीज और काम करते हैं आगे जाने से पहले, वो ये है कि यही काम कस्टमर पोर्टल पे भी तो कर सकता है, तो फिर कितना मजा है। सो डायनामिक्स आल्सो हैज गॉट अ पोर्टल। ये पोर्टल की स्क्रीन है, इसमें दिस इज कॉल्ड फील्ड सर्विस पोर्टल, इट्स पार्ट ऑफ द पावर एप्स। और इसके अंदर भी ये होता है कि कस्टमर जाए यहाँ से, यही कस्टमर जैसे लॉग्ड इन है, कस्टमर गया, कस्टमर ने कहा मुझे पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है, आपने सेलेक्ट किया प्रॉब्लम, आपको उसने कहा कि टाइम स्लॉट्स बता दो, आपने टाइम स्लॉट लिया, आपने ये किया, आपने कोई और इन्फॉर्मेशन रखनी है तो वो रख दें और आप इसको बुक कर दें। यहाँ भी यही हुआ, इसके पीछे ये पहले वर्क ऑर्डर बनाता है, वर्क ऑर्डर बनाने के बाद आपकी रिसोर्स भी बुक कर देता है। ये सारा काम भी आपके पास फील्ड सर्विस के अंदर इस पोर्टल के थ्रू हो जाता है, राइट? एंड दिस पोर्टल इज कॉल्ड फील्ड सर्विस पोर्टल। इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है जिसे हम कहते हैं सेल्फ शेड्यूलिंग, व्हिच वी जस्ट डिड, राइट? दिस इज सेल्फ शेड्यूलिंग, कि आपने काम किया, बताया काम कब होगा। और अगर मैं फील्ड सर्विस में आके देखता हूँ, अब मैं यहाँ पर आके देखूंगा, क्या डेट बताई है इन्होंने कि 2 अगस्त को 11 बजे होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, 2 अगस्त में जाते हैं, 2 अगस्त में थोड़ा सा जूम आउट व्यू करते हैं ताकि समझ में आए। और 2 अगस्त कहाँ है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखें 2 अगस्त में आपके पास 11 बजे वाला काम आ गया, राइट? सो ना सिर्फ वर्क ऑर्डर बन गया, ये वर्क ऑर्डर है, राइट? ये वर्क ऑर्डर बन गया आपका 512, वर्क ऑर्डर भी बन गया आपके पास, ठीक है? शेड्यूल भी हो गया, रिसोर्स और कस्टमर को कंफर्मेशन भी मिल गई। अब इसके पीछे वो सारी बाकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि आप कस्टमर को एसएमएस करते हैं, नोटिफिकेशन जाती है, वगैरह वगैरह। So this is what Dynamics Field Service does. It lets you create the work, find the best person and schedule it, right? इसके अलावा भी बहुत कुछ डायनामिक्स फील्ड सर्विस करता है। मसलन ये कि जिस एसेट को आप फिक्स करने गए थे, जो आपने पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, दैट वाज एन एसेट। उस एसेट के लिए जो सर्विस बननी है, कैलेंडर बनना है, कब कब उसकी सर्विसिंग होनी है, वो भी इसके अंदर होता है। आईओटी बड़ी कॉमन चीज है, अब आपके पास आपको डिवाइसेस खुद बता रही होती है, सिग्नल भेज रही होती हैं, वो भी डायनामिक्स के अंदर है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपने जाके यहाँ पे यूज की है, उसकी परचेसिंग वगैरह, उसकी इन्वेंट्री, वो भी डायनामिक्स के अंदर फील्ड सर्विस के अंदर है। ऑल पार्ट ऑफ डायनामिक्स फील्ड सर्विस, राइट? Now, with all that we talked about, let's just go back, right? And just sort of concluded कि हमने किया क्या? हमने डायनामिक फील्ड सर्विस की कोर फंक्शनलिटी देखी कि वर्क आता कैसे है, उसको असाइन कैसे करते हैं, शेड्यूल कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, राइट? ये तो हमने पूरा देख लिया। Now, if you would like to go further from here, right? You want to further explore it, and I would encourage you to do that. कैसे करेंगे, राइट? ये वही मैकेनिज्म है जो मैंने भी यूज किया है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाएं, बहुत जबरदस्त वहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, उसको एक्सप्लोर करें, पूरा आप ट्रैक फॉलो करें, सर्टिफिकेशन करें, उसके बाद 2-3 सर्टिफिकेशन है वो करें, एक्सप्लोर करें एडवांस टॉपिक्स लाइक आईओटी, कनेक्टेड फील्ड सर्विस, ये आईओटी से रिलेटेड है, इंस्पेक्शन कैसे होती है, इंस्पेक्शन का फॉर्म कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, डायनामिक्स की कम्युनिटी में, इस तरह के इवेंट्स में, और शेयर करें, राइट करें, टॉक करें, लोगों से बात करेंगे। आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, मैंने भी एक किया होगा, आपने एक किया, इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे सीखूंगा। तो शेयर करें, बात करें। और इसी उस पे मैं अपने इसको कंक्लूड करता हूँ कि मेरे पास I would love to hear back from you if this was useful, if you have any questions, it was very fast, और जो भी था। I've got my email address here, ये मेरा email address है, ये मेरा blog है, ये मेरा Twitter है। I would love to hear back from you and continue the conversation. Thanks so much. थैंक यू सो मच अली, बहुत मजा आया और काफी कुछ जो है वो सीखने को मिला हमें। आई थिंक जल्दी से 1-2 क्वेश्चन है हमारे पास, या दो मिनट हैं तो हम जो है वो क्वेश्चन ले सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, आई थिंक उसको आपके पास इतना शायद पूरा उसका आंसर तो नहीं कर पाए आप, लेकिन जल्दी में कि जो हमारे पास एसेट मैनेजमेंट है 365 के अंदर, फाइनेंस ऑपरेशंस के, फील्ड सर्विस है, और फिर वर्टिकल्स हैं बहुत सारे लोगों के, राइट? बिल्कुल। तो जो क्लाइंट
के लिए क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें देख के हम सोच सकते हैं कि यार कौन सी चीज लगानी चाहिए? देखिए, उसका रूल ऑफ थंब होता है ना, रूल ऑफ थंब बहुत ही चीज़ों में डिटेल होती है। रूल ऑफ थंब होता है कि कुछ बुनियादी बातें। बुनियादी बात क्या है? अगर आप एसेट मैनेजमेंट के अंदर एसेट की फाइनेंशियल्स मैनेज कर रहे हैं, एसेट का लाइफ साइकिल मैनेज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये ईआरपी में ही होंगी। ये आपके जो स्पेशलाइज्ड वर्टिकल मॉड्यूल्स हैं, वहीं पर होगा। लेकिन उसकी सर्विसिंग कब करनी है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है, किसको भेजना है, क्या करना है, ये फील्ड सर्विस के अंदर होगा। तो आमतौर पे हम ये दो चीज़ें इसीलिए इंटीग्रेटेड होती हैं कि यहाँ पे शेड्यूलिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, एक्चुअल वर्क होता है डायनामिक्स फील्ड सर्विस में, और ईआरपी से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि ये सारा डेटा हम वहां भेजें, ताकि वहां पे उसकी फाइनेंशियल्स वगैरह मैनेज हो। जबरदस्त जबरदस्त, आई थिंक काफी क्लियर हो गया। एक ये क्वेश्चन आया यासिर की तरफ से कि ट्रांजिशन जो है वो कितनी इजी है फील्ड लेगेसी सिस्टम से? देखिए, हर जैसे सॉफ्टवेयर में होता है, वैसे वही वाले चैलेंजेस हैं, ठीक है? जैसे कि आप कोई नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन डायनामिक्स फील्ड सर्विस में कोई सेल्स में तो हूँ नहीं, लेकिन डायनामिक्स फील्ड सर्विस वाक़ई मतलब ये ऐसी बातें मतलब वाक़ई ये लीडिंग में गार्टनर वगैरह के क्वाड्रेंट वगैरह में, उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट बहुत ही, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, आउट ऑफ द बॉक्स है, काफ़ी चीज़ें बड़ी आसान है। जितनी इम्प्लीमेंटेशन मैं करता आ रहा हूँ कई सालों से, ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन नहीं होती, तो बड़ा आसान है आपके पास आपके ट्रांज़िशन करना है इस पे। जबरदस्त। आई थिंक इसके साथ ही हम टाइम अप हो गया। थैंक यू सो मच अली, थैंक और यू सो वाकई मच। आपने 45 मिनट में जो है इसको सारा बहुत जबरदस्त कवर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ गाइस। लक। See ya. Bye. Cool. तो अब जो है हम I think let's go towards the next session. So I'll add Priya into the live stream. Hi Priya, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ कामा, थैंक यू फॉर द इनवाइट। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान यूजर ग्रुप के सेशन में आने के लिए, एंड आई थिंक इस सेशन की लैंग्वेज जो है वो हिंदी होगी, सो वी विल लिसन इन हिंदी अबाउट द इवेंट्स मैनेजमेंट इन मार्केटिंग। सो जो कि हमारे 365 प्लेटफॉर्म में आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है, और काफी लोग जो है वो सीखना चाहते हैं कि किस तरह से इसकी मैनेजमेंट होती है। ये वो नॉर्मल वाली इवेंट वाली नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर जो इवेंट्स होते हैं। तो आई थिंक ज्यादा मैं प्रिया हैंड ओवर कर दूंगा। थैंक यू प्रिया, ओवर टू यू। थैंक यू कमल। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करके चेक करना चाहूंगी कि मेरी स्क्रीन शेयर ठीक से श्योर, आई विल बी हियर टू कंफर्म दैट। जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू कमल। Again, hello everyone, welcome everyone to the Hindi Urdu Bootcamp 2021। मैं आपका सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी हिंदी और लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकूँ। थोड़ा बहुत मेरे बारे में बिफोर वी गो टू द इवेंट्स मैनेजमेंट। My name is Priyanka Garg, but mostly मुझे लोग प्रिया बुलाते हैं ऑफिशियल में, and friends also both the companies they call me Priya। मैं सिडनी में हूँ, सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया पिछले 4 साल से, but originally I belong from पंजाब in India। मैंने अपना करियर माइक्रोसॉफ्ट में 11 साल पहले शुरू किया, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में एज अ डेवलपर, एंड सीआरएम में करियर मैंने अपना सीआरएम 11 से शुरू किया, जब सीआरएम 11 प्रोडक्ट पे काम करते थे, एंड धीरे धीरे इट बिकम्स 365 नाउ, एंड हाउ द प्रोडक्ट इज इवॉल्विंग। आई थिंक वी ऑल आर लर्निंग सो मच ऑन D365। मैं अपने ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, एंड अभी मैं PwC में काम कर रही हूँ एज अ टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट। एज मैंने पहले ही मेंशन किया, मैंने अपना करियर डेवलपर से शुरू किया था, तो मैं अपना टेक्निकल करियर नहीं छोड़ना चाहती। सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग एज अ टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट इन PwC सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आई ऑल्सो लव टोस्टमास्टर्स। टोस्टमास्टर्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो फॉर पब्लिक स्पीकिंग, जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही स्टार्ट की 4 साल पहले, एंड 3 साल से टोस्टमास्टर ऑर्गेनाइजेशन में मैं वॉलंटियर कर रही हूँ इन committee or organizing the session and everything. So it's a great platform. यहाँ पे मेरा LinkedIn कोड है, if you want to connect with me you can connect directly to me with LinkedIn। अभी हम बात करते हैं how to manage your events via D365 marketing। इवेंट्स की बात करूँ तो आज का ही इवेंट देख लीजिए, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। ये 3 दिन का इट्स अ लॉन्ग इवेंट, और seriously I want to thank all of the organizer and committee members
जिन्होंने इतना ही खूबसूरत ढंग से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। और इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट लाइक अ वन डे शो और वन मैन शो। दे हैव डन अ रियली ग्रेट जॉब। और उसका दिखाना चाहूँगी कि मार्केटिंग उस सेंस में D36 मार्केटिंग और माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, कैसे हम अपने इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने ऑन साइट इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, और या कैसे हम अपने वेबकास्ट और लाइव इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इवेंट मैनेज के इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम अपना इवेंट टीम सेटअप करते हैं, हम अपना और इस D36 मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सेशंस और ट्रैक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और स्पीकर्स की लिस्ट को असाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इवेंट पासेस, तो कभी कुछ इवेंट्स फ्री होते हैं, कुछ पेड इवेंट्स भी होते हैं, तो उसके थ्रू हम पेमेंट गेटवेज के थ्रू भी काम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन असाइन द इवेंट पासेस टू द ऑडियंस। अगर ये ऑन साइट इवेंट है तो इवेंट वेन्यू, लॉजिस्टिक्स, अकोमोडेशंस, होटल्स, एवरीथिंग, ये सब मैनेज किया जा सकता है एक वन स्टॉप शॉप D365 मार्केटिंग। इसके थ्रू हम रिकरिंग इवेंट्स भी बना सकते हैं। अगर ये कुछ इवेंट्स जैसे सिनेरियो लीजिए, हम यूनिवर्सिटी में हैं और कुछ इवेंट्स हैं जो मंथली होते हैं या फोर्टनाइटली होते हैं, तो उनको हम बार बार शेड्यूल करने के बजाय या बार बार बनाने के बजाय हम रिकरिंग इवेंट्स बना सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि हमने स्टोर की है वो इन्फॉर्मेशन हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एवरी इवेंट के लिए। जैसे कि आज के इवेंट्स में हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि बारहेड, मैजिक ग्लोबल एंड अदर स्पॉन्सर्स। तो ये स्पॉन्सर्स भी D36 मार्केटिंग में मैनेज किए जा सकते हैं, जो कि हम आगे डेमो में देखेंगे कि हम ये सारी चीज़ें एक स्टॉप शॉप पे कैसे मैनेज करेंगे, और इसको हम डिटेल में देखेंगे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ईजिली मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी कस्टमाइजेशन, प्योरली स्टैंडर्ड आउट ऑफ द बॉक्स। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट हमें एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, जो कि है इवेंट वेबसाइट और इवेंट पोर्टल, जिसे भी बोल सकते हैं। ये पावर अगर आपने सुना होगा पावर एप्स पोर्टल, पावर प्लेटफॉर्म पोर्टल, ये इस पे है। इसमें हम इवेंट्स सारे जितने भी अपने अपकमिंग इवेंट्स है वो सारे होस्ट कर सकते हैं। सिंगल इवेंट्स पे जाके ऑडियंस जाके रजिस्टर कर सकती है। अगर मेरे को कुछ सेशंस के लिए ही, अगर ये मल्टी सेशंस और मल्टी ट्रैक्स है, तो मैं कुछ सेशन के लिए रजिस्टर कर सकती हूँ। वेट लिस्ट हम इनेबल कर सकते हैं कि मैंने कुछ सेशंस में कितने इवेंट्स हैं। लेट्स से अगर ऑन साइट इवेंट है या हाइब्रिड इवेंट है, तो हम वेट लिस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमें इवेंट पोर्टल पे मिलती है, जस्ट फ्यू स्टेप्स कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एनी कस्टमाइजेशन। और साथ ही साथ हम अगर हमने रजिस्टर किया है तो अपनी प्रोफाइल भी मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, तो नेक्स्ट टाइम हम इवेंट्स दोबारा कोई इवेंट में जाएं तो ऑर्गेनाइजर्स के पास हमारी इंफॉर्मेशन हो, हमें दोबारा प्रीफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़े, दोबारा अपने रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। कितने तरह के इवेंट्स हैं? पहले D36 मार्केटिंग सिर्फ ऑन साइट इवेंट को हैंडल करने के इवेंट्स देता था, या हम थर्ड पार्टी इवेंट्स के साथ इंटीग्रेशन कर सकते थे। वन ऑफ द एग्जांपल इज On24, जिसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी करके दी है, जिसमें हम जस्ट फ्यू क्रेडेंशियल्स चाहिए और API चाहिए जिससे हम कर सकते हैं। बट अभी कुछ टाइम पहले वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टू टीम्स मार्केटिंग, स्पेशली इन द कोविड वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ हम आज भी ये इवेंट ग्लोबली दुनिया के हर कॉर्नर से ये इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। सिमिलर लाइक D36 मार्केटिंग में ये 3 पॉसिबल्स है वाया माइक्रोसॉफ्ट MS टीम्स। अभी आप सोचिए कि आजकल हर कस्टमर, अगर हम ये इवेंट मार्केटिंग किसी कस्टमर पे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, मोस्टली दे हैव द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस, MS टीम लाइसेंस, सो इट्स रियली ईजी फॉर देम कि वो टीम्स मीटिंग में या टीम्स वेबिनार या लाइव इवेंट्स में इजीली ट्रांजिशन कर जाएं। अब टीम मीटिंग्स वी ऑल नो, अगर हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 1-to-1 मीटिंग्स और कुछ 8 से 10 लोगों की टीम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है और 50 लोगों के लिए, तो हम टीम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। टीम वेबिनार इज लाइक जहाँ पे ऑडियंस थोड़ी बड़ी होती है, बट दे स्टिल नीड टू लॉग इन द सिस्टम, क्योंकि उन्हें क्रेडेंशियल्स चाहिए टीम वेबिनार्स के लिए, एंड दे कैन कोलैबोरेट। एंड लाइव इवेंट्स आर लाइक वेयर anonymous people ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है, एंड दे कांट collaborate with each other, but the audience still can ask questions like today. Okay, so what is the process? Event planning
इतनी बड़ी चीज़ है। आज के इवेंट्स को अगर हम एग्जांपल लें तो इट्स लाइक अ बिग बिग इवेंट। अगर यही इवेंट ऑन साइट होता तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। लाइक हमें कहाँ करना है, क्या लॉजिस्टिक्स हैं एंड एवरीथिंग। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमें सोचनी है इवेंट स्टार्ट करने से पहले। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस फ्लो प्रोवाइड किया है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप। एंड मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी हर स्टेप्स क्या है। इट डजंट मीन कि हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं जब हम अपने इवेंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। वी कैन इजीली कॉन्फ़िगर और कस्टमाइज बाय डेटाबेस। तो पहला स्टेप आता है हमारा प्रीलिमिनरीज। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं? सबसे हमारी पहली चीज़ क्या होती है जब हम किसी इवेंट और वेबकास्ट और सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचते हैं? इवेंट टाइप क्या है हमारा? कब, कहाँ है? अगर वो हाइब्रिड है, ऑन साइट है, तो वेट लिस्ट कितनी है? कितने लोगों को कितनी मैक्स लिमिट है हमारी इवेंट की? हम कितने लोग अटेंड कर सकते हैं? ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी इवेंट, आइदर इट्स द ऑनलाइन और ऑन साइट। सेकेंड चीज़ आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे इवेंट का एजेंडा क्या रहेगा, जिसमें हम डिफाइन करते हैं सेशंस होंगे, कितने सेशंस होंगे, हर सेशन के कितने स्पीकर्स होंगे। अगर ये को होस्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल स्पीकर्स भी हो सकते हैं, सिंगल स्पीकर भी हो सकते हैं। एंड स्पॉन्सर्स, हाँ, इस इवेंट को स्पॉन्सर करने वाले स्पॉन्सरशिप्स कौन सी होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। एंड वी वांट टू ट्रैक सो दैट हमारी चीज़ें इधर उधर लूज नहीं हो और हमारा इवेंट सक्सेसफुल हो। थर्ड चीज़ आती है ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? अगर ये ऑन साइट इवेंट है, वेन्यू कौन सा है, सेशंस की टाइमिंग्स क्या हैं, रूम्स रिजर्वेशंस क्या हैं। अगर हम केटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो केटरिंग होटल्स और केटरिंग से वो करना, कांटेक्ट करना होगा। गेस्ट लिस्ट बनानी होगी, गेस्ट देखना होगा, गेस्ट रजिस्ट्रेशंस देखनी होगी। लॉजिस्टिक्स और कितने तरह के लॉजिस्टिक्स आते हैं, वो सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज स्टेज पर आती हैं। जब हमने एजेंडा क्लियर कर लिया है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पे हैं। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, अब लास्ट चीज क्या आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रमोट। डेफिनेटली अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें ये पता है आज से 1 मंथ बाद हमारी इवेंट है, तो उसकी प्रमोशन उतनी ही ज़रूरी है कि जितना इवेंट क्रिएशन ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्रमोशन इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो प्रमोशन के लिए हमें हम क्या कर सकते हैं, D365 में हम रजिस्ट्रेशन, हम अपना कस्टमाइज रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेटअप कर सकते हैं, इनविटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, मार्केटिंग कोलैटरल क्रिएट कर सकते हैं, इवन हम कस्टमर जर्नीज भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोर मार्केटिंग। तो इसमें ऑटोमेटेड ईमेल्स हम भेज सकते हैं थ्रू द कस्टमर जर्नीज एंड मार्केटिंग बाय यूजिंग मार्केटिंग ईमेल्स। आफ्टर प्रमोशन क्या होगा? लॉन्च, इवेंट डे, फाइनल डे ऑफ द इवेंट। यहाँ क्या करना है? हमें प्री इवेंट रिमाइंडर्स भेजने हैं, अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करना है। एंड टुडे Kamar and Yasir are doing really great job over here कि सेशन से पहले स्पीकर से चेक करना, नोटिफाई करना, रिमाइंडर्स भेजना, लिंक्स देखना, एवरीथिंग दे आर डूइंग रियली गुड जॉब। तो ये सारी चीज़ें लॉन्च के दिन आती हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इवेंट। अब लॉन्च इवेंट हो गया है, अब किस चीज़ की बात है? नहीं, अब द लास्ट स्टेप इज योर थैंक यू ईमेल, सर्विस। अगर आपका इवेंट एक प्रमोशनल था तो हमें लीड्स को भी फॉलो अप करना होगा कि लेट्स से अगर हमने ये हमारा इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च के लिए था या कोई सर्विस लॉन्च के लिए था, तो वी वांट कि हमने इवेंट किया है, इससे हमारे पास एक लीड जनरेशन हो अपने आप, जिससे कि हम उनको दोबारा फॉलो अप कर सकें और एंड वी कैन नर्चर देम एंड मोटिवेट फॉर द सेल्स, राइट। और सर्विस, अगर ये कुछ प्रीवियस वैसे ही इवेंट्स था तो हम अपने existing customers को attract कर रहे हैं and उनसे survey, we can ask the survey, how was the event, how is our services and everything. So this is the post event things that it's really crucial for the successful of the event. Okay, I'll go to the next slide. This is promote and manage events. We want to go to the हाउ टू क्रिएट द इवेंट्स, बट यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहूँगी कि इवेंट मैनेजमेंट एक सेपरेट मॉड्यूल है, बट इट्स ऑल्सो विद इन द मार्केटिंग। बट द मार्केटिंग, जो हम मार्केटिंग कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं इवेंट्स में, वो कौन से इवेंट्स हैं जो कि हमें प्रमोट और मैनेज इवेंट में करने में हेल्प करते हैं? तो पहला है इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो अभी हमने देखा। सेकेंड है कस्टमर जर्नी, जिससे कि हम ऑटोमेटेड कैंपेन्स बना सकते हैं इवेंट को प्रमोट करने के लिए। देन थर्ड है हमारा पोस्ट इवेंट सर्वे, जो हमने लास्ट में देखा, जो कि भी जो कस्टमर वॉइस सर्वे इंटीग्रेशन के थ्रू हम विद इन मार्केटिंग ईमेल एक लिंक भेज सकते हैं, QR कोड्स भेज सकते हैं, एंड ये भी ऑटोमेटेड किया जा सकता है।
देन मार्केटिंग ईमेल भेजी जा सकती है। लास्ट इज द एनालिटिक्स कि हमारा इवेंट या हमारा ये जो कैंपेन था वो उसने कैसा परफॉर्म किया, या अगर हमने मल्टीपल इवेंट्स रन किए तो कौन सा इवेंट या कौन सा कैंपेन था जिसने अच्छा बेहतरीन किया, जिसने अभी कम परफॉर्म किया, सो दैट वी कैन डू द इम्प्रूवमेंट्स। सो एनालिटिक्स आर ऑल्सो क्रिटिकल। अभी मैं 2 सिनेरियोज लेकर चलूंगी डेमो से पहले। पहला सिनेरियो है कि एक यूनिवर्सिटी ने ऑन साइट इवेंट प्लान किया है फॉर द ओपन डे, एंड उनका गोल क्या है कि to reach out to the students for their brand, to spread the awareness about their brand, about the new courses they are bringing into the university. So that is one scenario जहाँ पे हम एक single open day on site plan कर रहे हैं। Second scenario could be जहाँ पे ये virtual event हो रहा है, it could be to reach out the students globally, और जहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रीम के लोग, स्टूडेंट्स, T365 इंतियाजिस्ट और प्रोफेशनल सबको डायरेक्ट कर सकते हैं, एंड इट्स अ वर्चुअल इवेंट। सो जहाँ पे हम हमारी ऑडियंस ग्लोबल है, इट्स नॉट एक सिटी या स्टेट और कंट्री में बाउंड है। एंड सो देयर आर 2 डिफरेंट सिनेरियोज दैट यू कैन थिंक ऑफ जहाँ पे हम अपने डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको डेमो में लेके जाना चाहूँगी। So this is our D365 marketing screen. यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं देखा है, अगर देखा है तो इट्स सेम लाइक अदर एप्स जहाँ पे हम सेल्स ऐप या कस्टमर सर्विस ऐप देखते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो हम स्विच कर सकते हैं D365 मार्केटिंग में। दिस इज द ऑरेंज सिंबल ऑफ द मार्केटिंग, एंड यहाँ हमने क्लिक किया तो वी कैन रीच ऑन द marketing module और marketing model driven app. अब marketing ऐप बहुत बड़ी है, इसमें हम हर सेक्शन में या हर कॉर्नर में नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आई विल डायरेक्टली टेक यू थ्रू द इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट में जाने के लिए पहला है, इवेंट मैनेजमेंट इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप। ओके, सो यहाँ हम चेंज एरिया में जाके इवेंट प्लानिंग में जा सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या यहाँ पे एक्सप्लोर अदर एरियाज में यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है इवेंट प्लानिंग एंड स्विच टू दिस एरिया। सो एक इजी के लिए जैसे ही हम वेलकम गेट स्टार्टेड स्क्रीन में आते हैं तो यहाँ भी हमें ऑप्शंस है कि हम स्विच टू दिस एरिया इवेंट प्लानिंग, आई कैन स्विच डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम इवेंट्स प्लानिंग में आए, या दिस इज लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी नेविगेशन है ऑल बिलोंग्स टू इवेंट्स। जैसे आपने देखा था बिजनेस प्रोसेस फ्लो, दिस इज अबाउट इवेंट्स मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की बात आती है, स्पीकर्स या चेक इन्स, फिर हमारी वेन्यू मैनेजमेंट की बात आती है, फिर हमारे लॉजिस्टिक्स की बात आती है, स्पॉन्सर्स की बात आती है, एंड पोस्ट इवेंट्स लीड जनरेशन। सो यहाँ पे भी टाइल्स या चीज़ें जो ऑर्गेनाइज की हुई हैं ऑल गोस टू इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस फ्लो जो अभी हमने डिस्कस किया था। मैंने डेमो के लिए कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुई हैं। पहले मैं बात करती हूँ हमारे वेबकास्ट की। सो इस वेबकास्ट में क्या है, ये लोड हो रहा है। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड ओपन किया, यू कैन सी दैट यहाँ पे एक बिजनेस प्रोसेस फ्लो है ऑन द टॉप इन ऑरेंज, जहाँ पे ये सारी स्टेजेस हैं जो अभी हमने स्लाइड डेक में डिस्कस की थी: प्रीलिमिनरीज, एजेंडा, ऑर्गेनाइज, प्रमोट, लॉन्च और पोस्ट इवेंट। अब यहाँ पे अगर मैं एक के बाद एक कवर करूँ तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एज ए यूज़र, एज ए बिजनेस यूज़र, मुझे बिजनेस यूज़र को ये गाइड करती हैं कि अपने एजेंडा में क्या करना है, ऑर्गेनाइज में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रमोट के टाइम पर आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगेन मैंने कहा था ये आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं। अगर कल को कोई कस्टमर आपको बोलता है मुझे प्रमोशन के लिए ये भी चाहिए, या मुझे कोलेटरल नहीं चाहिए, या मुझे मार्केटिंग प्लान नहीं चाहिए बट मुझे कोई और फील्ड चाहिए, तो ये इजीली कस्टमाइज किया जा सकता है। इजीली फील्ड कैन बी एडेड वाया डाटाबेस। देन हमारे पास लॉन्च एंड पोस्ट इवेंट। अभी हम बात करते हैं बेसिक ओवर हियर। यहाँ पे की इंफॉर्मेशन है हमारी फर्स्ट की, इवेंट नेम क्या है, इवेंट टाइप कौन सा है। अगेन ये फील्ड जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पस, ये रिपोर्टिंग के काम आता है, बट इसका मतलब इससे कोई भी फीचर इधर उधर नहीं होगा, इससे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये लॉक्ड इन फील्ड्स हैं जो कि हमें बताते रहेंगे, अपने आप क्रिएट होते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आएंगी वैसे नंबर इंक्रीज होता रहेगा, जैसे ही चेक इन होंगे नंबर अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। इट्स ऑटो कैलकुलेटेड फील्ड्स। बीच में हमारा आता है सेक्शन शेड्यूलिंग का।
जहाँ पे हमें टाइम जोन, स्टार्ट डेट, एंड डेट काउंट करना है। अच्छा, अगर अब ये चल रहा है तो रिकरिंग इवेंट है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकती हूँ दैट दिस इज अ रिकरिंग इवेंट। तो इसमें कैलेंडर में अपने आप ईच मंथ जो भी मैं डेट सेट करूँगी वो आती रहेगी। थर्ड सेक्शन है हमारा स्ट्रीम दिस इवेंट ऑनलाइन। अगर मैं इसे नो करती हूँ तो ये सारी ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगी। लेट मी गो एंड क्रिएट अ न्यू वंस, तो यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे ही मैं नए ऑप्शन पे गई, अब बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये। मैं यहाँ टेस्ट इवेंट डालती हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, डू यू वांट टू स्ट्रीम दिस इवेंट। अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला है एंड ये मुझे बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम इज अवेलेबल एज अ स्ट्रीमिंग चैनल। तो अगर मैं इसे यस करूँगी तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ऑप्शंस दिखेंगी। लेट्स गो देयर। अगर मैं इसे स्ट्रीम करती हूँ तो ऑप्शंस अपने आप विजिबल हो गई हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर नज़र आ रहा है, टीम्स प्रोवाइडर है, लाइव इवेंट्स है, टीम मीटिंग्स हैं, या अगर मैं किसी थर्ड पार्टी से मैंने कस्टमाइजेशन या इंटीग्रेशन की है। अगर मैं वेबिनार्स पे ही रहती हूँ, अच्छा, उसके बाद मुझे ऑप्शंस हैं चेंज मीटिंग ऑप्शंस। अब मीटिंग ऑप्शंस जैसे कि नॉर्मल मीटिंग ऑप्शंस, जैसे हु कैन बाईपास द लॉबी। लॉबी इसका मतलब है कि जो अटेंडीज हैं वो डायरेक्टली मीटिंग में एंटर कर सकते हैं, या वो लॉबी में वेट करेंगे जब तक कि ऑर्गेनाइजर उसे उन्हें अंदर नहीं लेते हैं। सेकंड है कि कॉलर्स बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अनाउंस, जब कॉलर कोई ज्वाइन करता है या लीव करता है देन हमें ये ऑप्शन अनाउंस करना है या नहीं करना है। ये बहुत ही छोटे छोटे रूल्स है जो हमें टीम्स में मिलते हैं, बट बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि हम D365 मार्केटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें यहीं से मैनेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्विचिंग बैक टू टीम्स मार्केटिंग। सो ये आई पर्सनली लाइक दिस वन, क्योंकि यहाँ मुझे सारी की सारी ऑप्शन सारी यहीं मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे स्विच करूँ नॉर्मल टीम मीटिंग्स की, तो हमें यही ऑप्शंस मिलती हैं जैसे कि हमने एक प्रीवियस एग्जांपल में मैंने सेट की थी कि bypass, always let callers bypass the lobby, announce when callers join and leave, select presenting for this meeting, allow mic for attendees। ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ भी मिलती हैं। जैसे अब मैंने बोला है भी अलाउ मीटिंग चैट, अलाउ रिएक्शंस, तो हम ये एक एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बोल दूंगी रिएक्शंस तो कोई भी रिएक्शंस नहीं दे सकता। अब मैं बोल दूंगी रिएक्शंस दे सकते हैं बट चैट इज डिसेबल, बट बिकॉज मुझे इस दिन ये मेरा इवेंट ऐसा है कि मैं चैट अलाउ नहीं कर सकती, आई विल मेक इट डिसेबल। और अगर मुझे रिकॉर्ड करनी है तब भी मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं ये रिकॉर्ड कर सकती हूँ या नहीं रिकॉर्ड कर सकती। दीज आर रियली गुड ऑप्शन। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि टीम्स URL इज लॉक्ड और टीम मीटिंग ऑनर इज लॉक्ड। ये फील्ड्स ऑटो पॉपुलेटेड हैं और इसके पीछे प्रोसेस है, ये कभी भी आप फिल नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ से URL अपने आप सिस्टम जनरेट करता है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बोल दिया एंड सेव दिस रिकॉर्ड, ये कपल ऑफ सेकेंड्स लेगा सेव होने के लिए, और आई कैन गो टू द डुप्लीकेट स्क्रीन। जो मैंने पहले एग्जांपल कॉन्फ़िगर करी थी वो दिखा सकती हूँ मैं। वेबकास्ट, तो लेट्स से जैसे ही हमने किया, मैंने लाइव किया, यहाँ पे टीम URL, यू कैन सी दैट द टीम URL ऑटो पॉपुलेट हो गया। जब तक आप इसे स्टेटस इसका लाइव नहीं होगा तब तक ये URL आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इट मीन्स अभी हमने लॉन्च नहीं किया है और ये लाइव नहीं है। और जिस टीम ऑनर भी टीम मीटिंग ऑनर अपने आप आ जाएगा जो ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। मैं सिस्टम एडमिन हूँ इस सिस्टम की, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिस्टम एडमिन, और यहाँ पे सिस्टम एडमिन आ गया है। ये तो था अभी हमने टीम सेटिंग्स किया। अब इसका पर्पस यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसका पर्पस है कि आपको ये टीम इवेंट बना लिया है, नाउ वी नीड टू सिंक दिस इवेंट इनटू द एक्चुअल टीम्स। तो कैसे होगा, उसके लिए एक छोटा सा बटन दिया है सिंक विद टीम्स। जैसे ही आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, यहाँ पे हम सिंक विद टीम्स कर सकते हैं। मैं देखती हूँ ये रिकॉर्ड आ गया है, टेस्ट इवेंट, यस। सो टेस्ट इवेंट आ गया है। अब मैंने यहाँ पे किया सिंक विद टीम्स, सो ये टीम से सिंक हो गया है। और मैंने टाइम देखा नहीं, मैंने जस्ट यहीं 8:04 से 10:04 दे दिया है। जब मैं टीम्स में जाऊंगी मुझे ये मिलेगा। सॉरी, एक चीज़ आई थिंक आई वाज मिसकम्युनिकेटेड। ये लिंक जैसे ही क्रिएट होगा यहाँ लिंक आ जाएगा, लाइव होने पर इवेंट URL क्रिएट होता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बट आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड।
टीम यूआरएल यहाँ टीम क्रिएट करने पर आ जाता है, एंड इवेंट यूआरएल जब तक हम लाइव नहीं जाएंगे तब तक नहीं आएगा। अब इवेंट यूआरएल क्या है? इवेंट यूआरएल वो यूआरएल है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होगा अटेंडीज के लिए फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द इवेंट। अब जो कि मेरा लाइव इवेंट है वहां पे आप देख सकते हैं कि ये यूआरएल इज अवेलेबल। अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे इवेंट वेबसाइट या इवेंट पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इवेंट सेट किया हुआ है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसलिए ब्लैंक आ रही है। अदरवाइज मैं सेशन की इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो सेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। यहाँ पे टाइम आ गया है, अभी कब शुरू है, एंड आई कैन रजिस्टर। जैसे ही मैं रजिस्टर पे जाती हूँ मुझे एक पेज मिलता है और मैंने ये अपनी इमेज लगा दी है जो कि आज के लिए यूज़ है, और उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए फील्ड्स दिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती हूँ, प्रिया कर्क, ओके। और बाकी ऑप्शनल फील्ड हैं, बट इफ आई वांट आई कैन फिल इट। oops no 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 and country is Australia, सबमिट। और मुझे जैसे ही सबमिट करूँगी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द इवेंट। अभी आपने सोचा होगा हमने तो जस्ट इवेंट ही क्रिएट किया था, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? लेट्स गो बैक टू द इवेंट एंड सी उसके अलावा मैंने क्या किया था। यहाँ मेरा है एजेंडा, यहाँ पे मैंने एजेंडा सेलेक्ट किया हुआ है, बट बिकॉज ये एक ही दिन का मैंने इवेंट सेट किया है, यहाँ पे कोई एजेंडा या मैंने सेशंस नहीं किया तो हमें वेबसाइट पे एजेंडा या इवेंट सेशन नहीं मिले, इट्स अ ब्लैंक। बट मैंने यहाँ पे वेबसाइट एंड फॉर्म टैब में यहाँ मैंने किया था इट्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मेरे पास ऑप्शन है यूज मार्केटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, मैंने यहाँ पे टॉगल किया यस, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिली मार्केटिंग फॉर्म की। तो यहाँ पे आइदर मैं एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकती हूँ या जो पहले से इवेंट्स फॉर्म क्रिएटेड हैं उन्हें यूज कर सकती हूँ। तो आइए देखिए ये फॉर्म है क्या। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये मेरा है इवेंट रजिस्ट्रेशन मार्केटिंग फॉर्म। अभी ये देखिए ये भी लाइव स्टेटस में है, मैं इसमें कोई एडिट नहीं कर सकती बिकॉज इट्स अ रीड ओनली थिंग। बट इस मार्केटिंग की ये बात क्या है, इवन ये लाइव है मींस मैं इसको डाउन नहीं कर सकती बिकॉज ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट वेबसाइट पे लाइव है, और मैं नहीं चाहती कि जब मैं डाउन करूँ इसमें चेंजेस करूँ तो किसी को इंटरप्शन हो। तो यहाँ पे मुझे एक एडिट की ऑप्शन आती है, द रिकॉर्ड इज लाइव, आर यू श्योर यू वांट टू एडिट इट। यहाँ पे स्टिल एक मुझे वार्निंग दी जाती है कि ये रिकॉर्ड लाइव है वेबसाइट पे, डू यू स्टिल वांट टू एडिट इट। आई सेड ओके बिकॉज इट्स अ माइनर चेंज, व्हाट आई विल डू इज मैं क्या करना चाहूँगी, यहाँ से मैं कंट्री, और मुझे कंट्री नहीं चाहिए, मुझे जिप कोड नहीं चाहिए, मुझे सिटी नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट दीज 4 फील्ड्स। तो जैसे ही मैं सबमिट करती हूँ सेव, तो यहाँ पे लाइव एडिटेबल की जगह चेकिंग फॉर एरर्स, पब्लिशिंग, और ये क्या होता है, पब्लिश हो जाएगा ये फॉर्म, एंड इट्स स्टेटस आप डबल चेक कर सकते हैं, हाँ स्टिल लाइव है। एंड नाउ मेरे फॉर्म में ये सिर्फ 4 फील्ड्स है। गो बैक टू दैट, सेव एंड क्लोज। मैं वापस अपनी इवेंट मैनेजमेंट पे आ जाऊंगी, यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म सेलेक्ट किया है। अगर मैं इवेंट पोर्टल या इवेंट वेबसाइट ये यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी एक कस्टम, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अलग वेबसाइट है, वहाँ अगर मुझे ये चीज़ वहाँ होस्ट करनी है तो मैं ये क्या करूँगी, मैं अपनी ये स्क्रिप्ट डेवलपर को दूंगी और वेबसाइट पे होस्ट एम्बेड करने के लिए जहाँ की ये इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विजिबल होगा। सो मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट पे या अपनी कस्टमर्स की वेबसाइट पे भी ये इवेंट होस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इवेंट यूआरएल आ रहा है, और दिस इज द रीडेबल इवेंट आईडी। अगर आप इसे चेंज कर सकते हैं कभी भी, आपको जो भी रीडेबल इवेंट आईडी देनी है, अगर कुछ नंबर्स नहीं देने हैं, कुछ मीनिंगफुल नेम देना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड इवेंट इमेज या हीरो इमेज। हीरो इमेज क्या होती है, इफ आई गो टू द होम एंड क्लिक ऑन एनी इवेंट, सो ये जो आप ब्यूटीफुल स्काई लाइन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इवेंट इमेज या हीरो इमेज, जो कि हमें यहाँ से चेंज करनी है। इफ़ आई वांट टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम हियर, मैं यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ और यहाँ पे इमेज चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन की एंड डेट करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ नंबर ऑफ अटेंडीज ही चाहिए, या मुझे इस दिन से पहले अपना रजिस्ट्रेशन बंद करना है, तो मैं यहाँ पे एंड डेट प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्लोज कर सकती हूँ, और
रजिस्ट्रेशन क्लोज मैसेज, मैं अपना कस्टम मैसेज भी प्रोवाइड कर सकती हूँ कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है, विल सी यू इन द नेक्स्ट इवेंट। सो ये तो था सारी इंफॉर्मेशन जो आउटसाइड पब्लिकली अवेलेबल है अटेंडीज के लिए। सो ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किसी भी इवेंट को मैनेज करने के लिए हमें इन हाउस चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हम इस इवेंट के थ्रू हम क्या आउटकम अचीव करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, एंड सम डिस्क्रिप्शन अबाउट इवेंट्स। ये सारा इंफॉर्मेशन इज फॉर इंटरनल टीम। फाइनेंशियल, इट्स जस्ट फॉर रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग पर्पसेस कि हमें इंफॉर्मेशन कुछ करनी है, भी हमारी कॉस्ट कितनी लगी, कितना रेवेन्यू हुआ, ये सब स्टैटिक फील्ड्स हैं, हम सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सो दैट वी जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो हम देख सकें कि हमने किस इवेंट पे कितना स्पेंड किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितनी मिसलेनियस कॉस्ट थी, या कितने एक्सटर्नल मेंबर्स को हमने कॉस्ट दी है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल इवेंट्स। इवेंट टीम मेंबर्स, इवेंट टीम मेंबर्स क्या आते हैं, इट्स अ रियली गुड थिंग। जैसे कि आपने देखा, इवेंट को प्लान करना, मैनेज करना, लॉन्च करना, होस्ट करना, इट्स नॉट अ वन मैन थिंग, it requires a great team, awesome wonderful team। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे है इवेंट टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे हम टीम मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी, वो बोलेंगे आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड यूज़ करना चाहते हो, अभी उनके पास कोई भी टीम मेंबर नहीं है, आई कैन क्रिएट न्यू टीम मेंबर। अब गुड थिंग अबाउट दैट इज द टीम मेंबर इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। अब इंटरनल एक्सटर्नल की एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे इंटरनल टीम मेंबर हैं तो हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स होंगे, ऑर्गेनाइजर कमेटी होगी, होस्ट होंगे, या मार्केटर्स होंगे जो प्रमोशन में हेल्प करेंगे। ऑल दीज आर द इंटरनल टीम मेंबर्स। एक्सटर्नल टीम मेंबर्स कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल, अगर हम केटरिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लॉजिस्टिक्स में हम किसी एक्सटर्नल वेन्यू हायर कर रहे हैं, या हमें एक होटल रिजर्वेशन चाहिए क्योंकि हमारे जो स्पीकर्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं, सो ऑल दीज पीपल आर सिटिंग अंडर एक्सटर्नल इवेंट टीम मेंबर्स। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंटरनल है तो हम उन्हें एज ए यूज़र क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमारे उनके क्रेडेंशियल्स जो है हमारी एडी में ऑलरेडी हैं। अगर वो एक्सटर्नल हैं तो इट मीन्स उन्हें हम एज ए कॉन्टैक्ट इन द सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई कैन डिफाइन दैट दे आर कॉन्टैक्ट, और मेंबर टाइप में डिफाइन कर सकती हूँ, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। अगर वो एक्सटर्नल है, उनकी कंपनी क्या है, ईमेल क्या है, फोन, एवरीथिंग इज देयर। और द लास्ट थिंग हियर, उनका पर्पस क्या है। अगर हम ये सारी चीज़ यहाँ डिफाइन करके रखेंगे, अगर कल को मुझे देखना है कि केटरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो मैं फटाफट सिस्टम में आ सकती हूँ, देख सकती हूँ केटरिंग के लिए दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन गो दैट, आई कैन चेक द ईमेल, आई कैन चेक द फोन नंबर एंड इजिली कॉन्टैक्ट द केटरिंग मैनेजर। तो ये था हमारा टीम मेंबर्स। मैं बैक जाती हूँ, यहाँ अभी हम रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं करेंगे। एंड बस कैलेंडर कॉन्टैक्ट आपको आउटलुक में कैसा दिखेगा, हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं हमें कैसा इवेंट का दिखाना है। तो ये थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है फॉर द गुड लुकिंग। हम अपनी ईमेल्स में या कैलेंडर में अपना इवेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। रूम रिजर्वेशंस, ये ऑन साइट इवेंट की एग्जांपल में जाकर देखते हैं। I'll go to the second example जो हमारी ऑन साइट इवेंट्स है, जहाँ पे मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी why we need room reservations, why we need other things. तो I'll go to this one. This is my, अभी आपने देखा कि मैंने इजीली स्विच कर लिया। यहाँ एक स्मॉल लिस्ट बॉक्स है जहाँ पे मैं स्विच करती हूँ तो ये एक्टिव इवेंट्स की लिस्ट यहाँ ओपन हो जाती है। आई कैन स्विच फ्रॉम हेयर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच किया, मुझे बड़ी स्क्रीन वापस चाहिए, आई कैन क्लोज दिस वन एंड यहाँ पे मैं ऑन साइट इवेंट पे आ गई। यहाँ पे अब नोटिस कीजिए, मैंने स्ट्रीम दिस ऑनलाइन इवेंट को मैंने नो किया है एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे कि लोकेशन। पहले ये ऑप्शन पहले वाले इवेंट में नहीं थी क्योंकि वो इवेंट हमारा ऑन साइट वर्चुअल इवेंट था। यहाँ हमारा ऑन साइट इवेंट है तो मेरे पास ऑप्शंस है कौन सी बिल्डिंग में हो रहा है, कौन से रूम में हो रहा है। बट अभी यहाँ पे मैंने रूम सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि इस बिल्डिंग में मल्टीपल रूम्स हैं और जो सेशंस हैं वो मल्टीपल रूम्स में होंगे, मल्टीपल सेशंस मल्टीपल रूम्स में होंगे। तो आई कैन डिफाइन दैट रूम जब मैं सेशन डिफाइन करूँगी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके पहले मैं वेट लिस्ट की बात कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो मेरी इवेंट की कैपेसिटी है 150 है और वेट लिस्ट मैंने ऑन कर दी है। और जब नंबर ऑफ इन्विटेशन पर स्लॉट चाहेंगे दैट इज 10।
तो यहाँ पे जैसे ही वेट लिस्ट अवेलेबल होगी, ऑटोमेटिकली मैंने सेलेक्ट किया है कि रजिस्टर कॉन्टैक्ट्स जो हैं या जो लीड्स हैं या जो अटेंडीज हैं ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे। इसमें मैंने एजेंडा सेट किया है इस एग्जांपल में। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे कैलेंडर में ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे 3 सेशंस हैं, की नोट सेशन, सेशन 1, सेशन 2। और ये कहाँ से किया है, दिस इज द सब ग्रिड ओवर हियर सेशंस। तो जैसे कि अगर मुझे सेशन 3 चाहिए तो मैं यहाँ जाऊंगी, सेशन 3 and it is about D365 field service। और ये होगा, टाइम सेट कर दिया है मैंने 1 o'clock, 1 PM to 3 PM। और ये ऑन साइट इवेंट है, सो आई डोंट वांट टू स्ट्रीम, सो आई कैन प्रोवाइड द बिल्डिंग कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पे मैं अपना रूम डिफाइन कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मैंने किया हुआ है नॉर्थ कॉन्फ्रेंस रूम। अगर मेरे पास लेआउट है तो मैं लेआउट भी डिफाइन कर सकती हूँ। अगर कुछ रूम्स होते हैं जो डिसेबिलिटी एक्सेस के लिए अवेलेबल होते हैं तो मैं वो भी डिफाइन कर सकती हूँ व्हेन आई आफ्टर आई क्रिएट द रिकॉर्ड। सो फॉर नाउ आई जस्ट सेव एंड क्लोज। यहाँ पे मेरा सेशन एक और क्रिएट हो गया है। एंड जैसे कि आप देखेंगे ये मेरे कैलेंडर में भी ब्लॉक दिखा रहा है कि पहले 3 सेशन से यहाँ कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस में कैन अज्यूम लंच ब्रेक, बट यहाँ पे अब ये 2 आवर्स का फील्ड सर्विस सेशंस है। अभी सेशंस डिफाइन हो गए हैं, सेशन ट्रैक्स हमें करने हैं तो हम कर सकते हैं, बट अभी हम सीधा मैं जंप करूँगी स्पीकर्स पर। स्पीकर्स अभी मैंने 2 ही डिफाइन किए हैं। अगर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ हु इज़ द नेक्स्ट स्पीकर, ऑनर स्टिल आई एम, तो मैंने अभी किया प्रिया। और यहाँ पे स्पीकर अभी लिस्ट में नहीं आ रहा, आई कैन सी ऑल रिकॉर्ड्स नहीं है, मतलब ये कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम में। तो मैं क्विकली फटाफट से एक्सटर्नल स्पीकर है प्रिया एंड oops, or I can quickly create the contact also there. Just for the time save, I'll just do Brian Ray instead of Priya. So I'll just create Brian, Brian, AIN. और यहाँ मैं प्रोवाइड करती हूँ Brian at gmail.com। अगर मुझे कुछ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है दैट इज एक्सटर्नल स्पीकर तो मुझे कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। अगर इट्स अ फ्री और कॉस्ट तो जस्ट डिफाइन 500 7 क्लास। और यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देती हूँ एज ब्रायन एंड कॉस्ट अपने आप यहाँ आ गई है। और सेशन बता दूंगी, सेशन मेरा है अवेलेबल फील्ड सर्विस एंड 7 क्लास। सो मैं अब देखिए मैं सेम ही रिकॉर्ड पर हूँ, मैंने कहीं मूव नहीं किया, बट जस्ट गो वेंट टू क्विक क्रिएट ऑफ स्पीकर एंगेजमेंट। वहीं से मैंने पहले स्पीकर रिकॉर्ड क्रिएट किया, बट स्पीकर ऑलरेडी में कॉन्टैक्ट नहीं था तो मैंने एक नया कॉन्टैक्ट चूज किया, स्पीकर रिकॉर्ड क्रिएट किया, देन मैंने न्यू स्पीकर एंगेजमेंट क्रिएट की। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स यूज हुए। तो वी कैन सी दैट स्पीकर है, टाइप ऑफ स्पीकर है, स्पीकर कॉस्ट आ रही है। स्पॉन्सर, अगर मैं यहाँ पे स्पॉन्सर डालना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं स्पॉन्सर डाल सकती हूँ। स्पॉन्सर, इवेंट स्पॉन्सर, इफ आई हैव वन न्यू अकाउंट सो फॉर मी, मेरे इवेंट को एडवेंचर वर्क स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सर टॉपिक क्या है, कैटेगरी है गोल्ड, टॉपिक स्पॉन्सर टाइप मॉनेटरी और सर्विसेज एंड अगर मुझे अमाउंट डालने डाल सकती हूँ, अदरवाइज 7 क्लोज। ये मेरा एजेंडा रेडी है एंड जहाँ पे मैंने स्पीकर एंड सेशंस एंड स्पॉन्सर्स एवरीथिंग मैंने डाल दिया है। वेबसाइट एंड फॉर्म्स इज ऑलवेज अगेन रेडी, D365 बूट कैंप एंड एवरीथिंग। और रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही लोग यहाँ रजिस्टर करेंगे मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, रूम रिजर्वेशंस फॉर दिस इवेंट, क्योंकि मैंने वहाँ पे जब मैंने सेशंस क्रिएट किए थे वहाँ पे मैंने रूम सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कॉन्फ्रेंस रूम 4 सेशंस के लिए ऑलरेडी बुक्ड है। तो हम यहाँ पे डबल चेक कर सकते हैं कि कोई रूम डबल बुक तो नहीं हुआ है, या कोई सेशन जो है यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब उसके लिए कोई रूम बुक नहीं है। ओके, तो लेट्स गो टू द इवेंट URL। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इवेंट URL पे क्लिक किया
मुझे इवेंट दिख रहा है रजिस्टर नाउ। आपने पहले नोटिस किया होगा कि पहले सेशंस और स्पीकर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि वहाँ मैंने उस इवेंट में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, बट दिस टाइम वी हैव सेशंस। तो यहाँ पे दोनों सेशंस आ रहे हैं, ब्रॉट टू यू बाय एडवेंचर लोगो। सो दिस इज द एडवेंचर वर्क्स जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेट आ रही है, कब तक है ये इवेंट्स, फिर उसके बाद स्पीकर्स है, स्पीकर्स की लिस्ट भी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ब्रांड की इमेज नहीं दी थी, बट यहाँ पे 2 स्पीकर्स हैं, वी कैन सी दोज स्पीकर्स देयर। अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है कि वो का क्या सेशंस ले रहे हैं, तो आई कैन ऐड ऑल्सो आई जस्ट ओनली कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए मुझे कोई वेबसाइट कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन नाउ पे जाती हूँ, तो जैसे मैंने पहले फॉर्म चेंज किया था, मैंने दोनों ही इवेंट्स के लिए सेम फॉर्म यूज़ किया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फ़ोन, और मैं सबमिट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे था हमारा ऑन साइट इवेंट। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमने टच भी नहीं की हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, वेंडर्स, होटल्स, होटल रूम एलोकेशन, बट आई वुड से दीज आर रियली सिंपल एंड ईजी। एज जैसे कि हमने बिल्डिंग और रूम्स के रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, या हमने स्पीकर्स और सेशंस के रिकॉर्ड्स क्रिएट, या स्पॉन्सरशिप के, सेम वैसे ही हम लॉजिस्टिक्स के भी क्रिएट कर सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि अगर मुझे इस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करना हुआ, जैसे कि मेरे को केटरिंग की ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? तो मैं यहाँ जाऊँगी वेबसाइट एंड फॉर्म पे, सॉरी ये टेस्ट इवेंट था, सो सॉरी। यहाँ वेबसाइट इवेंट पे जाएंगे, मैं वापस अपने डिज़ाइनर फॉर्म में आ गई हूँ, मैं एडिट करूँगी। अब मुझे क्या करना है, एक नया फील्ड ऐड करना है, और मुझे केटरिंग का फॉर्म ऐड करना है। तो यहाँ टूल बॉक्स में यहाँ पे मुझे नीचे फील्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ बहुत सारे फील्ड्स हैं, बट आई कांट फाइंड एनी meal option or diet plan, or what do you call anything that your options. So let's say meal preference or something, there's a no record found, but मुझे ऑप्शन मिल रही है create a new marketing form field। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मुझे यहीं पे फॉर्म ओपन हो जाता है। जनरल इंफॉर्मेशन इज सॉरी आई वेंट रॉन्ग, नॉट मार्केटिंग फील्ड, कस्टम फील्ड्स। सो यहाँ पे कस्टम रजिस्ट्रेशन फील्ड है, तो हमें रजिस्ट्रेशन फील्ड क्रिएट करना है। एंड आई सेड मील, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग फॉर्म फील्ड्स एंड कस्टम रजिस्ट्रेशन फील्ड। मार्केटिंग फॉर्म फील्ड्स के लिए वो फील्ड डेटावर्स में होना चाहिए, कस्टम रजिस्ट्रेशन फील्ड्स के लिए वी कैन क्रिएट फील्ड ऑन द फ्लाई। सो यहाँ पे नहीं है, तो आपको कस्टम रजिस्ट्रेशन फील्ड, फील्ड का क्या है, मील ऑप्शंस, एंड मैं बोलूँगी यस इट इज़ रिक्वायर्ड। टाइप क्या है, इसमें मुझे मल्टीपल चॉइस चाहिए, यहाँ पे चॉइस की ऑप्शन आती हैं, तो वीगन, वेजिटेरियन, और what are the other option, halal और नॉन वेजिटेरियन। जैसे मैंने ये ऑप्शंस डाली यहाँ पे, सेव एंड क्लोज, अब मैं ये फील्ड यहाँ से लेके ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड आई कैन जस्ट पुट द फील्ड एनीवेयर। सो हियर वी गो, एंड आई विल से सेव, publish, and when I refresh this screen, it should be available here. Here we go. तो अब यहाँ पे मैं easily कुछ भी अपना मार्केटिंग फॉर्म या इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कस्टमाइज कर सकती हूँ। Going back to this, I think मैंने अपना मार्केटिंग मॉड्यूल सॉरी इवेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अगर हमें कुछ इवेंट मैनेजमेंट के लिए कुछ सेटिंग्स पे जाना हो, तो लास्ट थिंग इज ये हमारी इवेंट मैनेजमेंट सेटिंग्स हैं। Event management, you can go to the settings from the change area, like we went to event planning, go to settings, और उसके बाद हमारी इवेंट मैनेजमेंट है, जहाँ पे हम हमें इवेंट मैनेजमेंट की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। और अगर हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनेबल नहीं है, तो हम फीचर स्विचेस पे जाएंगे और यहाँ से इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनेबल कर देंगे। दिस इज द इवेंट मैनेजमेंट, और इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ऑन, इससे कि हम इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये था इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। Go back to my slides, जो कि हमने सेटिंग्स के बारे में बात की, वेब एप्लीकेशंस, वेबिनार प्रोवाइडर्स, वेब कॉन्फ़िगरेशंस,
टेबल कन्फिग, ये सारी सेटिंग्स हमें सेटिंग्स एरिया में मिलेंगी। ये कुछ रेफरेंसेस लिंक्स हैं, जैसे ट्रायल क्रिएट करना हो तो हम कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रायल के लिए हमें पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट अपने आप प्रोवाइड करता है। बट अगर हम माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 मार्केटिंग बाय कर रहे हैं कस्टमर के लिए, देन वी नीड टू डिप्लॉय पोर्टल ऑल्सो। ये कुछ MS लर्न के लिंक्स हैं, सर्टिफिकेशन के लिंक्स हैं, एंड ऑल्सो फॉर प्राइसिंग एंड लाइसेंस। Again, thank you for joining my session today. Open for question and answer. Thank you so much, Priya. I see a lot of interest in your session और जैसे आपने जो है present किया बहुत जबरदस्त। I think हम बिल्कुल डॉट हैं क्लॉक के ऊपर, so maybe हम कोई questions नहीं ले पाएंगे अभी। But yeah, I'll suggest कि अगर किसी ने कोई भी question है तो आपको वो directly reach out करें on LinkedIn। और once again बहुत बहुत शुक्रिया इस इवेंट में आने के लिए, और I hope कि आपको जल्दी दोबारा देखें हम अपने प्लेटफॉर्म पे। Sure. Thank you so much, Kamal. Thank you. Thank you, Priya. All right, so the next session is somewhat similar on the same topic, but that session will be presented in English. So I have a very able speaker from Melbourne, Australia, with me, Simil. Hi, Simil, how's it going? Hi, Kamar, doing great. Thank you. How are you? I'm good. Thank you. So yeah, thank you so much for your time for Pakistan User Group and this Urdu Hindi event and speaking to Urdu Hindi community. I hope it will be a very good learning session for all of us. So stage is all yours. Perfect. Thank you, Kamar. Shall I go ahead and share my screen? Please. Could you let me know when you are able to see it? Perfect. I am able to see the screen and I have now brought it up on the main video. Best of luck. Thank you. Perfect. Thanks. Hi, everyone. My name is Jamal Tebrizci. I am based in Melbourne. I am a senior solution architect working in Microsoft Fast Track team. A bit of a brief background for me. I am coming from a cross-functional background. I started my career in an international bank in the marketing team, and I've also got educational experience, education around marketing as well. So based on my professional experience and my educational background, when I talked to my good friend Faisal, I thought presenting around what's coming next with Dynamics 365 marketing would be a good idea. So here I'd like to present the recent changes in the global trends, which creates a shift in how marketing teams work, and how, as Microsoft, we are meeting this demand with Dynamics 365 marketing and our new features. As our agenda today, we will first talk about the business drivers which impact the role of a marketer today, and we'll continue to do so in the near and in the maybe next few years as well. Then we will move on with key features we released last year, and particularly in relation to our first agenda item, we will talk about how real-time event-based journeys actually support these global trends. I will also walk you through the interface as well, how real-time journey canvas is built and how it can be operated. Lastly, as I am part of the Fast Track team, we are involved in hundreds of enterprise-level implementations every year. So I'd like to share a few important caveats while deploying Dynamics 365 marketing. Before I start, I'd like to get your support here. I'm a fan of interactive presentations, so I will be using an application to gather your opinion on over certain items, and of course, it will be more fun for all of us. So I'd like to ask everyone to scan the QR code, please, and enter the pin on the screen. This will log you into a kind of a game, and we will have one question in each turn. I will share the outcomes with you in real time in this presentation. Please feel free, there is no right or wrong answers, and it is anonymized anyway, so feel free to respond based on your thoughts and experience. I will switch back to my polling game in 10 seconds. Please scan the QR code and enter the pin on the screen. We've got 2,
Only 2? Yes, we've got Swift Bunny as well. Awesome, more coming. Just give a couple more seconds. All right. So this is a warm-up question. I just want to understand if you have any experience around dynamics marketing. Could be for a project, could be just for demo or self-learning purposes. Awesome. Most of the participants have at least some experience around deploying it, which is really good. And we've got one person who haven't, and for this person, nowhere at all. So this is not a technical deep dive session anyways, and I will walk you through all the basic concepts. So this is all good. Okay. So moving on. Like I said, there's a global shift in how a marketer is working from day to day. And I'd like to explain what are the key drivers in it. As solution architects or functional or technical consultants, we always look at the applications. Now, I'd like to share the perspective of a marketer and how they are working and how this function is kind of being changed. As a starting point, first, I'd like to talk about the recovery in the new normal. Right now, we are in this COVID situation for maybe around 1.5 years now. When we look at the business trends and consumption trends, we can say that the world will turn back to normalcy at some point, but it won't be the same when you compare it with before COVID. It will be the new normal. So we will talk about these changes a bit. Secondly, even without a global pandemic, in the standard marketer's role, it was being redefined in almost all industries. So we will talk about these drivers as well. And lastly, I want to talk about the impacts of these changes and how they are pushing marketers to be acting in a more agile way. First of all, with the COVID situation and how our lives are being completely redefined, I guess everyone is noticing it, but it's very important to reiterate. Our experiences are being digitalized. So when you look at your consumption trends or behavior, you are probably consuming more in online and consuming less in offline. So this is a huge trend. Online consumption in the rise and offline consumption is obviously decreasing. And this is not just because of lockdowns. This will be an ongoing trend. And even with the experiences that are face-to-face, they will become digitized in some manner. Contactless is kind of a big driver there. Based on this COVID situation, even the face-to-face interactions are becoming contactless. And contactless means that process needs to be digitized in some form. The second thing is for a marketer, as the online world or the digital world is growing, being relevant is very, very important. Because if you cannot be relevant, then you cannot raise awareness. If you cannot raise awareness, then you won't get traffic. So this is quite key. And then once you do everything right, so you've got digitalized processes and experiences, you are able to be kind of relevant and you are raising awareness. Still, tailoring the online experience is crucial to a successful of an organization. And I'd like to pause here and let you all think about the word tailored. When you think of it, if you're getting a tailored suit as an example, you go to a tailor, he or she gets your measurements and listens to you, gets your requirements, and then creates a suit that is completely customized to your measurements and requirements. But for a tailor, it's easy because
they will have a handful of customers at any point in time. Now let's take this concept to a marketer's world. You are a marketer and working for a retail organization. Now you have millions of customers and you need to tailor experience. Every one of these million customers have a unique scenario. How are you going to do that? So this is one of the challenges that marketers face every day. And lastly, it's about loyalty and churn. As the world is becoming more digital, loyalty is becoming more important because churning is getting more and more easy for a customer. I can easily switch. It will be at a single click. So these concepts are kind of important, and maybe they were already important before COVID as well. But after the COVID situation and in the new normal, they will be key drivers. Now I've got a second question. If you can please log into the game again. If you were already in the session, then I guess you don't need to log in. But if you weren't, I would encourage to scan the QR code and get back in the game. Just giving a couple of seconds here. Now our next question is about the function of a marketing department. What do they do? Perfect. So most people are saying that it's building a brand image, and also there are responses around creating content, running ads and campaigns, monitoring and managing social media, which is all true, by the way. They are all very important functions of a marketing department. Now I asked this question for a purpose, obviously. While these are all true, there is another trend, which is kind of an emerging area, and that is architecting and designing customer experiences. When you think about it, maybe 5 to 10 years ago, the thought of a marketer owning an end-to-end customer experience, or let alone designing, even understanding what an end-to-end experience was, it was really immature. However, in today's world, marketers are expected to design these experiences and have these kind of cross-functional skills to be able to do so. And that brings me to my last point around key global drivers, which is agile marketing. Yes, agile here as well. I guess we are all familiar with the term and what agile is and what its main purpose. So in the marketing context, it is no different. It aims to deliver a marketing functions in a manner which keeps up with the dynamic pace of the market. Now, before explaining this further, I'd like to share a real life story from my early career days. So I was working in an international bank in the marketing department, and we've got a very good team. Everyone was so creative and inspiring. We always had great ideas. And when we had this great idea, then we had to go through a process. And it started with writing a brief for a creative agency. So we said that, okay, we have this idea, we want that type of a communication and these kinds of ads, and here is our brief. And then they will send us some images and banners and ads, some visuals of the marketing campaign. And obviously, we would iterate on it, saying that change this, change that, change the color. Once this is done, we would reach out to the analytics team and get a customer list, and then obviously clean it up. Then the third step is go through the senior management approval, saying that we are spending that much budget, we are aiming to get this as an outcome, these are our visuals, and we would go through this process. And as a last step, we would say, okay, legal department, this is our campaign, this is the ads that we'd like to run, and here it is. And legal department would come and say, okay, but you need to change that sentence, you can't say this, you can't say that. Okay, now we are back to square one. We have to go to the creative agency again, say that, we have to make these changes. Once this is done, now our list is outdated. We are working for a bank. Maybe some of the customers already defaulted. We can't send them a campaign. Now,
try to clean up the list again, get another customer list, and then go through the approvals again, and then check with the legal again, and then run the ad. And it took, in an optimistic scenario, around 8 weeks. So this is kind of not acceptable in this world. This is why agile marketing is a thing, and it will be a growing thing in the marketing context. First of all, agile marketing teams are highly skilled cross-functional teams, which can take the process and reduce this 8 weeks process to a couple of days. Typically, it would contain these skills in an extended team as well. As everyone is in the same team here, they can focus on the one important thing and collaborate much faster. Building teams like that is not easy. There are many considerations: technology, team formation, talent acquisition, regulations, organizational structure, so many. And obviously, dynamics marketing alone cannot solve all of these. But there is one area which it actually exceeds all the expectations and even the market norms. This is creating a single journey map, which makes everyone in the team speak the same language, look at the entire process over the same canvas. Now I'm moving on to the application area. First, this is a summary of a list that what we released this year in the first half and in the second half. What we brought is, first of all, new channels. Now we've got native text functionality. You can send SMS messages. The second thing is push notifications. So having an app is a common thing right now. If as an organization I have my own app, then I can use my customer journey to send push notifications for my app to my customers. The second thing is hyper personalization. It's a very big concept in the marketing world. Hyper personalization means being able to tailor journeys based on customers' unique scenario. If you remember that it was one of the main drivers of a marketer. So with the new features, we are actually enabling it. We are able to build logic into journeys to match customers' unique needs. The third one is AI-supported design and orchestration. So we've got AI capabilities to let marketers design the content in such a faster manner and in a better manner. And also in the orchestration space as well, AI is able to tell, send this person a push notification instead of an SMS, and also change your communication. So these types of optimization in terms of what time to send it, which channel to send it, what message to send, could be optimized by AI. The fourth one is we are able to augment customer journeys with Power Automate. This is a big thing. Now, based on this, you can trigger journeys based on Power Automate flows, and also you can run Power Automate flows as part of your journeys. And lastly, we have improved analytics and insights around the customer journey canvas. And also, we got one more thing as well. And this one more thing is seeming like a new feature, but it is more than a feature. It's a whole new way of doing things. And actually, this is the gist of my presentation here. But before going ahead with that, I have my last question here. If you could please log into the polling application. We will have one last question, and then we will move on. Just giving a couple of seconds for people who'd like to scan the QR code. Are you ready? Based on these features, I'd like to understand which one do you think will make the biggest impact? Yep, it's mostly AI-supported design and orchestration. Yep, which is very important, and we've got votes for hyper-personalization as well. Yeah, Power Automate and new channels didn't get any votes, but still they are quite important new features that we are bringing. Now let's move on with the next thing. This is real-time event-based
customer journey orchestration. Event-based customer journey is actually enable marketers to trigger events which are not existing in Dynamics 365 marketing. If you look at the standard way of doing things, even in Dynamics marketing in the old world, you would have a segment, and based on the segment, you will trigger a journey. As a contact, if I'm in the VIP segment, then my journey will begin. But still, this is including me into a pool, disregarding my unique situation. So with real-time event-based journey orchestration, you can set your triggers at any external data point. It could be your customers visiting your shopping site. It could be sending an online query. It could be if you have free Wi-Fi in your offices, could be that they are connecting to your Wi-Fi. Anything could trigger a journey, and these triggers, these event triggers, could be used throughout the journey as well. Now I'd like to walk you through the interface and give a better understanding around how it's being handled. We can close this now. So this is the journey canvas that we have. As you see now, it's more of a wizard type of experience. I can specify if it's an event-based or a segment-based. I can choose my event trigger here. And as I said, there are infinite possibilities there. I've got a custom connector, which is connecting to a Wi-Fi. I can also make it a recurring journey if needed, but in this case, I don't need it. You need to set up your time zone, obviously. If you have scheduled communications, it should be based on your time zone that you want to reach out to your customers. And lastly, you need to select the start date. Now here, if you're aware of how the old journey canvas works, it's kind of a standard form. You've got a summary tab, you've got a designer tab, you've got a couple of tabs. But this one is a single screen in its entirety. And I've got a couple of options here. First of all, by clicking start, I can redefine the settings that I did in the start. Now I have a goal. I can say that my goal is to drive a purchase. And I can also specify my custom event that is my goal. This will help me when assessing my success with my end goal. So I can say, I want my product to be purchased at the end of this journey, and I am expecting 10% of my customers to do it. And lastly, you can say, while going through this journey, if a customer purchases the product, then they're already done. I don't want to do any further communication. So you can specify this journey as a kind of a suppression rule to take them out of your journey. And also you can also specify your suppression segment as well. So this is the settings of a journey. Now let's look at what we have here. Like I said, we have two new channels, a text message and a push notification, in addition to sending an email. But instead of using these, actually there are more valuable items here. I'll start with this one, send messages through the right channel. What it does is you will need to specify the channels that you want to reach out to your customers. So it could be all of them. I want to reach out using all channels. And when I hit optimize, it will actually look at the person's profile and understand their behavior and let me reach out to them with the right channel at the right time. So this is what it does. Another thing is, maybe I am not sure of what channel it is, and maybe I can use this one. But what if I am not also sure of the content I have? Maybe I have different visuals and I want to test it. So we've got the A/B test at a new level. Now you can test the messages at the same time with different communication channels. So I can say that I want to test an email with a specific content and compare it with a push notification. When I hit create test, now I have my versions.
I can specify how many of them should be sent to either of the versions. And I can also, I should also define a success rate, a success criteria. Is it a click-through rate, is it an open rate, or based on the journey goal? So I will leave it as click-through rate, and it will be specified automatically. And if nothing wins, I can specify a default as well. So the test will not go ahead for forever. So this is the second thing that I wanted to explain. And there are two more things. One of them is responding to an action. So responding to an action is, remember we started with a custom event. It was connecting to a Wi-Fi. Within this external data point, whatever information that you are capturing, that information can be used in this tile. You can say that in this event, if the customer is joining my Wi-Fi in this branch, maybe do this or do that. So you can specify these types of interactions based on the triggering events. And lastly, this was something that the product was missing. But right now, what we can do is, based on the customer profile, we can branch the journey. So we can say, if this email is going to a minor, then I want maybe a certain specific email to be sent, maybe with a disclaimer. So you can branch your journey based on the profile attributes here. So this is the new journey canvas that we walked through, and these are the features that we see. Right now it's in preview mode, and even the preview is only available in United States and Europe. But once we release it, once it's generally available, it will be a game changer for Dynamics 365 marketing. Now, as a last point, as I said, we as the Fast Track team, we are assigned to enterprise level projects mostly to assist and provide architectural advice. And in these occasions, there are a few patterns that we mostly see, and I'd like to make you aware of this one. The first thing is, we need to understand that marketing elements, these design elements like the journeys, emails, segments, they are intended for end users. They are not developer components. As we are the SMEs here, it's all right for us to develop the first journey maybe. But in the end, a journey should never be thought of becoming a CI/CD pipeline component, because they are not designed for that. They are designed for marketers. The second thing is the handshake between internal processes. So if you remember, we talked about marketing becoming a multidisciplinary practice. For this to happen, we should always ask about internal processes and the integration between these processes, even if there is no requirements. Ask these questions. What happens when a lead is qualified? What happens when a case is raised? Wherever there's a connection with a marketing process, with external processes, we should try to understand the business scenario there and build the necessary logic to make it possible. And the third point is around change management. Change management is bigger than development in this area, because at the end, what we are deploying is the first version of a marketing initial elements, I would say. We should not deploy any hard dependencies to those. Where I'm coming from is, if you remember the agile marketing team, they had a cross-functional team who can do everything. And say that they need a new flag. If they have to raise a change request for this flag and have to wait for 3 months to be prioritized, then it's not agile. This is why we need to enable the customer, empower the customer to be able to self-sufficient after they go live. This is why change management, training, and upskilling is much more important than deployment in this area. I guess that was pretty much it. If you have any questions, I'm happy to answer.
Hi, Samal. Ajmal, I'll just look at the questions. So we have some questions around what do you think, like what are your tips for managing larger and complex events with the marketing app? So what will be your advice on that? There is not a major challenge, I would say, with events, but we are bringing a couple of major updates in this area as well. The first thing I would advise is the event management website is an Angular site, and you need to have these skills to customize the website. Once you have this set up and customized based on your needs, then the rest is that wouldn't matter that much. If you have 10 events, if you have 1,000 events, the important thing is the ability to edit the Angular website there, and it could be hosted externally or through Power Apps portals as well. There's no issues with that. I hope this answered the question. I think absolutely. So there's another question on screen. What are the recommendations for SMS campaigns? Any particular tool for MS from Microsoft's point of view? So with the new release, we are bringing a native SMS capability. You will be able to provision your own SMS number and send your text through it. But additionally, we already have native integration, not native, but a third-party integration with Twilio and Telesign. So you can also use these third-party providers as well, assuming that your customer is happy to sign up with them. That's cool. And there is some good feedback about the interactive tool as well, which you used. Well, thanks for using that. That was really amazing. I think I can see one more question on the forums, and that will be like any major new capabilities which are coming in marketing, which the audience should look for, like your top three? My top three is definitely check the progress in the real-time event journey canvas. As you know, this is what I mostly talked about. It will be a game changer. The second thing is always use and encourage using of AI capabilities. As a marketer, we can never be that smart to optimize it to that level. If we have machine learning in the background, it will be able to understand this unique situation for a customer and be able to reach out to them at the right time with the right message with the right channel. Always use these functionalities, I would say. And the third one is hyper-personalization. With hyper-personalization, again, you will be able to identify the unique scenarios of a customer. So AI could do the orchestration part could be done by AI. With your journey canvas personalization, you can specify important logic, which will kind of avoid being irrelevant. I'm just giving an example there. So I've got a problem with my broadband very recently, and I was a bit furious, obviously. At the same time, while they were not able to solve my problem, they sent me a new offer. At any point in time, I'm subscribed with them for maybe 2 years. At any point in time, maybe I would be interested in them. They sent this offer at the exact wrong moment. So if you are smart enough to build this journey based on these logic, then you would be avoiding these kinds of situations. That's great. We have another question from Manoj, and he says, if customer is using click dimensions and want to switch to Dynamics marketing, is there a way to move their current data from CD to marketing? This is a great question. Actually, I spent many hours to create a playbook around it. So there is no such tool to automatically migrate it from click dimensions to Dynamics marketing, but I can provide a playbook which can be used as a guideline to do that. Maybe I'll share it with you, and then you can share it with Manoj. Definitely, we can share a link in the comments for this stream later on. And also, I'm seeing a question like what you think will be the roadmap of infusing AI into the marketing? Is it still at a basic level, or when we can sort of see it more towards the maturity? So there are 3 areas that we are using AI. The
journey design and orchestration, I think we've gone through in detail. So this one is at production level anyways. Although our real-time event-based journeys are preview, AI and machine learning practices behind our production level. So anyone could go ahead and try it in their own customer data. The second area that we are using AI is converting natural segment to kind of queries. So when you are creating a segment, you can simply type in, I want to target accountants who are living in Sydney and having maybe have children. So while you are typing this, the natural language querying in the background is able to identify the actual queries that would build your target segment. So this is actually simplifying and democratizing all your customer data and making it available for use for marketers. The third area that we are using AI is quite impressive. If you remember, Microsoft acquired GPT-3. And with this integration, what we are bringing is, as a marketer, I can type a few words, and GPT-3 would be able to create the content for me automatically. When you look at the time allocation for a marketer, they spend the most time on content creation. So GPT-3 will be a game changer in that area. So these three areas will be key, I would say. Excellent. So there are some praises for your session. Thank you so much. Yeah, same. Thank I you, really Faraz. appreciate Thank you, Manoj. Any closing remarks, Jamal, before we end this session? Nothing from my end, Kamar. I really thank you and Faisal for giving me this opportunity. It's been a fantastic experience for me. Thank you so much. Our problem. We are thankful to you for sharing your time on the weekend, and I know we are both in Melbourne, so we just came out of a lockdown, and Let's rooting catch up for. for coffee. Yeah, not to go for the next one. Definitely, let's catch up for coffee. That's something we can do now. Yeah, for the audience, so we had 5 lockdowns till now. So it was pretty hard, but yeah, It that wasn't gives easy, us yeah. ability to share these sort of learning sessions with you. So thank you so much, Samal. Have a very lovely rest of the evening, You as well, Kamar. and thank you. Take care. Thanks. All right, so that was tomorrow. So we will have a very good session coming up from the Gil Walker, and she will talk about the CRM success journey, like how you can add the success to basically your CRM implementations. And she will be live with us in 10 minutes. So we'll take a 10 minutes break, so you can go and grab your coffee, but don't go away from your screens or from the stream. So see you guys back in 10 minutes from now. Thank you so much.
Hello, Khushamdeed and Swagat. Thank you for tuning into the second edition of Dynamic 365 Urdu Hindi Bootcamp today. We hope and pray that you and your loved ones are safe during these challenging times. We welcome you all to this broadcast organized by the Pakistan User Group. Pakistan User Group is a community created with an intention to provide a pivotal platform for the country's IT professionals, entrepreneurs, business application users, and students to collaborate on upskilling, effective networking, and other areas of common interest, adding value for a growth-centric skilled industry. D365 Urdu Hindi Bootcamp is a recurring event targeting to promote upskilling in Microsoft technologies and aims to eliminate language barriers to learning. The event hosts a diverse array of industry-leading speakers covering the greatest and the latest of Microsoft product and platforms such as Dynamics 365 ERP applications, customer engagement, Microsoft Power Platform, Azure, artificial intelligence, and beyond. This community-led event welcomes participants from around the globe. We offer content in English, Urdu, and Hindi languages. This year, Bootcamp will be a 3-day event with 70 plus speakers participating from more than 10 different countries across the globe. Bootcamp session will cover a range of Microsoft products. Our speakers and share their key knowledge and experience on a variety of topics. This will be a great learning opportunity for IT professionals, client application users, and our students who are ready to embark their career journeys in Microsoft technologies. We are so thankful to our wonderful speakers, Microsoft MVPs, and Microsoft professionals for submitting their insightful sessions, as without them, this event would not have been possible. I'm really thankful to all our sponsors as True Group, Massive Global, and Barhead Solutions who have supported us in the overall planning and execution of this event. And last but not the least, thank you to our amazing team of community leaders and volunteers who managed this event working tirelessly over the past few months.
Hello, everyone. So thanks for waiting and thanks for your patience, for during this break. So I'm absolutely delighted to have one of our distinguished speakers with us, and she will be talking about journey to CRM success. Her name is Gil Walker, and I'm pretty sure the audience already knows her from her face. So what I'm gonna do is I'll put her on the screen. Hi, Gil. How are you doing? I am fine, enjoying the slightly warmer weather. Sorry, if you can at just last come in close to the Sydney. laptop like you previously were. Yeah, sorry about that. We are not able to hear you from that far. Okay, what about that? Yes, I think we are experiencing the same problem with the audio. Can you just change the settings in the studio as well, like you did in the lobby? Maybe. Okay. No, still can't hear you. I'm not talking at the moment. Okay. No problem. May I just invite you on How's that? on the link back to the lobby in the private chat? And then we can sort that out. If you see your private chat. Yes. Okay. So guys, we'll just back come in the back. We'll just lobby. figure out what's going on with the girl's mic. Right. Can you hear me? Can you hear me now? Yes, Gil, we can hear you. Can you please, yeah, I'll just share your slides and please start by your introduction. Thank you. So, share screen. How's that? We've got problems. It's absolutely fine. This isn't working, so it's because there's the other. Okay, Hi, Gil. We can absolutely hear you. Please go ahead with your session, and we can see your slides on the screen as well. Okay, so if I just speak from here, is that still working? Can you still hear me? Okay, so let's get cracking with this.
So today I am going to take you on a journey to CRM success. Actually, I'm going to take you on several journeys to CRM success. What we're going to look at during this journey to CRM success in this 45 minutes is a little bit about a journey to CRM success. I'm also going to give you some hints and tips about how you can guide a client or your employer on that journey to CRM success. And we're going to look at my individual journey to becoming the CRM success catalyst. And we'll also look at your journey to CRM success. And during all of that, I'm going to share some highs and some lows with you. So on that journey, we are going to see a number of different things. But before we can really embark on this journey, we need to understand a little bit about what CRM success is. And if you were to ask a crowd of people what is CRM success, you will get different answers from almost everyone in that crowd. Salespeople, if they say anything positive, will focus on ease of use. A project manager will probably focus on going live on time and being on, or better still, under budget. A customer service person is likely to mention having easy access to customer history. And company executives will probably mention reporting. Other people in our crowd will have other ideas. But what I find most worrying about this sort of question is that when we ask technical implementers what is CRM success, they nearly always struggle with the question. So these are people that are working day in, day out with CRM or a CRM, and they really struggle to know what CRM success is. So I'm now going to show you what I think of as CRM success. So when we think about the success of a CRM project, we must remember why the organization in question embarked on the project in the first place. There will have been some business drivers, some business reasons that the organization was prepared to invest, usually substantial sums of money, in the project. Achieving these aims are the best definition of CRM success. So that is meeting the scope of the project. The solution should also solve business problems, but then in the vast majority of cases, those problems will have been in the scope. What is probably the best marker of CRM success is that users are using the solution. In other words, they have changed at least a little bit how they are working, and they are now using the new solution and are using the solution happily. So to me, that is CRM success. So
Now we have got some idea of CRM success. I like to think of CRM success as the bit you can see above the water of the iceberg. And as many of you will know, that is approximately a tenth. But we then have what is below the iceberg. And that is the key to CRM success. So, what can we expect if we were to take a deep breath and dive down beneath the water surface next to that iceberg? What would we find? I believe firmly that CRM success can be described by an acronym PLUCKED. So PLUCKED is planning, leadership involvement, understanding, communication, and team. And when we read that downwards, we get plucked. So now I'm going to explain to you what is plucked. The first part of plucked is planning. And a key part of planning is knowing your destination. So just like all of these buildings are worth visiting, and depending on your interests and where you've been previously, you will have preferences. Similarly, there are lots of different aims for a CRM project, but regardless, it is essential that the destination is known. This is the importance of scoping your project. A project without scope is a journey without a destination. And a journey without a destination is a great way to waste both time and money. A journey without a destination is not a great way to start a CRM project. So once we've got a destination, the next part of planning is knowing how you're going to get there, or which route are you going to take. There are pretty much always multiple ways to get from where you are to where you need to be. So which one of those routes will you choose? Which one of those routes will deliver the best results? And then why does this one deliver the best results? Why is this the way that you have chosen? Some people argue that because of Agile, we don't need to worry about all of this planning. That is wrong. Agile is an awesome methodology when it is used correctly. However, too often it is grabbed as a way of appearing to please everyone. I've been invited in to rescue projects where the underlying cause was agile, and I put agile in quotes because, of course, it's not agile as a methodology. It is agile. We'll show you a bit of the solution. You tell us what you want changed. We'll make the changes and we'll repeat that ad nauseam. And just like going on a journey without a destination, using that as agile, which it certainly isn't, is not. Doing that is when agile becomes fragile. Agile is an approach,
And when it is used, it delivers fantastic results, but only if it is used with rigor. Agile is not a way to avoid scoping, documentation, testing, training, or anything else. Actually, there can be more need for scoping, documentation, testing, and training, because with Agile, we are delivering results to our end users more quickly. And consequently, we're going round and round and round more quickly. And there may well therefore be more time spent scoping, more time spent testing, more training, and more documentation. The next step, the L in plucked, is leadership involvement, which is absolutely critical. And leadership involvement means real involvement, so that other team members and other members of staff see leaders showing the way. They see leaders active in the project and setting an example. When this happens, other people will follow. This means that when the leaders truly demonstrate the importance of the project, participate in the training, and of course use the solution, the project has a far greater chance of achieving user adoption and hence success. It absolutely mustn't be figurehead leadership. I've seen many projects fail because key people do not adopt that leadership. Now we move to the middle of plucked. And to me, this is the most important part of plucked. And U is understanding. Understanding is perhaps the biggest of the keys to success. CRM projects tend to go wrong for 3 sets of reasons. And those 3 sets of reasons are a lack of understanding of how the business functions, a lack of understanding of how to do a CRM project, and a lack of understanding of the selected technology. I talk about this as being all roads lead to Rome. A few months ago, I did a presentation that looked at a survey done in 2019 that analysed 25 reasons that projects were said to fail. I distilled those 25 reasons down into those 3 lacks of understanding. So understanding and true understanding is very, very important. Understanding is far more than just passing exams, and far more than collecting badges and awards. Awards are useful, but only if they encourage you to dig into the subject matter and drive to real understanding. When I train people prior to exams, I get them to know about all of the presented options. I then get them to work through why most of those options are wrong. And from there, it's a very short jump to knowing the correct answer. And with that approach, even when the questions change slightly, you will have that depth of understanding, so you will still be able to get it right.
If you rely on parrot learning, that you will be much more likely to trip up. There are two key sides to learning any topic well. And those two concepts are why and how, which is more detail. When I speak to a lot of people, they are very unaware of this concept and detail approach. They are often under the misconception that if I talk about education and education for lots of people in the organization, what I'm wanting is that everybody in the organization knows all the nitty-gritty details of how to use CRM. That is obviously unnecessary. However, it is necessary for everyone to understand the key whys. And for the more business-focused people to understand whys of technology, and for technology-focused people to understand the whys of business. Once you get that, communication and ideas can flow between the two of them. And that alone will shrink down the time frame required for projects and so save money. It's also worth understanding what I call the ladder of expertise. So for anything that you want to learn, you typically come in as a novice, and then you learn a bit, and then you're an advanced beginner, a bit more you're competent, more you're proficient, and finally you can call yourself an expert. So the level of understanding where I'm looking at everybody having more understanding, I'm probably only talking about you being an advanced beginner in those topics where you're not known or you're not engaged to be an expert. We now move on to the C of plucked. And the C of plucked is all about communication. We've got to keep everyone informed of what is happening in the project. Make sure that they are aware of what they need to know, what they need to do. And certainly keep a very large group of people across what is happening and, even more importantly, why it's happening. But that's the broader aspect of communication. We also need to have communication within the team. And that communication within the team is, of course, aided by that platform of understanding. Business people having some level of understanding of the technology, and technology people having understanding of the business and the business drivers, means that the communication can happen a lot more effectively. A few years ago, I was on a Microsoft CRM, probably at the time, project, and 6 months in, the technical team who'd been on the project for the whole of that 6 months did not know how the organization for whom they were implementing Dynamics 365 or Microsoft CRM made their money. They got so little knowledge of the business side of the project that they really couldn't answer even basic questions about what the organization did.
And now we move to the final part, and that is that the team. So the T of plucked is that the whole team must work together to one goal. A few years ago, I was on a project and we had a business analyst. Now, many projects do have business analysts, and many business analysts are very good. This particular business analyst knew almost nothing about the business and even less about the technology. She spent her days running between where the business users sat and the technology people sat and just passing messages. So she managed to push what should have been one team into two parts, and she was the only one who was allowed to go into both areas. So not surprisingly, that project dragged on and didn't deliver on goals. So that is plucked, and they are the areas that you need to have in place if you are to achieve CRM success. And CRM success is, in my book, users being willing and happy to use the solution that you have supplied. So plucked is the acronym that will help you remember all of that. I'm now going to go on and talk a little bit about my journey to being your CRM success catalyst. Without a shadow of a doubt, that journey has had its ups and its downs. It's a journey that I've been traveling now for about 30 years. One of the mistakes that I made, one of the downs, is that I let all my certifications lapse because I was seeing too much from the perspective of the prospect, and prospects didn't know about the certifications and really didn't care. The mistake that I'd made, of course, is that the certifications are worth far more for what they do to you, or to me in this case, than they are to prospects. I also made the mistake of focusing too hard on salespeople, because salespeople are very rarely the project decision makers. Yes, they're involved in projects, but they are not the decision makers. I also made a mistake that many people make, and that is giving away too much time. And between all of those points combined, plus a few others, that left me a few years ago almost facing bankruptcy. But I didn't give up. And I love this quote: I didn't come this far to only come this far. I certainly didn't. I kept going, and I've really, over the last probably 3 years, I have springboarded into being your CRM success catalyst. So from a position where I had let a lot of my certifications lapse, I now have 5 of the current exams, and I have a lot of other exams that are older. I even have 3 of the 1.2 Microsoft CRM exams, and there probably aren't many people on this conference who've got those.
those exams have given me a handful of Microsoft Certified Functional Consultant Awards. And just before Christmas, I got the coveted MB600, the Solution Architect, the 3-star Dynamics Award. I've also renewed my MCT a couple of times. I've got a bunch of Click Dimension certifications. Also, in the middle of last year, I achieved my Distinguished Toastmaster. Now, that's not a technology certification. It's not directly CRM related, but certainly working towards that has given me a lot of the soft skills and the things that I use day to day. So that also has been very valuable. So my CRM journey, what did I achieve on my journey to being your CRM success catalyst? This journey has taken me about 30 years. It is almost 30 years ago since I started working in America. And at that job, I was running a support desk. And when I got there, there was no technology to support us at all. All we had was pen and paper, and not a great deal of that. So as part of that project, part of that role, I developed a simple CRM type database. And that was probably the beginning of my CRM journey. Since then, I have learned an awful lot about CRM, about Microsoft CRM, but also about other technologies. I was implementing both Clarify and Siebel. And of course, there was that early system that I developed in America. I've also had the luxury of traveling. And that traveling, 21 years ago, it brought me from the UK to Sydney. But I've also traveled within my role. And twice I have been to 4 countries and delivered 5 days of training inside a week. They're what I call my shock weeks. Shock being Stockholm, Helsinki, Oslo, and Copenhagen, because I did all 4 cities, 4 countries in a week. More recently, of course, I've learned a lot about Dynamics 365 and about Power Platform. I've also learned a lot about business, about sales, about marketing, and about branding. And I've learned a lot about how people learn and how to enable learning for others. I've also spoken at events. I've spoken at virtual events like this one, and I've spoken at in-person events, including Microsoft Ignite last year, before we all got slammed into lockdown. But most of all, what I have learned is about me, about myself. So, what will you learn as you step out into your journey of CRM success? Where will your CRM success journey take you? What will you experience on the way? I really hope that you will share the stories of your CRM success journey. And to make that a little bit easier, as I would love to share that with you, here are my contact details. And I will now hand back
to our presenters, but of course I will stay here and I am very happy to take any questions. Thank you so much, Gil. That was really an inspiring presentation. And I think you have really conveyed, the essence of your 30 years experience. It was a great learning for myself, and I hope the audience shared the same experience as well. Thank you. I'm more than happy to take any questions. Yes, there are a few questions here. I'll quickly run you down there. So the first question is like, if from your experience perspective, if you have to identify 3 major problems why CRM implementations fail, how you would like to respond to that? Sorry, I didn't hear the question. No. They're not 3, they're groups of reasons rather than 3 reasons. And that came from a survey done. So it was 25 reasons that I then looked at those 25 reasons and distilled them down into the 3 broad groups of reasons. That was great. I hope that will answer the question. Agile versus waterfall, which one you will prefer? Right. Okay. That is an absolute, there is no one right answer. And it does depend on the destination that you're trying to get to. Agile has got lots of short releases. However, each of those releases that we put into production must deliver something of use to the end user. So sometimes there is a project that to get to a point where you can give the users anything of use, you've got to do this much of scope. And if you're going to do this much, it will probably end up being waterfall. Maybe a relatively small waterfall, but nevertheless, it's waterfall. However, once you have delivered that, let's call it minimum viable product, we can then take that and deliver a bit more and a bit more and a bit more and a bit more in an agile way. So I firmly believe that it's a mistake to say, I'm going to use agile or I'm going to use waterfall. That's a bit like saying, I'm going to wear a t-shirt today, regardless of, you might look outside and it's really, really raining or even snowing. Sure as eggs, you're not going to go out with a t-shirt, or at least not only a t-shirt. So there is definitely no one right answer. Thank you so much. I think you responded that one excellently. We have another question, which is a slightly lengthier one. I'll try to read it out for you. What is your take on customization requests from the business users just to ease their daily functions? What is your recipe of success to avoid unnecessary customizations? Awesome question, Yasir. And how I respond to that, to a degree, will depend on whether that's a user that just knows who I am and just comes up to me, maybe meets me when I'm getting a coffee, which is something I do quite frequently. And, could you just please, Jill, could you add this new value into that pick list or do this or do that? If it's that sort of approach, I would probably gently shove them towards the appropriate approach to get that logged and then later on as appropriate. If the request does come through more official channels, then one of the questions that I like to respond to those questions with is,
well, I'll do various things. Sometimes I'll say quite simply, why do you want that, whatever that might be, and get an answer. But I then will often follow up with how much will it cost the business, whatever that means, if we don't do it. And again, that is pushing back onto the user. Does this change, whatever the change might be, offer real benefit? Or is it just I, as an individual, because of the way I work, think it would be better if we had that field over there instead of where you've put it, or an extra value in a pick list or whatever. So again, it is challenging. But if one way or another we can get to a conclusion that there is real business value in making the change and it's come through the proper channels, for sure I will do it. Again, it's a cost benefit, because if all we're doing is moving a field or putting another value in a pick list, the cost of doing that is really quite low. So on the balance of probability, it will deliver more to the business than the cost of doing it. But sometimes there are things that seem very simple on the part of a user, and our technical knowledge is such that we know that it will cause other problems, or that it's actually a lot of work. So it always depends. That's absolutely a great answer. Just the one follow-up, I think I will take it as the last question, like any suggestions which you can make to control the scope creep as they use this term. I think it's pretty somewhat related to this customization thing, but if you would like to respond to that. Scope creep usually comes about when the original scoping wasn't done particularly well. And it may be that the wrong people were involved in the scoping. It may be that various other changes have happened in the business. But in general, control of scope creep needs to be handled in a way that you take we have been engaged to deliver ABC at the moment. I understand that you would really like D, E, and F, and I can see some value in D, E, and F, but D, E, and F are going to have to wait until we've done ABC. We've got agreement that ABC are working and are necessary. Then we can look at putting together essentially another project, albeit a small project, and then we can deliver D, E, and F, or one of them, or whatever. That's perfect. That's perfect. Thank you so much for your valuable advices. And I hope next year we will not run into the glitch. We really apologize for that. And hoping to see you next year or even sooner than that on our platform for, taking so much advantage from your knowledge, which you have, just gave us a glimpse of, I think, the whole, the arsenal that you have there. Thank you so much. If you have any concluding remarks, that would be great. I'm very happy to let whoever follows on from me now to have the floor. So I will head back to the airport and fly away from Pakistan, and I will hand back to you, Quaymar. 100%. Thank you so much. And I think that's the journey that we can make in this COVID situation. At least we can, that was a very good, way of saying that. Thank you so much, Gil. Thank you, Quaymar. Thank you. So that was a very inspiring session, and that's what people with the real and actual experience can bring to these sort of boot camps, where they can not only tell you some marketing or like overview stuff, but they can actually give you real life-changing advices which can add value and success towards your implementation journey. So I hope you can catch up with Gil on any follow-up questions if you have.
So next up, I'll now move to the next round. And next up, we have a session from our valuable presenter. She is also, having a same sort of like torch bearing objectives के उर्दू और हिंदी में जो है हमने promote करना है अपनी audience को, and this session will be primarily in Hindi, so I'll just switch between the languages. और thank you so much रूही, आप आई, आप हमें join करेंगी, और हम जो है वो बहुत eagerly wait कर रहे हैं कि customer insights पे सुने, और आप kindly थोड़ा अपना introduction देंगी और बताएंगी कि किस topic पे हैं. I'll just hand over to you. Thank you, Kamar. Let me just start with sharing my screen. Let me know once you can see it. Sure. Perfect. So we all can see that. Okay. जबरदस्त. मैं अब आप hand over करता हूँ आपको. Thank you. I think if primarily we can do this in Hindi, that will be great. But yeah, totally up to you. Thank you. Yeah. It's gonna be a mix, like you said. Shift होगा English, Hindi, Urdu सब. मैं एक simple मैं कभी एक पूरा sentence एक language में नहीं बोलती, तो it will be a mix of everything. So thank you everyone and welcome, स्वागत है, खुशामदीद सबका आपका इस उर्दू हिंदी बूट कैंप में ज्वाइन करने के लिए, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप सारा जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं to make this initiative a success. So thanks a lot for that. Moving ahead, this is about me, and the session जो मैं बात करने वाली हूँ, it's about customer insights. For a 360-degree view of your customer. So Customer Insights is a new offering from Microsoft, and it comes under the Customer Data Platform जो वो कहते हैं. So Customer Data Platform के ऊपर एक सेशन है. So मैंने वहाँ से बात की थी, तो it would have been better अगर उनका सेशन मुझसे पहले शेड्यूल किया जाता, but it's okay. उनका सेशन कल है, तो I would highly advise कि आप लोग इस सेशन को भी अटेंड करें. आई एम नॉट गोइंग टू टच अपॉन कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म. इनके सेशन में ये बताएंगे कि कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म क्या है और कहाँ से ये कस्टमर इनसाइट्स की ऑफरिंग एज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है. सो let me move ahead and talk about what the agenda is. Right. So again, कस्टमर इनसाइट्स, इसमें हम शुरू करेंगे कि इसकी जरूरत क्या थी. व्हाई अ न्यू ऐप कस्टमर इनसाइट्स. इनके पास बहुत सारे इनसाइट्स हैं, इनके कस्टमर सर्विस इनसाइट, सेल्स इनसाइट्स, अब एक नया इनसाइट आ गया कस्टमर इनसाइट्स. सो इसकी जरूरत क्यों पड़ी. अगेन ये कस्टमर इनसाइट्स में होता क्या है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं इस एप्लीकेशन को यूज करके. उसके बाद हम एक डेमो करेंगे. उसमें मैंने ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट बना के रखा है, तो आई बेसिकली वॉक थ्रू कि इसमें क्या चीजें होती है और इससे हमें कैसे क्या क्या फायदे मिलेंगे. एंड फाइनली आई विल होपफुली लीव सम टाइम फॉर Q&A. तो क्विकली लेट्स बिगिन. मेरा कुछ ज्यादा आई एम नॉट अ प्रेजेंटेशन पर्सन, तो कुछ ज्यादा स्लाइड्स नहीं होंगे यहाँ. हम क्विकली कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे ओवर हियर. सो शुरुआत करते हैं कि कस्टमर इनसाइट्स इसकी जरूरत क्यों पड़ी. सो चाहे जितना भी हम बोले कि stay with Microsoft stack and there is one stack and there are connected systems और CRM और FinOps के साथ बातें होती है और एक कंसोलिडेटेड सिस्टम होता है. बट अगर आप रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे तो एक्चुअली आप कितना भी चाहे कि सिस्टम्स कनेक्टेड हो, बट देयर वुड स्टिल बी प्लेसेस जो डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स हैं. तो टेक फॉर एग्जांपल कि अभी आपके पास एक CRM ऐप है या ERP ऐप है, चलो उसको आपने कनेक्ट कर दिया, बट देयर वुड आल्सो बी वेबसाइट रिव्यूज या आपके कोई स्टोर आपने रखा है, ऑनलाइन स्टोर रखा है, स्टोर पे आपने एप्स डाले, वहां से आपके परचेसेस होते, कस्टमर्स आते वहां से. तो ये सारी सिस्टम्स जो होती हैं, जो डेटा आपका जो है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स.
And like I said, it's not just multiple system but also multiple channels. तो कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट बहुत सारे चैनल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल से मीडियम से कर सकते हैं. तो अभी सोशल मीडिया से आप सोशल मीडिया पे आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. आजकल तो हम कुछ एक तकलीफ हुई तो उनका कंपनी का हैंडल, ट्विटर हैंडल लिए और उधर उनको ऑटोमेटिकली उनको मैसेज करते हैं विद ऑल आवर प्रॉब्लम्स या ऑल आवर सपोर्ट, ऑल आवर अप्रिसिएशन, जो भी है. सो देयर आर मल्टीपल चैनल्स, देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स. एंड जब हम एक कस्टमर का एक फुल व्यू जो देखना चाहते हैं, जिसको कहते हैं 360 डिग्री व्यू देखना चाहते हैं, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ना ही सिर्फ अपने एक सिंगल सीआरएम के अंदर जो उनका डेटा हमने स्टोर करके रखा है या सीआरएम के थ्रू हमारे सेल्स पीपल जो इंटरेक्शन करते हैं बस वही उनका व्यू है, वो वैसा नहीं होता. इट इज हमें हर चैनल की तरफ से उनका सारा जितना भी उनके साथ हमारी इंटरेक्शंस हो रही है, जो भी हमारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, ट्रांसैक्शंस हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, उन सब का एक व्यू जब हम लेंगे तब हमको कंप्लीट पिक्चर मिलेगा ऑफ कि ये कस्टमर इसका पूरा प्रोफाइल हमें समझेगा कि ये कस्टमर क्या है, ये क्या चाहते हैं, इन्होंने हमसे लास्ट कब परचेज किया एंड थिंग्स लाइक दैट. सो अभी राइट नाउ जैसे मैंने कहा कि सीआरएम अपना काम करता है, ईआरपी अपना काम करता है, बट देयर इज नो वे टू कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, राइट. तो इसीलिए ये कस्टमर इंसाइट्स यहाँ आया है, which is basically so basically अगर हम बोले कि what is it that one will get if they implement customer insights. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, because disconnected systems है and information जो है वो अपने अपने अलग अलग silos या systems में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनको यूनिफाई करना, उनको मर्ज करना, वो सारा डेटा एक साथ ले आना, ताकि जब जैसे अगर आप वो सारे डेटा को एक एक सिस्टम में देखेंगे तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन, उसके इतनी इंसाइट्स नहीं मिलेगी जितनी अगर आप उनका एक कंप्लीट पिक्चर ले ले और हर जगह से आपने मे बी आपको आपके ईआरपी या ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशन से मिले कि एक कस्टमर ने परचेज किया, पर ठीक है आपको सिर्फ परचेस मिला होगा, लेकिन अगर आपके पास आपके वेबसाइट रिव्यू पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये कस्टमर ने तो आज एक्चुअली आपको एक नेगेटिव रिव्यू दिया. तो इट इज नॉट जस्ट इनफ टू नो कि इस कस्टमर ने कुछ चीज आपसे परचेज की है, इट विल आल्सो बी इम्पोर्टेंट टू नो कि भाई इस कस्टमर ने परचेज किया और उसके ऊपर देखो एक नेगेटिव रिव्यू डाल दिया आपके साइट पे. सो दिस इज हाउ. तो सबसे पहले ये जो कस्टमर इंसाइट, एंड इट्स इम्पोर्टेंट जब हम बोल रहे हैं इंसाइट्स, ओके, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम हर तरफ से देखें कि कस्टमर का क्या हमारे साथ इंटरेक्शंस हुए हैं, उनका अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है ऑफ with when dealing with us kind of. तो डेटा यूनिफिकेशन विल हेल्प यू कि सारे सिस्टम्स जितने भी आपके सिस्टम्स है आप वहां से डेटा ले आओ एंड देन यूनिफाई ऑल ऑफ दैट डेटा, मर्ज ऑल दैट डेटा. अब जब आपने ये डेटा मर्ज कर दिया, हर सोर्स से हम आपके जितने भी मल्टीपल सोर्सेस से आपने वहां से डेटा लाया, उनको मर्ज कर दिया, तो अब आप केपीआई डिफाइन कर सकते हैं और ये केपीआई अब उस मर्ज डेटा पे रहेगा. सो यू कैन एक्चुअली सीआरएम में जस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर कस्टमर, बट नाउ with having merged data from the website and from your loyalty systems, if there is any, from your other online store application, web store applications, वहां सबसे जब डेटा आप सब कर सकते हो, सब मर्ज कर दिया, तो आप KPIs डिफाइन कर सकते हो, which is not just customer level KPIs but even business level KPIs, something like कि एवरेज सेल्स, मेरे बिजनेस का एवरेज सेल्स क्या है, what is the average sales per customer or average sales for a period and things like that. तो इसका सेकंड बेनिफिट होता है कि जब आपने डेटा यूनिफाई कर लिया तो आप मेजर्स या केपीआई डिफाइन कर सकते हैं. एंड अगेन अब जब आपने केपीआई डिफाइन किए हैं तो आप ये सारा डेटा जब आपको मिलता है, आपको कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप चाहेंगे कि अब आप अपने कस्टमर को टारगेटेड मार्केटिंग या टारगेटेड सेल्स काइंड ऑफ अप्रोच करें. तो बिकॉज ऑफ विच व्हाट यू कैन डू इज कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने जिनके सेल्स
जिनके सेल्स मोर देन $5,000 ईयर है, प्लस उनके लॉयल्टी पॉइंट्स से 25,000 के ऊपर हैं, तो ये मेरे प्रीमियम कस्टमर हुए एंड आई शुड गिव देम सम स्पेशल डिस्काउंट्स, स्पेशल ऑफर्स या स्पेशल प्रिविलेजेस जो भी है। तो सेगमेंट्स जो होते हैं, आप सेगमेंट्स डिफाइन करते हैं। सेगमेंट्स इज जस्ट इज समथिंग लाइक अ ग्रुप, ठीक है, आप ग्रुपिंग कर रहे हो। आप एक क्वेरी लिखोगे कि मुझे वो कस्टमर्स दीजिए जिनका, जैसे मैंने कहा कि एवरेज इनका एवरेज सेल जो है इज मोर देन 5,000 मोर देन $5,000 ईयर। एंड ये एवरेज सेल का मुझे कहाँ से पता चला? मैंने देखा, क्योंकि मैंने मेजर्स बनाए। मैंने मेजर्स जब बनाए तो मुझे पता चला कि मेरे बिजनेस में व्हाट इज द एवरेज सेल पर ईयर बाय द कस्टमर। तो पता चला कि 5,000 है, तो हमें देखना है ठीक है 5,000 के ऊपर वाले कौन कस्टमर है, क्योंकि वो हमारे प्रीमियम बन गए। सो दिस वे आपने मर्ज डेटा के साथ, वो डेटा जो आपके मल्टीपल सिस्टम्स में थे उन सबको मर्ज किया, और अब आप उनसे एक ग्रुपिंग कर रहे हो। आप टारगेटेड मार्केटिंग, टारगेटेड सेल्स, टारगेटेड प्लान्स बना सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो आप सेगमेंट्स बना सकते हो। नाउ अगेन, जस्ट लाइक गिवन दैट इट्स कॉल्ड इनसाइट्स, राइट? तो आपको इनसाइट्स मिलेगी। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया, मर्ज इंफॉर्मेशन जो आपके पास है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, आप उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल से कस्टमर चर्न रेट, राइट? मुझे ये मिल गया है कि कस्टमर ने पिछले 1 साल में मेरे मल्टीपल सिस्टम्स में क्या क्या सेल की, मेरी ऑनलाइन क्या परचेसेस थी, ऑफलाइन क्या परचेसेस थी, उसने वेबसाइट पे क्या रिव्यू दिए, ये सारा इंफॉर्मेशन लेके आई कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि प्रिडिक्ट से द कस्टमर चर्न रेट। चर्न रेट मीन्स कस्टमर कब तक हमारे साथ रहेगा, कस्टमर मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझसे फिर से मेरे से और परचेसेस हमसे परचेसेस नहीं करेगा। सो थिंग्स लाइक दैट। सो अगेन, predictions is another thing that customer insights है, आप उसे यूज कर सकते हैं for and then finally there is also audience insights. Now what do you mean by audience insights? Audience insights means उनका डेमोग्राफिक, लाइक टेक फॉर एग्जांपल, सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे अगर आपकी वेबसाइट है, या अगर आप एक ब्लॉगर हो और आपके ब्लॉग साइट्स है, तो आप हमेशा एनालिटिक्स देखते हैं, राइट? कि मेरे 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 साइट को कौन विजिट करता है, कितने यूजर्स विजिट करते हैं, कौन से रीजन से विजिट करते हैं, कौन से ऐप मोबाइल से करते हैं कि वेब पे करते हैं, ब्राउजर कौन सा यूज करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज लाइक ऑडियंस इनसाइट्स आपको gain insights into customer demographics, ki what is the region, what are the other things that are there. So there is audience insights जो एक part of this customer insights offering भी है। So अब हम देखेंगे डेमो में हम क्या देखने वाले हैं। सो डेमो में जैसे हमने बात किया, इट्स ऑल अबाउट डेटा यूनिफिकेशन, मर्जिंग ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि डेटा कैसे इंजेस्ट करते हैं। सो द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल एंड द सोर्सेस दैट आर अवेलेबल जहां से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। फिर हाउ डू यू मर्ज, बिकॉज नाउ वी जस्ट सेड दीज आर डिस्कनेक्टेड सिस्टम, इनमें कोई भी मतलब एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें कहना है, हमें बताना पड़ेगा सिस्टम को कि ये दो डेटा सेट्स जो हमने आपको इंपोर्ट करके दिए हैं, इनको मर्ज कैसे किए जाते हैं, आप इनको रिलेट कैसे करेंगे, हाउ डू यू से कि यही कस्टमर का ये ट्रांजैक्शन है, राइट? तो मर्ज का प्रोसेस होगा। आफ्टर मर्ज हो गया, आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलेगा जिसको ये लोग कस्टमर प्रोफाइल कहते हैं, राइट? तो कस्टमर प्रोफाइल में आपको कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन, कस्टमर प्रोफाइल इज बेसिकली उनका नाम, उनका एड्रेस डिटेल्स, उनके कोई लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शंस, ओके? मतलब कितने सेल किए, ये सब चीजें जो मेरे नेक्स्ट बॉक्स है यहाँ एक्टिविटीज, उनमें आते हैं। तो जो भी आपके मास्टर डेटा आप कहेंगे, जो आपका कस्टमर का मास्टर डेटा जो होगा, वो सब आप यूनिफाई करके एक सिंगल कस्टमर प्रोफाइल बना देंगे, ताकि जितना भी इंफॉर्मेशन के लॉयल्टी पॉइंट्स, कैसे जैसे लॉयल्टी पॉइंट मेरे एक दूसरे सिस्टम में बैठे हुए हैं, बट आई कैन जस्ट आफ्टर यूनिफिकेशन वो उनके लॉयल्टी पॉइंट्स मुझे उनके कस्टमर प्रोफाइल पे, कस्टमर कार्ड पे देखने मिलेंगे।
सो आप सबसे पहले जाके उनका एक कस्टमर प्रोफाइल बना देंगे. नाउ आफ्टर कस्टमर प्रोफाइल जब बने, then is the time when we'll start adding activity or associate transactional information with this particular customer. So जैसे मैंने कहा कि हमारे वेबसाइट रिव्यूज रहे, या ऑनलाइन सेल्स है, या ऑफलाइन सेल्स है, POS सेल्स है, ये सब जो इंफॉर्मेशन हम बोल रहे हैं, these are transactional information. तो हम ये ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन उसके बाद वो सब सोर्सेस ऑफ डेटा जो है उनको इंपोर्ट करेंगे, और ये जो यूनिफाइड कस्टमर प्रोफाइल जो बना है उनके साथ हम ट्रांजैक्शंस एसोसिएट करेंगे. एंड अगेन वंस दिस एंटायर थिंग इज डन, जैसे आपने सारा डेटा सोर्सेस आपका ले लिया, मास्टर डेटा ले लिया, ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी डेटा ले लिया, उसके बाद हम देखेंगे how you can define KPIs, which are again like customer KPIs as well as organizational KPIs, which are called business measures. ठीक है? And sorry, yeah, and this is what the final result is going to look like. सो आप देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो पहला स्क्रीन आपको यहाँ दिख रहा है एबी मॉस का, दिस इज व्हाट वी से द कस्टमर प्रोफाइल. तो उनका कस्टमर आईडी है, उनका नेम डिटेल्स एक्सेट्रा है. बाजू में जो हम टाइमलाइन देख रहे हैं, दिस इज द एक्टिविटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जितने भी तुम्हारे, और ये सारे मल्टीपल सिस्टम से आए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं वेबसाइट रिव्यूज है, ई कॉमर्स सेल है, POS purchases, these are data that were actually in different systems. हमने सबको import किया and now उसका एक unified view हमें मिल रहा है with the profile, with their entire activities that they have done with our organization. And right side में first we'll focus on these scorecards that we have. This is what we're talking about in terms of KPI, कि इस customer की average web purchases इतनी है और average store purchases इतनी है. अब अपार्ट फ्रॉम हमारा डेटा जो हमने लाया है, विच इज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो है, जिसको हमने सिर्फ यूनिफाई किया है, ये एक स्टेप कस्टमर इनसाइट्स आपको एक एडिशनल फीचर देता है, जिसमें आप इंडस्ट्री प्रोवाइडर्स के इंफॉर्मेशन के साथ से डेटा रिसीव कर सकते हैं. जैसे ब्रांड एफिनिटी ले लो, या जैसे आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट, बट एक DNB डेटाबेस टाइप का होता है. तो अगर आपके पास एक कंपनी का नाम दोगे तो उसके पास एडिशनल एनरिचमेंट, जिसको डेटा एनरिचमेंट बेसिकली कहते हैं, तो ऐसे डेटा एनरिचमेंट सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी प्रोवाइड की है. और आप वन ऑफ दीज सर्विसेज को यूज करके विद द करंट डेटा दैट यू हैव विथ यू, इन दोनों को मर्ज करके आप, जैसे यहाँ आप देख सकते हो पोटेंशियल इंटरेस्ट, के सो बेसिकली ब्रांड एफिनिटी जो कहते हैं, कि इस कस्टमर का probably they are more inclined to these brands given the data, the past information, the past history that we have. उसके basis पे this is their brand affinity, या this is their potential interest करके. So अभी what we'll do is कि I'll just switch back to the screen over here. Okay, so सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप इस ट्रायल को स्टार्ट कैसे करेंगे. So basically this is the URL, you can take a screenshot if you want. So dynamics.com basically ये आपका Dynamics 365 ट्रायल वाला पेज है, जहां आपको हर चीज की ट्रायल मिलती है. तो अगर आप देखोगे कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म में आपके पास Dynamics 365 कस्टमर इंसाइट्स करके ट्रायल है. तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज ऑल अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ डेटा. So as a novice who's just starting off trying to understand कि ये सिस्टम करता क्या है, तो उन्होंने आपके लिए एक्चुअली जब आप ट्रायल शुरू करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे क्या मैं आपके लिए सैंपल एनवायरनमेंट बना के दूं क्या. So when you do definitely choose a sample environment because that will help you कि आपको समझने में आसानी होगी. उसके बाद हम जाके अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं and things like that. So this is consumer goods demo मैंने लिया था. तो आप जब ट्रायल शुरू करेंगे तो आप चूज कर सकते हैं प्री डिफाइंड ऑलरेडी एनवायरनमेंट, उनका जो सेटअप है जिसमें उन्होंने सब डेटा इंपोर्ट करके दिया था. ओनली लिमिटेशन, ओनली नहीं, द बिगेस्ट लिमिटेशन रादर इज कि क्योंकि उनका एक डेमो एनवायरनमेंट है, सेटअप है, उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते.
तो आप बेसिकली देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीजें समझ सकते हो, पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते. सो इट इज तो एक बार जब आपने समझ लिया कि इसकी क्या क्या चीजें हैं, उसकी जाके एक्सप्लोर कर लिया, तो इट इज गुड कि आप जाके न्यू करके आपका खुद का एनवायरनमेंट बनाए. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन कि इस स्लाइड का भी अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये लर्न पे बेसिकली मॉड्यूल है, लर्निंग पाथ है. और इस लर्निंग पाथ में जब आप इस मॉड्यूल पे जाएंगे, क्रिएट अ यूनिफाइड, यू एक्चुअली हैव एन एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज में आपको सारे डेटा फाइल्स भी दिए गए हैं. तो आप बेसिकली वो स्टेप्स फॉलो कीजिए, डेटा फाइल्स इंपोर्ट कीजिए, and you should be able to better understand and actually hands-on see कि ये customer insights चलता कैसे है. And that is basically what मैंने किया है. तो ये सारा डेटा जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं imported, ये उन्हीं की फाइल से जो मैंने लर्न में से डाउनलोड करके import की थी, right? So मैंने यहाँ just for the sake of it मैंने सारे टैब्स ओपन करके रखे हैं ताकि लोडिंग में इश्यूज ना हो. So let's start with so this is basically उसका navigation जो होता है. तो customers में जाओगे तो ये एक सारे आपके जो कस्टमर्स, आपने जितने भी कस्टमर डेटा इंपोर्ट किया उसके जितने भी कस्टमर प्रोफाइल्स बने वो सारे यहाँ दिखेंगे. ये 3 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने सर्च किया है, right? Because I want to focus on Abby Moss. So this view, customers view is actually going to start off with your entire consolidated view of all of the customers that you have imported in your system. So let's start कि कस्टमर्स को इंपोर्ट कैसे करें. ओके, तो शुरुआत आप हमेशा करोगे डेटा सोर्सेज से. जब डेटा सोर्सेज से शुरू करो तो यहाँ एक ऐड डेटा सोर्स जो है, आई विल नॉट एड एट द डेटा सोर्स क्योंकि टाइम लगता है, बट आई विल जस्ट शो यू व्हाट द स्टेप्स ओवर हियर. सो बेसिकली डेटा जो इंपोर्ट डेटा अगर आप यूज करो तो आप देख सकते हो कि आप एक कॉमन डेटा एज़्योर डेटा लेक में अगर आपका CDS आपका बेसिकली एक CDS एनवायरनमेंट है या CRM एनवायरनमेंट है, तो आप एक्चुअली CRM एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेशन दे सकते हो. अगर आपने बिकॉज अगेन जैसे आप वर्ड ही समझो, इट्स ऑल अबाउट कस्टमर इनसाइट. तो आप एक दो रिकॉर्ड की बात नहीं करें, एक दो कस्टमर की बात नहीं करें, एक दो ट्रांजैक्शन की बात नहीं करें. यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा दैट्स गोइंग टू रन इनटू like thousands and millions of records, right? So basically वो तो most likely आपका एक data lake होगा जहाँ ये सारा information stored है. So it allows you to connect to that data lake also. Then there is again this data hub catalog. So these are various options. अगर आप simple एक import data वाला option ले, and I'll just show you what happens next. It's basically Power Query, okay? तो गिवन दैट वो पावर क्वेरी यूज करते हैं, इसका मतलब है कि आपके जो सोर्सेस जहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियली बढ़ गए, राइट? आप इनमें से किसी भी, मतलब फॉरगेट अगर आपके पास CRM ना हो, इनमें से किसी में से भी आप आपका डेटा फॉर्मेट आप डायरेक्ट एक SQL डेटाबेस में कर सकते हो. आपके पास SAP के साथ अगर आपको इंटीग्रेट करना है, आपका डेटा SAP में रखा हुआ है वहां ले लो, SQL में रखा है वो ले लो, और कुछ नहीं तो सिंपल अपनी एक टेक्स्ट फाइल लो और उधर से इंपोर्ट करो, राइट? सो आप जब एक्सप्लोर करोगे अपने लर्निंग के लिए, मोस्ट लाइकली आप एक CSV फाइल लोगे और इंपोर्ट करोगे. सो जितनी भी आपकी फाइल्स जो होती है, जितनी भी आपकी फाइल्स है, डेटा सोर्सेस है, आप उनको यहाँ इंपोर्ट कर लोगे. अगेन एक चीज जो आप ध्यान रखोगे इज, लेट मी टेक दिस एग्जांपल. अब जैसे हमने, अगर आप SQL वगैरह से कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट्स गुड फॉर यू, क्योंकि उसमें डेटा टाइप्स ऑलरेडी सेट रहेंगे. बट अगर आप एक टेक्स्ट फाइल कर रहे हो, देन मेक श्योर कि जब आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, क्वेरी वगैरह कर रहे हो, तो आप अप्रोप्रिएट, जैसे अगर ये करो, दिस इज अ डेट कॉलम, राइट? सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि मैं इन्हें ट्रांसफॉर्म करके इसका डेटा टाइप डेट सेट करूं, बिकॉज जब हम वो टाइमलाइन करने वाले, रिमेंबर हमने आपको दिखाया था कि इधर एक टाइमलाइन है, तो ये टाइमलाइन बेसिकली डेट पे होता है. अभी एवरेज स्टोर्ड परचेसेस अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम डेट वाइज बोलेंगे कि एवरेज स्टोर्ड परचेसेस लास्ट 6 मंथ्स अगर, तो उन सब में डेट की चाहिए. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट परचेसेस अगेन करेंसी अमाउंट, राइट? तो ये जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा जब भी आप अगर एक टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट करें तो मेक श्योर कि आप डेटा टाइप्स आपके बराबर सेट करें, ताकि आप आगे जब आप मेजर्स डिफाइन कर रहे हैं तो आप इनको यूज कर सकें.
So this is where अगर आप जाके आपके सारे डेटा सोर्सेस इंपोर्ट कर लेंगे. So this is all the data source. To tell you क्विक समरी के लिए, ई कॉमर्स में मेरे सिर्फ कस्टमर इंफॉर्मेशन है और लॉयल्टी में लॉयल्टी पॉइंट्स है. तो इस कस्टमर के लॉयल्टी पॉइंट्स अगेन रिमेंबर दे आर टू डिफरेंट सिस्टम्स, राइट. तो इसकी आईडी इसमें मैच नहीं करती, इसकी अपनी आईडी चल रही है, इसकी अपनी आईडी चल रही है, तो इनके दोनों में कोई मैच नहीं है. ये मेरे ऑनलाइन सिस्टम में परचेसेस है, तो कस्टमर आईडी प्लस उसका कोई तो प्रोडक्ट उसने लिया, कितने का लिया, वो कौन से डेट को लिया, तो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन है. सिमिलर इंफॉर्मेशन बट दिस टाइम फ्रॉम माय POS purchases, right? So and this is website review. तो ये सारा डेटा हमने इंपोर्ट कर लिया ना. व्हेन यू इंपोर्ट ऑल ऑफ दिस डेटा, यू विल सी कि बिहाइंड ये एक्चुअली आपके लिए वो सारे एंटिटीज क्रिएट कर रहा है. ओके, आई होप यू आर एबल टू सी. आई एम नॉट श्योर, हाइड करूंगी तो ये क्या करेगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज ऑल. जो भी जितनी भी मैंने डेटा सोर्सेस इंपोर्ट की थी, तो उनके उसने सारे एंटिटीज यहाँ बना दिए हैं. तो दिस इज योर यूजर एंटिटीज जो आपके यहाँ हैं. जब आप अभी हम आगे स्टेप्स जाएंगे, बट नाउ दैट वी आर ऑन द स्क्रीन, आई वुड लाइक टू से कि फिर बाद में जब आपका एक यूनिफाइड प्रोफाइल जब बन जाएगा, ओके, आपने ये सारे डेटा को मर्ज किया और फिर एक पर्टिकुलर मास्टर रिकॉर्ड कस्टमर का बना दिया, तो यहाँ आपका प्रोफाइल्स में एक प्रोफाइल का रिकॉर्ड बन जाएगा, विच इज योर कस्टमर प्रोफाइल रिकॉर्ड. एंड देन सिमिलरली आप जब सारे एक्टिविटीज को मर्ज करेंगे, बिकॉज अगेन मेरे पास वेबसाइट रिव्यू, ऑनलाइन परचेस, ये POS परचेस है, ये सारी मेरी एक्टिविटीज है. बट अगेन जैसे ही मैंने कस्टमर के प्रोफाइल को यूनिफाई करके कस्टमर का सिंगल रिकॉर्ड बनाया, वैसे ही जस्ट बिकॉज आई वांट टू शो इट इन द टाइमलाइन एंड ऑल, और मुझे उससे मेरे KPIs और प्रेडिक्शंस और इंटेलिजेंस में उन्हें यूज करना है, मेरे पास एक यूनिफाइड एक्टिविटी रिकॉर्ड भी बनेगा जिसके अंदर मेरे सारे एक्टिविटीज आ जाएंगे. सो दीज आर द एंटिटीज दैट गेट क्रिएटेड इन द बैकग्राउंड. यू डोंट हैव टू डू एब्सोल्युटली एनीथिंग फॉर इट. ये जस्ट स्क्रीन है तो मैं बता रही हूँ, पर आपको कुछ करना नहीं है, वो सब खुद ही करेंगे. Now let's go and see कि how do you ये तीनों इतने सारे फाइल्स जो मैंने इंपोर्ट किया, अब इनको मैच कैसे करेंगे. तो ये जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, यहाँ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कस्टमर प्रोफाइल. ठीक है, जैसे मैंने कहा कस्टमर मास्टर डेटा. तो अब मैंने मास्टर डेटा मेरे जिस फाइल्स में सिर्फ उतने ही डेटा सोर्स लूंगी. आई डेंट टेक ऑनलाइन परचेज, मैंने ऑफलाइन परचेज, वेबसाइट रिव्यू सब नहीं लिया, बिकॉज दैट इज ट्रांजैक्शनल डेटा, एक्टिविटी डेटा, दैट्स नॉट मास्टर डेटा, राइट. तो मास्टर डेटा मेरा लॉयल्टी वाली जो फाइल मैंने इंपोर्ट की थी वो थी, और बेसिकली एक कस्टमर प्रोफाइल जिसमें नाम एड्रेस वगैरह रखा हुआ है वो थी. तो मैंने सिर्फ वही 2 फाइल्स यहाँ इंपोर्ट की, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म माय पार्ट ऑफ माय कस्टमर मास्टर डेटा या कस्टमर प्रोफाइल एज दिस से, राइट. तो अगेन यहाँ जैसे मैंने डेटा टाइप भी डेटा सोर्स में जब इंपोर्ट करे थे, मैंने बोला डेटा टाइप इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ इन्होंने रेडीमेड नहीं, बट ऐसे सिस्टम वाइड उन्होंने कॉमन डेटा टाइप्स बना के रखे हैं, लाइक यूजुअली कॉमनली यूज डेटा टाइप्स दैट आर देयर, ये सब उन्होंने यहाँ बना के रखे हैं. और डिपेंडिंग ऑन द फाइल एंड द डेटा टाइप दैट यू हैव यूज्ड इन योर फाइल, वो ऑटोमेटिकली, ये देखो इंटेलिजेंट मैपिंग है, तो वो ऑटोमेटिकली मैप कर ही देते हैं. अगर एक लास्ट नेम फील्ड है तो ये पर्सन का लास्ट नेम है, पर्सन का फुल नेम है, सो ये सब इंफॉर्मेशन वो खुद ही कर देते हैं. रिवॉर्ड पॉइंट्स इज नॉट जनरेशन, दिस ड्यूरेशन, इट इज नंबर. ठीक है, तो ये इधर उसका ये टेलीफोन है, ये टेलीफोन उन्होंने ले लिया है. सो दिस इज ऑल जो उन्होंने मर्ज करके यहाँ रख लिया है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द डेटा टाइप फॉर ईच ऑफ दिस फील्ड. सिमिलरली ये मेरी दूसरी एंटिटी जो इंपोर्ट की थी उसमें भी उन्होंने ऐसे मैप कर दिया कि व्हाट डेटा टाइप डज ईच ऑफ दिस फील्ड रिप्रेजेंट. सो वंस दैट इज डन, आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वेयर यू विल गो एंड से कि इन दोनों को, जैसे मैंने कहा ये 2 अलग सिस्टम से आए हैं,
सो इनको मैं मर्ज कैसे करूं, हाउ डू आई मैच। तो आपकी जो रिलेशनशिप होती है राइट, वो आप कैसे क्रिएट करोगे। तो अब जैसे मैंने कहा ये दो अलग सिस्टम्स है, तो कोई आईडी वाला सिस्टम तो है नहीं कि यहाँ की आईडी और वहाँ की आईडी, फॉरेन की प्राइमरी की वाला लेके चलो। So basically, you know, that's what they have even given you in an example over here, that it could be as simple as आप email match करने की कोशिश कर रहे हो, right? So here हमने example दिया है कि आप full name and email पे match करो। अगर वो दोनों match होते हैं, that means that is these two records. This is going to be the condition of matching the records between the two systems and the two files that or data sources that we have provided. तो इधर आप पहली वाली एंटिटी चूज करेंगे ई कॉमर्स, उसका कौन सा फील्ड है, और फिर दूसरी वाली एंटिटी जो है और उसका कौन सा फील्ड है। अगेन अभी इसमें नॉर्मलाइज मतलब बिफोर जब मैं मर्ज करने जाऊं तो उससे पहले जैसे इसलिए ये है कि क्या ये कोई फोन नेम एड्रेस यानी ये नाम टाइप की चीज है, या इन बिफोर मर्जिंग इनमें जो डेटा है, जो फील्ड्स आपने बताई है, उन सबको मैं लोअर केस करके उनको मर्ज करूं कि न्यूमरल्स है क्या है। सो दिस इज द नॉर्मलाइज इंफॉर्मेशन कि what kind of a data is present in the fields जो आप कह रहे हैं कि जिन पे मुझे मैपिंग करनी है। प्रिसिशन इज कि प्रिसिशन वहां काम आता है जहां बेसिकली एक्यूरेसी वाला सिस्टम होता है, ठीक है, कि मैं कितने एक्यूरेटली या कितने क्लोज जाऊं ताकि एक होता है एग्जैक्ट मैच, राइट। तो ईमेल जैसे आप देख रहे हो कि ईमेल को हमने कहा एग्जैक्ट मैच कर लो, तो ईमेल सेम होता है। लेकिन जब आप नाम की बात कर रहे हो, जब ये हो सकता है एक सिस्टम में एक थोड़ा टाइपो हो, एक में डॉट डाला है, मिडिल नेम के बाद डॉट डाला है, दूसरे में नहीं डाला है, एक में मिडिल नेम का इनिशियल रखा है, दूसरे में रखा ही नहीं है, राइट, थिंग्स लाइक दैट। तो इसीलिए यानी आपको किस टाइप की प्रिसीशन चाहिए। आप बेसिक रखोगे तो वो ज्यादा रिकॉर्ड्स को मैप करेगा, वर्सेस कि एग्जैक्ट रखो जहां वो एग्जैक्टली चाहेगा कि द डेटा इन बोथ द सिस्टम शुड एग्जैक्टली मैच टू मेक श्योर कि मैं उन दोनों रिकॉर्ड्स को मर्ज करूं या कहूं कि दोनों एक ही कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं। So this is how you go about and you add the mappings that are available. तो अब हमने इन दोनों को, इन दो सिस्टम्स, इन दो एंटिटीज को ये रूल के साथ ये वाला मर्ज रूल लगा दिया, ठीक है, कि दिस इज मैच रूल बोलो। तो दिस इज माय मैच रूल कि ये रूल अप्लाई करो एंड देन मैच द रिकॉर्ड्स। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर इटसेल्फ कि बोलते हैं कि आपने जो कंडीशन सेट की है, आपने जो फील्ड्स बताई है, उसके बेसिस पे the system was able to match 98.5% of the records. एंड इफ यू सी ओवर हियर, ये जो आपके स्कोर कार्ड्स इधर ऊपर एट द टॉप दिख रहे हैं, उसमें भी आप देखोगे कि टोटल में इसमें 5000 है, इसमें 5000 है, सो टोटल में 10,000 रिकॉर्ड है। बट आफ्टर मैच करके अगर मैं यूनिक रिकॉर्ड्स देखूं, मैच एंड अनमैच, राइट, तो यूनिक आपके 5000 के अराउंड रिकॉर्ड्स है। और अगर आप चाहते हो कि खाली कॉमन रिकॉर्ड्स बताओ बिटवीन द टू सिस्टम्स, देन दिस इज द नंबर। सो इट एक्सक्लूड्स द 154 यूनिक रिकॉर्ड्स जो एक में है पर दूसरे में नहीं है टाइप्स, राइट। सो ये आपका मर्ज स्टेप होता है ना। जैसे ही आप रूल करो, आप देख रहे हो ऊपर एक रन बटन है, ओके, मेक श्योर टू रन इट, क्लिक ऑन दिस रन बटन, ताकि आपके ये सब स्टेटिस्टिक्स अपडेट हो जाएं और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिले, राइट। तो अभी हमने सिस्टम्स बता दिया कि इन दोनों को मैच कैसे करना है, ठीक है। अब बारी आती है आपको अपने कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन करने की, जिसमें अभी ये दो एंटिटीज को आपने ये तो बता दिया कि इनको मैप कैसे करने हैं। अब हमें ये बताओ कि हमें हर एंटिटी में से कौन सी फील्ड्स चूज करनी चाहिए टू मेक दैट वन यूनिफाइड कस्टमर प्रोफाइल रिकॉर्ड। तो अभी आप देखोगे मेरे दोनों सिस्टम में फर्स्ट नेम थे, दोनों में लास्ट नेम थे, दोनों में जेंडर है, दोनों में ईमेल है, राइट। तो ये सब ये ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि ये दोनों सेम है, राइट। अगर आप इधर देखो, इसके ऊपर मैं अगर होवर करूं, ओके,
ये सेपरेट फील्ड है कि सेम फील्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ये अगेन मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ओके ये ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स एंड द स्टफ दैट वी हैड सेड, वो ऑटोमेटिकली इसे कंबाइन कर देता है कि ये दोनों जो फर्स्ट नेम है वो एक्चुअली एक ही है, फर्स्ट ही नेम है, कुछ नई चीज नहीं है। बट इफ यू स्क्रॉल डाउन ओवर हियर यू विल सी कि हेडशॉट जो है जिसके अंदर इन्होंने बेसिकली वो यूआरएल सेट किया है फॉर दिस फोटो, राइट। तो इधर जब जाते हैं तो इसका उनको कोई मैच नहीं मिला इन द अदर सिस्टम। सिमिलरली जो लॉयल्टी टेबल था उसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, पर तुम्हारे जो कस्टमर टेबल था उसके अंदर तो सिर्फ नेम, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा थे, उसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं था। तो दीज वर द यूनिक फील्ड्स दैट आर देयर, तो वो यूनिक फील्ड खुद ही लेके आता है। अगेन हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये so that is what it is, that the system is intelligent enough to actually prompt you. Obviously it gives you option, यानी अगर आपको सेपरेट करना है तो बोल रहे सेपरेट करो। अगर मुझे चाहिए कि मेरे को मेरे जो यूनिफाइड मेरा डेटा बन रहा है, राइट, यूनिफाइड प्रोफाइल जो बन रहा है उसके अंदर मुझे टेलीफोन नंबर नहीं चाहिए, आप एक्सक्लूड क्लिक कर सकते हो। जब आप एक्सक्लूड करोगे दिस विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर कस्टमर प्रोफाइल जो हम यहाँ बना रहे हैं, तो यूनिफाइड प्रोफाइल जो बना रहे हैं उसमें वो नहीं आएंगे। अगेन रीनेम करना है आपको, फील्ड फर्स्ट नेम नहीं रखना है, कुछ और नाम रखना है, आप ये सब कर सकते हो। एंड देन गो अबाउट एंड run merge and downstream processes. So when you say run this and downstream processes, तो अगर आपने नीचे activities या और भी कुछ चीजें steps आगे की होंगी तो वो पूरा का पूरा सिस्टम को रिफ्रेश कर देता है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, दैट इज अ कस्टमर प्रोफाइल टू एवरीथिंग। योर मेजर्स अगर आपने कोई डिफाइन किए, सेगमेंट्स अगर आपने कुछ डिफाइन किया, तो जब आप ये रन मर्ज एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस लेते हो तो वो पूरा का पूरा अपडेट रिफ्रेश मार देगा top to bottom, right? So this is how, this is what the unify step does. And when after your unification is done, right, जब आप run click करो और जब ये बोले कि ठीक है ये सारे unify हो गए and the process is complete, right, तो at this stage ये जो आपको कार्ड दिख रहा है Abimos का, this is the only step that is complete, ठीक है। ये एक्टिविटी टाइमलाइन या एवरेज टोटल प्रोसेस वो सब अभी हमने देखा ही नहीं है, हम सिर्फ कस्टमर प्रोफाइल बना रहे थे यूजिंग द मास्टर डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज दैट आई हैव। सो इफ यू सी अगेन, एक चीज टू नोट, मुझे नहीं मिला कहीं और ना ही मैंने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, बट ये जो आपको फील्ड यहाँ दिख रही है, तो अगर आप चाहें कि ये सब क्या है, मेरे को ये क्या आईडी सब दिखा रहे हैं हम, मुझे ये इस स्क्रीन पे ये आईडीज नहीं देखना, मुझे इस स्क्रीन को डिजाइन करने का कोई वे नहीं मिला, तो वो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन डिजाइन कर देते हैं आपके लिए, कार्ड आपके लिए डिजाइन कर देते हैं। आई डिडंट फाइंड अ वे टू चेंज द डेटा ओवर हियर, ओके। नाउ लेट्स क्विकली गो अबाउट विथ activities. So just similar to what I showed in entities, similarly आप activities भी import करोगे, and again जब आप edit click करोगे तो again आपको पूछेगा कि मैं again relationship जो है, so basically relationship is the most important part over here जो होता है when you're working with different data sources और आपको सबको एक साथ merge करना है। So I won't delve into too much detail, it is just a similar step, right? खाली आपको relationship बतानी है कि कैसे मैं इन दोनों fields को merge करूं, okay? Now what I would like to focus upon is the enrichment part which I talked about, right? तो इधर enrichment में Microsoft आपको इतनी सारी options देता है, right? Brand, company data, demographics and other stuff. तो आप इन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, मतलब टू यूज, जैसे अगर मैं कंपनी डेटा वाला ऑप्शन लूं तो दिस इज लाइक फ्रॉम अ लीड स्पेस सब्सक्रिप्शन, सो यू विल नीड टू हैव, बिकॉज आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यू नीड टू हैव अ लीड स्पेस सब्सक्रिप्शन विच इज सेपरेट आउट ऑफ इट। बट अगर आप यूज करो तो ये जो प्रोफाइल आपने उन्होंने यही पूछा कि आप कौन से इंडस्ट्री या कौन से ब्रांड्स या कौन सी इंडस्ट्रीज जो है उनकी एफिनिटी आप चेक करना चाहते हो। तो मैंने ये तीन ब्रांड्स ले लिए, वॉलमार्ट, टारगेट, कॉस्को, जस्ट टू चेक कि व्हाट वुड बी द एफिनिटी या व्हाट वुड बी द लाइवलीहुड ऑफ द कस्टमर्स दैट आई हैव towards these brands that I have, right? और अगर अगेन इसमें इनको जब ब्रांड एफिनिटी पे आप करते हो तो आप डेट ऑफ बर्थ
जेंडर, कंट्री और ये आपका जो बेसिक लोकेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आई हैड इन माय कस्टमर प्रोफाइल आई हैड द डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। सो ये सब इंफॉर्मेशन एक बार जब आप दे दोगे, सो ये जो ब्रांड एफिनिटी आपको यहाँ दिख रही है, देखा आपने, मैंने वॉलमार्ट, कॉस्को एंड टारगेट लिया था, तो बेस्ड ऑन द डेटा that is there, based on the purchases and dates and everything that we have provided, the age, gender, location and stuff, what is the brand affinity of customers like this towards this. So this is additional information that is there. Now very quickly I will rush through because I just have like 5 minutes left, I guess. So I'll just rush through this. Now this is all about the KPI information जो हम बात कर रहे थे. अब इसमें तीन अगर आप देखें तो यहाँ 3 यूनिक टाइप्स आपको दिखेंगे. एक है बिजनेस मेजर, विच इज व्हाट आई वाज सेइंग, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, राइट. तो अगर मैं इधर आऊं, राइट, ये एवरेज बिज फ्रॉम स्टोर्स, राइट, इट्स नॉट कस्टमर बेस्ड, राइट. एवरेज बिज मेरी POS सेल से एवरेज बिज कितना आता है. Okay, this is the information. So when I want organizational level KPIs to be defined, it's basically a business measure that I'm going to do. If it is going to be like a customer related information, right, जो अगर वापस हम यहाँ कस्टमर साइड में जाएं और एबी मॉस में ये जो इंफॉर्मेशन हमको दिख रही थी, ये इंफॉर्मेशन इसको कस्टमर एट्रीब्यूट्स होते हैं. जब अगेन इसमें आई विल वेरी क्विकली डू दिस, इसको एडिट ही करके बताती हूँ. अगेन इसमें नो रॉकेट साइंस, कुछ आपको ज्यादा डेटा साइंटिस्ट वगैरह बनने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपल इधर आप आपका एग्रीगेशन मेथड यूज कर लीजिए. इधर ऐड एट्रीब्यूट में वो खुद ही आपको दिखा देंगे कि कौन से एंड इसलिए मैं कह रही हूँ कि डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, ये सिर्फ आपको न्यूमेरिक करेंसी एंड थिंग्स लाइक दैट वाले डेटा टाइप्स दिखाएंगे. तो आपका डेटा सोर्स जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप, फीड की डेटा टाइप मैचिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो अगेन मैंने बस यहाँ से ये क्लिक किया, POS किया और ऐड किया एंड दैट्स इट. रन करो, खुद ही आपके लिए सब कुछ कर देगा. सो दिस customer insights has been designed to be what they really say, power user friendly, citizen user friendly and things like that. इसमें आप वो जो इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है. अगेन समथिंग लाइक दिस, अगर मैं यहाँ चूज अ टेम्पलेट बोलूँ, राइट, समथिंग लाइक अ कस्टमर चर्न रेट, लाइक साउंडिंग इट साउंड्स लाइक समथिंग कुछ तो लाइक यू नो डेटा साइंटिस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह लगेगी. यू कुड चूज, जैसे एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू मुझे चाहिए, जस्ट चूज द टेम्पलेट. वो आपको बता भी देगा कि देखो ये फील्ड की मेरे को डेटा दे दो, दिस इज अ फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज. आप सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करो और वो आपके लिए सब कुछ कर देगा. So measures banana is extremely like simple. It's a child's play really. You don't have to do much. There are templates, use those templates or use your simple fields over there and go about doing it. Now once that is done, this is where the segments were there, but instead of segments, what I will do rather is I will switch over here because I wanted to show you this. Okay, before I end, कस्टमर इनसाइट्स के PCF कंट्रोल आते हैं. ओके, तो आप अगर आप ऐप सोर्स पे जाओगे तो कस्टमर इनसाइट्स का एक सोल्यूशन मिलेगा आपको डाउनलोड करने के लिए. आप ये आपके CRM डेटावर्स एनवायरनमेंट में इंपोर्ट करो और एक बार इंपोर्ट करोगे देन ये PCF कंट्रोल्स आप बेसिकली आपके कॉन्टैक्ट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि वेयर इज माय कस्टमर इनसाइट्स एनवायरनमेंट. वंस दैट इज डन, आप इस कंट्रोल को कस्टमर कार्ड पे डाल सकते हो एंड जो भी आपने यहाँ डिफाइन किया था, वेदर इट वाज मेजर्स, इनसाइट्स, टाइमलाइन कंट्रोल, सिंपल जो टाइमलाइन कंट्रोल आपको यहाँ दिख रहा है, अगर वो सेम टाइमलाइन कंट्रोल आपको विद इन CRM दिखाना है, आप एक्चुअली दिखा सकते हो. इफ कंडीशन आपका एक डेटा सोर्स CRM वाला होना चाहिए. दिस बेसिकली हाउ डू यू लिंक, सेम थिंग, मर्ज दिस, हाउ डू यू लिंक कस्टमर कॉन्टैक्ट विद द unified profile that you have created. तो अगर आपकी शुरुआत, अगर one of your data sources was really CRM, right, so you will always find a way to connect the CRM ID with your unified customer profile जो बनाया उसकी ID, and then you will be able to see all of this information right within CRM. एंड अगेन मैंने तो यहाँ सिर्फ CRM दिया, बट उनका जब सोल्यूशन आप देखोगे, आप इसको
पावर एप्स में भी ले सकते हो, बहुत सारे इनके इंटीग्रेशन ऑप्शंस है, आप उसको यूज करके वहां डाल सकते हो. सो अगेन जस्ट फॉर अ क्विक थिंग, अगर आप चाहें तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप ट्रायल लीजिए. डॉक्स जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि सारा डेटा, सैम्पल डेटा वहाँ है. इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू वांट टू एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ. उसके बाद आप अपना डेटा ला सकते हैं, डू द एक्चुअल trial and error of it. And yeah, I think I just ended on time. So thank you very much. And yeah, if there are any questions, I know I'm just not on time. Hi Ruhi, thank you so much. It was an amazing session. अभी थोड़े से हमारे पास questions हैं. एक question ये है कि जब हम कस्टमर इंसाइट्स को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, और स्पेशली जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स दिखाए रिटेल के एनवायरनमेंट की, तो वहां पे आपकी क्या एडवाइसेस हैं कुछ समरी लेवल के ऊपर कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो क्या चीजें हमें असेस करनी चाहिए? I think again देखिए ये मैं कहूँगी कि again customer insights is a very new offering, right? So it is going to be a learning process. आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा आप इस प्रोडक्ट के बारे में सीखोगे. बट द की ऑब्जेक्टिव, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप समझ लें कि की ऑब्जेक्टिव कैसे है, क्या है ऑफ दिस ऐप. लाइक आई डोंट थिंक दिस इज एन ऐप जो आप एवरी सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे यूज करना चाहेंगे. तो दिस इज रियली एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन. और आपका उतना सोर्सेस होने चाहिए. मतलब बेसिकली इसका पावर वही होगा जब आपके पास मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, इतना वॉल्यूम ऑफ डेटा है, इतना है कि उसमें से कुछ इंसाइट्स निकल सके, राइट? So that is my thing would be that again it's a learning process. You will learn from it, and again it is an enterprise solution. So you need to see whether the objectives match your objectives before you actually get into it. Perfect answer. Thank you. एक last question हम लेते हैं फराज का. Yeah, और go वो ahead. है how AI can help on top of data. So again, इसमें if I very quickly just go over here, there is अगर intelligence section में जाएं, so I did not explore this because basically I am not a data scientist उधर है नहीं. लेकिन ये actually आपको वे भी देता है to design your own, as you can see, is your machine learning models. So आप जो predictions बोल रहे हैं, एक तो उनके templates होते हैं ready-made जिससे आप कर सकते हो, लाइक क्रिएट करो, तो ये आपके रेडीमेड मॉडल्स है जो आप यूज कर लो फॉर पीपल लाइक मी हु डोंट नो हाउ टू डू मशीन लर्निंग. बट अगर आपको चाहिए तो आप एक्चुअली इधर बैठ के आपका प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो. सो दैट इज ओवर देयर. परफेक्ट. थैंक यू सो मच रूही. एक दफा जो है बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक बहुत टायरिंग सेशन था, आपको काफी बोलना पड़ा, ठीक है, आई कैन सी दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ऑन वीकेंड एंड आई होप द ऑडियंस विल लाइक इट even further when we'll share it on the YouTube in the coming days. Thank you so much for joining here. Any closing remarks you have? I think thank you. It's a great initiative, and I really appreciate all the efforts that you all have also put in. It's almost the end of the day for you, and you're still there, so it is as exhausting for you jitna mere liye tha. So thank you so much. Thank you. Really appreciate all the efforts. Thank you, Rui. Thank you so much. All right. So I think next session is our last session for this day in this particular stream. तो customer engagement के sessions इसके बाद खत्म हो जाएंगे. इस जो next session आ रहा है, तो do stay for the next session. और उसके बाद if you wanna see other sessions, तो आप जो है वो check कर सकते हैं finance and operations में और power platform में. उन दो tracks के ऊपर जो है वो और sessions भी हैं. तो it's time to bring in our next speaker. Hi Priya, how are you? Hello. Hi Kamal. कैसी हैं आप? So I think आपका जो सेशन है वो उर्दू में होगा. जी, उर्दू में. बहुत जबरदस्त. तो मैं बस बिना कोई टाइम जाया किए आपको जो है हैंड ओवर करूंगा. आप जो है अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और फिर टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दें एंड देन इट्स ऑल योर्स. और जब आप एक दफा स्क्रीन शेयर करेंगी देन आई विल फैसिलिटेट यू. थैंक यू.
एक दफा अनम्यूट कर लें अपने आप को. Hello everyone, it's me Freya Asmat. मैं आपको सबसे पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपना. मैं Dynamics 365 CRM की टेक्निकल फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ. इस वक्त करेंटली सिस्टम्स लिमिटेड में काम कर रही हूँ लाहौर में. आज का टॉपिक जिस पे मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ वो मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज डायनामिक 365 मार्केटिंग एंड व्हाट इट कैन बी. बेसिकली ये सिंपल सा एक ओवरव्यू होगा एप्लीकेशन का, व्हाट इज डायनामिक 365 मार्केटिंग एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट, और सिंपली हम कैसे मार्केटिंग की बेसिक स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, और इट इज़ वेरी इजी टू यूज सबके लिए. सो लेट्स बिगिन. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ. I believe it's shared now. Yes, Priya, it is good to go. Yeah. So what is marketing and what it can be? What is marketing? By books, marketing की definition कुछ ऐसी है कि it is that set of activities and processes for creating, communicating, delivering and staging offerings that have value for customers. लेकिन but during this era, और स्पेशली ये लास्ट 2 ईयर से जिस पैंडेमिक में मतलब दुनिया है और जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, उसमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं. हर चीज़ के साथ साथ ही मार्केटिंग हैज़ बिकम द न्यू प्री सेल्स एक्टिविटी नाउ. स्पेशली जैसे मैंने बताया कोविड में ओवर 60% ऑफ द सेल्स, इट इज स्टडी के ये एक स्टडी है कि 60% ऑफ द सेल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है ड्यूरिंग द marketing cycle. Like 60% of the targeted audience वो decide कर लेती है कि उसने आपका प्रोडक्ट बाय करना है और नहीं या नहीं करना. सो सेल्स प्रोसेस शुरू होने से पहले ही आपकी ऑलरेडी मतलब डिसाइडेड हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा. सो इस तरह के सिनेरियो में एक बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें हमारी ऑल द सेल्स और मार्केटिंग टीम्स इकट्ठे मतलब काम कर सकें और linked रहें. So these are some of the marketing challenges. Insufficient lead generation, sales and marketing don't work together effectively. Insights and KPI tracking. Like insufficient lead generation ऐसे होती है कि हमारी मार्केटिंग की जो सी टीम होती है वो दूसरे हमारे वो यूज कर रही होती है टूल्स मार्केटिंग के लिए, और जब वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करती है तो डाटा गैदर करती है तो बहुत सारा डाटा सेल्स टीम को हैंड ओवर करने से पहले मिस आउट हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है सेल्स टीम को. मतलब उनके सामने कोई व्यू नहीं होता कि ये लीड किस चीज़ में मतलब उनका इंटरेस्टेड था, मतलब कितनी कैंपेन्स में था. तो इस तरह की चीज़ें केपीआई ट्रैकिंग मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक डायनामिक्स 365 मार्केटिंग ऐप बेसिकली हमारे सेल्स के ऐप के साथ ही काम कर रही होती है, जिसमें हमारी बेसिकली सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम काफ़ी मतलब दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, और एक मतलब पूरा व्यू सेल्स के रेप के पास जब मार्केटिंग लीड आती है क्वालिफाइड होके तो उसके पास एक पूरा व्यू होता है उस लीड का. तो आज जो सेशन मैं प्रेज़ेंट करूँगी और जो डेमो प्रेज़ेंट करूँगी उसमें मेरे पास 3 पर्सोनास हैं. एक है डेज़ी जो कि एक मेरे ब्रांड मार्केटर हैं, एक ब्रांड की मार्केटिंग मैनेजर हैं. सो एक मेरी कस्टमर हैं पूजा और एक अहमद है जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं. सो ऑल द जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम द पूजा. पूजा असल में ये असल में एक ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड है जैक एंड जिल. सो जो अपने सॉरी जैक एंड जिल इज द क्लॉथिंग ब्रांड. सो बेसिकली क्या होगा कि पूजा जैक एंड जिल जो से पैंडेमिक में आप जाहिर सी बात है कि आप जाके ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है और आप बाहर जाके मतलब आप नहीं करते हो, लेकिन जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ बाय करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ऑलरेडी सोल्ड होती हैं
ठीक है? वो हाई जिसमें आपको ये इश्यू होता है कि आप मतलब आपने जो बाय करना होता है वो ऑलरेडी सोल्ड होता है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, स्पेशली लेडीज़ को होती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अक्सर जब भी कोई अच्छा मुझे कोई सूट या कोई चीज़ अच्छी लगती है और मैं उसको बाय करने जाती हूँ, तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका होता है वेबसाइट पे। सो जिसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। सो पूजा का भी कुछ ऐसे ही इश्यू है कि उनके साथ वो जब भी अपने किसी ब्रांड पे जाती हैं, मतलब उसकी वेबसाइट को विज़िट करती हैं, कुछ बाय करने की ट्राई करती हैं, तो उनका जो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ होता है। तो अब ये इस प्रॉब्लम को जैक एंड जिल ब्रांड ने काफ़ी मतलब फ़ील किया कि उनके बहुत सारे कस्टमर्स की ये शिकायत आती हैं कि वो किसी भी मतलब जब भी वो बाय करना चाह रहे होते हैं, तो वो सोल्ड आउट हुआ होता है और जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने एक कैंपेन रन करने की कोशिश की। उन्होंने एक कार्ड बनाया गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड, ठीक है? उसमें क्या होगा कि गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड वो जो भी अवेल करेगा, तो उन कस्टमर्स को सबसे पहले ईमेल सेंड आउट होगी जब भी वो कोई भी न्यू स्टॉक आएगा, कोई भी न्यू उनकी आइटम आएगी, तो सबसे पहले उन कस्टमर्स को वो ईमेल सेंड आउट करेंगे, जिन्होंने वो कोड अवेल किया होगा कि ये चीज़ अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट फॉर ओनली दोज़ कस्टमर्स जिनके पास मेंबरशिप कार्ड है, तो वो अपने अवेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, जो भी स्टॉक में देख सकते हैं पसंद की चीज़। सो इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सोशल मार्केटिंग एंड आहिस्ता-आहिस्ता इवेंट मार्केटिंग पे जाएँगे और वी विल सी कि हाउ इट विल रोल आउट। सो लेट मी स्टार्ट। So it all start from here. On Facebook, पूजा has seen the पूजा ने देखा कि ये इनकी एक पोस्ट आई हुई है जैक एंड जिल कटोर की, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड वो इस पेज पे विजिट करने के लिए जब वो इस पेज को स्पेशली उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिस पे वो जाके पूजा रजिस्टर कर सकती हैं फॉर अवेलिंग दिस गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड। सो बेसिकली इसमें गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड को जब भी वो इस इस पेज पे जब भी वो मेंबरशिप कार्ड पे पेज पे क्लिक करेंगी, तो एक लैंडिंग पेज के ऊपर वो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करेंगी, जहाँ पे वो उस सारी एक फॉर्म पे रजिस्टर करेंगी, जिसके बाद इनको एक ईमेल मिलेगी कि इन्होंने गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जैक एंड जिल, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि उस सारे मेंबरशिप कार्ड के बारे में, मतलब उसकी प्राइसिंग के बारे में और वो कितने मंथ्स के लिए वैलिड होगा और सारी वो चीज़ें डिस्कस होंगी। सो पूजा इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि उन्होंने वो अवेल करना चाहती हैं वो मेंबरशिप कार्ड। सो जाके वो सिर्फ अपने फॉर्म के ऊपर जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेंगी, आई एम नॉट सबमिटिंग इट राइट नाउ बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड। मैंने एक सिनेरियो पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। सो आई एम जस्ट डेमोंस्ट्रेटिंग कि वो इस तरह एक फॉर्म लैंडिंग पेज पे विजिट करेंगी फ्रॉम द सोशल पोस्ट। ही लैंड ऑन द लैंडिंग पेज और वहाँ से वो जब फॉर्म सबमिट करेंगी, तो उनको एक ईमेल रिसीव होगा। वो ईमेल असल में एक ईमेल होगा इवेंट इनविटेशन के लिए। सो as Pooja is interested in availing that membership card, so उन्होंने उस इवेंट पे रजिस्टर करेंगी यहाँ से रजिस्टर नाउ। सो इस पोर्टल पे आके पूजा अपनी सारी इंफॉर्मेशन देंगी, अपना ईमेल आईडी, लास्ट नेम और वो इस इवेंट के लिए रजिस्टर करेंगी, जो कि एक असल में टीम्स मीटिंग टाइप होगा, लाइक इस तरह की सेशन होगा, वेबिनार टाइप होगा। सो इसके लिए वो उसमें रजिस्टर करेंगी। आफ्टर दिस अभी तक सिर्फ ये हम जो सिनेरियोज देख रहे हैं, अभी तक ये सिर्फ हम कस्टमर के मतलब पूजा के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। देखिए पूजा की अभी तक जर्नी थी कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट से वो लैंडिंग पेज पे उन्होंने लिंक क्लिक करके विजिट किया, उसके बाद उनको ईमेल इनवाइट मिला, ईमेल ओपन किया और उसके बाद उन्होंने ईमेल एक इवेंट रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे लैंड किया और वहाँ से उन्होंने इवेंट के लिए रजिस्टर किया। तो दिस पॉइंट अभी तक सिर्फ पूजा मतलब
लेके चल रही हैं, जो हमारी कस्टमर हैं। उसके बाद अब देखिए पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर ने ये सारी जो सी कैंपेन रन हुई हैं जिनकी वो कैसे की। सो डेज़ी हमारे पास ये मार्केटिंग का मॉड्यूल है, डायनामिक्स 365 मार्केटिंग। सो हम स्लोली वन बाय वन सारे मतलब इस जर्नी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले पूजा जो सी हैं हमारे पास बनाएँगी अपनी ऑडियंस सेट करती हैं। ठीक है, सेगमेंट्स इज़ बेसिकली आप जहाँ पे अपनी ऑडियंस सेट करते हैं। सेगमेंट 2 टाइप्स के हैं, डायनामिक सेगमेंट एंड द स्टैटिक सेगमेंट। सो नेम से जैसे फ़ील हो रहा है कि स्टैटिक सेगमेंट बेसिकली वो सेगमेंट है जो अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं करते हैं। लाइक वन टाइम आपने कंडीशन ऐड कर दी, लेट मी शो यू क्विकली न्यू स्टैटिक सेगमेंट। अगर हम वन टाइम आप उसमें कंडीशन ऐड करते हैं ओके, सी दिस इज़ द स्टैटिक सेगमेंट और इसमें आपके पास वन टाइम में आप क्वेरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसमें जितने भी मेंबर्स ऐड हो गए वो विद टाइम वो इंक्रीज़ नहीं होंगे और ना ही डिक्रीज़ होंगे। और सिमिलरली आप इधर डायरेक्ट जाके भी मेंबर ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस। सो दिस इज़ अ स्टैटिक सेगमेंट। उसके बाद हमारे पास एक आता है डायनामिक सेगमेंट। डायनामिक सेगमेंट बेसिकली इसमें ये होता है कि आप इसमें क्वेरी करते हैं और क्वेरी के साथ आप इसमें मतलब क्वेरी भी नेचुरल लैंग्वेज में कर सकते हैं। स्टैटिक सेगमेंट के लिए अगर मैं आपको जल्दी से शो करूँ, क्वेरी ब्लॉक्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी कर सकते हैं, बिहेवियरल क्वेरीज़ हैं, डिफरेंट क्वेरीज़ आप डायनामिक सेगमेंट में कर सकते हैं और डायनामिक सेगमेंट अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सारे वो ऑडियंस चाहिए, सारे वो कस्टमर्स चाहिए जो लाहौर बेस्ड हैं। तो मैं उसमें कह दूँगी कि इफ ऑल द मतलब अगर मैं उसमें ये कंडीशन लगा दूँ कि जो सबका एड्रेस या सिटी लाहौर है, तो मुझे वो सारे मेंबर्स मिल जाएँ। अब टाइम के साथ इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो भी जब भी मैं इस सीआरएम के अंदर जब भी मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करूँगी कॉन्टैक्ट और वो फॉल करता होगा उस कंडीशन के अंदर लाइक कि उसकी सिटी लाहौर होगी, तो वो इस डायनामिकली ये सेगमेंट उसको पिक कर लेगा। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि अपनी टारगेटेड ऑडियंस सेट करना फॉर रनिंग एनी कस्टमर जर्नी। सो मैंने एक डायनामिक सेगमेंट सेट किया हुआ था इस जर्नी के लिए कि मेरा जो फॉर्म है जो जिस पे पूजा ने लैंड किया सोशल वेबसाइट से जिस पेज पे लैंड किया और जाके जो फॉर्म सबमिट किया उस पे मैंने एक डायनामिक सेगमेंट क्रिएट किया हुआ था कि जो भी ये करे उसका एक अलग से मतलब रिकॉर्ड क्रिएट होके वो उस डायनामिक सेगमेंट के अंदर आ जाए, इंक्लूड हो जाए। सो वो पूजा का इसमें अगर मैं देखूंगी तो पूजा का मेरे पास रिकॉर्ड होगा। यस। नेक्स्ट हमारे पास थी सोशल पोस्ट। सबसे पहले डेज़ी ने सेगमेंट तो ऐड कर ही लिया, वो मैं कस्टमर जर्नी पे यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले डेज़ी ने क्या किया था कि हमारी सोशल पोस्ट डिज़ाइन की थी। अगर आप देखेंगे, आप जब भी सोशल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक कैलेंडर व्यू शो होगा, जिसमें हमारी जितनी भी स्केड्यूल्ड सोशल पोस्ट होंगी, वो मिलेंगी और आपने इन फ्यूचर जो शेड्यूल करनी होंगी, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डायनामिक्स 365 फॉर मार्केटिंग में अभी 4 चैनल्स हैं सोशल साइट्स के और वो चैनल्स हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो हम डायरेक्ट अपने कोई भी कैंपेन रन करने के लिए कोई भी सोशल पोस्ट डायरेक्टली हम अपने डायनामिक्स 365 फॉर मार्केटिंग से अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पोस्ट है जिस पे पूजा ने क्लिक करके पेज पे लैंड किया था। उस पोस्ट को डेज़ी ने इधर डिज़ाइन किया था। इट्स वेरी ईज़ी टू डिज़ाइन। आप तो सिर्फ न्यू सोशल पोस्ट पे जाके न्यू क्लिक करेंगे और अपना चैनल सेलेक्ट करेंगे। आई नेम इट टेस्ट पोस्ट। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए 4 चैनल्स आ रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम इंटरलिंक्ड होते हैं। अ,
और इसके साथ आपका कोई पेज कोई पब्लिक पेज अगर आप फेसबुक का प्राइवेट अकाउंट भी अटैच करते हैं तो आपकी कंपनी का कोई पब्लिक पेज होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इधर एंड कोई भी मैसेज राइट आउट करेंगे और सिंपल यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ दैट मैसेज हियर लाइक ये प्रीव्यू सेक्शन में आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है आप कोई भी यहाँ पे मीडिया ऐड कर सकते हैं लाइक एनी फोटो पिक्चर्स see the preview is here and यहाँ पे आप images भी यूज कर सकते हैं I was trying the tagging facility जो कि अभी नहीं है लेकिन सिर्फ सिंपल पोस्ट वगैरह आप कर सकते हैं ओके इसको हम सेव करते हैं और here is two buttons यहाँ पे पोस्ट नाउ और स्केड्यूल का बटन है स्केड्यूल अगर आप इस पोस्ट को जब चाहते हैं जैसे आपने कोई भी कैंपेन कोई भी ऑफर देनी है आपके ब्रांड ने और आप चाहते हैं कि मतलब ये फ्राइडे की ऑफर हो या किसी भी मतलब सैटरडे स्पेशल ऑफर समथिंग लाइक दैट तो आप उसको डेट के साथ और टाइम के साथ स्केड्यूल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए लाइक दिस और ये ऑटो पोस्ट हो जाएगी अगर इट्स लाइव और आप इसको स्केड्यूल कर चुके हैं और जब भी टाइम आएगा और मतलब इट्स टाइम तो ये पोस्ट हो जाएगा सी द टेस्ट पोस्ट इज हियर इन अगस्त आप इस कैलेंडर व्यू में देख सकते हैं सो डेजी ने इट्स वेरी सिंपल टू डिजाइन अ सोशल पोस्ट ऑन डायनामिक्स 365 फॉर मार्केटिंग सो डेजी डिजाइन दैट मार्केटिंग पोस्ट और उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट की जिसके बाद उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए फॉर्म और लैंडिंग पेज डिजाइन किया सो ये मार्केटिंग पेजेस हैं मार्केटिंग पेजेस बहुत अच्छा सबसे पहले वैसे ये है कि आपने अगर कोई भी मार्केटिंग पेज डिजाइन करना कोई लैंडिंग पेज है अगर वो जिस पे कस्टमर आके रजिस्टर करेगा तो उसके लिए आपको एक फॉर्म की जरूरत होगी तो सबसे पहले आपने एक अपना फॉर्म बनाना है उसको लाइव करना है और उसके बाद उस फॉर्म को आप अपने मार्केटिंग पेज पे यूज कर सकते हैं तो हम सबसे पहले अपना मार्केटिंग फॉर्म डिजाइन करेंगे फिर मार्केटिंग पेज पे उसको यूज करेंगे और फिर मार्केटिंग पेज को लाइव करेंगे सो आई हैव ऑलरेडी यूज फॉर्म डिजाइन किया था मार्केटिंग का जो भी लाइव स्टेज पे है और loading yeah anyways we start from the scratch I'll show you there अच्छा मार्केटिंग फॉर्म्स में आपके पास मतलब डायनामिक्स 365 मार्केटिंग है आपके पास तकरीबन हर चीज़ की टेम्पलेट्स हैं आपके पास कस्टमर जर्नी के टेम्पलेट्स होते हैं सेगमेंट्स के टेम्पलेट्स होते हैं और इस तरह आपके पास मार्केटिंग फॉर्म के टेम्पलेट्स होते हैं और मार्केटिंग पेजेस के टेम्पलेट्स हैं आप इट्स वेरी इजी कि आप कोई भी सिलेक्ट करो और उसमें आप अपनी ट्विकिंग अपने हिसाब से उसमें ट्विकिंग कर लें और सेकंड ये कि इसमें आप एचटीएमएल भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई डिजाइनर टीम है और वो आपको इसमें प्रोवाइड करती है तो आप डायरेक्टली इधर एचटीएमएल टैब में आ सकते हैं इसमें कोई इतनी जरूरी नहीं है कि आप डिजाइनर और आप टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते टाइप्स हैं लैंडिंग पेज सब्सक्रिप्शन सेंटर फॉरवर्ड टू अ फ्रेंड अगर लैंडिंग पेज है तो आप लैंडिंग पेज पे फॉर्म के साथ मतलब क्या करना चाहते हैं अगर किसी ने फॉर्म सबमिट किया तो आप चाहते हो कि वो एक लीड क्रिएट हो जाए अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीड है या कांटेक्ट है तो आप चाह रहे हैं कि वो उसका कांटेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन वो फॉर्म में दे रहा है उसके मुताबिक अपडेट हो जाए तो ये सारी सेटिंग्स आपको ये समरी टैब में मिल जाएंगी सो बेसिकली हम जब भी कोई यूजर जाके फॉर्म पे सबमिशन करता है जैसे उसने नेम वगैरह कोई भी फील्ड ऐड की है तो हमारे असल में ये फील्ड्स हमारी सीआरएम की टेबल्स के साथ मतलब मैच किया
थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा मतलब सीआरएम में जो टेबल्स हैं, जैसे लीड का टेबल है और ये वाली फॉर्म की फील्ड मैं लीड के फर्स्ट नेम पे मैप कर रही हूँ, ताकि जब भी किसी भी मैं लैंडिंग पेज पे फॉर्म ऐड करती हूँ और कस्टमर जाके उधर अपना नेम ऐड करता है, तो वो नेम मतलब मेरी सीआरएम के अंदर लीड के फर्स्ट नेम के साथ मतलब जाके वो डेटा उधर स्टोर हो जाए। तो इस तरह से ये मैच होता है। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम किधर इस साइड पे मैच हुआ हुआ है। ओके, ये सिंपल डिजाइन था। उसके बाद आपने जब आपको फील हो कि आपका डिजाइन मतलब फाइन है आपके हिसाब से, आप इसको सेव करें। इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, ये HTML के साथ प्रीव्यू टैब आ रहा है कि हाउ इट विल लुक। सो डिफरेंट ये स्क्रीन्स हैं, लाइक डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा, ओरिएंटेशंस में डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, लाइक टैबलेट में कैसे दिख रहा है और मोबाइल में कैसे इट विल शो लाइक दिस। सो ये प्रीव्यू आपके पास अवेलेबल है। और जब आपको मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाए अपने फॉर्म के साथ, तो आप इसको गो लाइव करते हैं। किसी भी फॉर्म वगैरह मतलब किसी भी फॉर्म को यूज करने के लिए, मार्केटिंग पेज को यूज करने के लिए और ईमेल को यूज करने के लिए और सेगमेंट को भी आपको सारी चीजें डिजाइन करने और फिर आप आगे उसको फर्दर यूज कर सकें। ओके, सो इसी तरह मार्केटिंग पेजेस हैं। मार्केटिंग पेजेस जो ऑलरेडी डिजाइन है, आई शो यू दैट। ये एक मार्केटिंग पेज था जो डेजी ने डिजाइन किया था और सिंपल उन्होंने जाके सारी मतलब एक टेम्पलेट को यूज किया और अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें ऐड की। और उस डिजाइनर उसका सारा डिजाइन शो होगा, बट इट्स टेकिंग टाइम। ओके, hello. Right. Internet. Hi, Priya. Yeah, Kamal, I'm audible. Yeah, always. Sometimes we are facing a little bit of lag sometimes at times, you know. So you maybe good idea to stop your cam and then you can start where you left. I think we are pretty much with you on this. All right. Thank. All right. Okay. So ये मार्केटिंग के टेम्पलेट्स हैं। आप जब भी मतलब एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आपके पास ईमेल के, मार्केटिंग पेजेस के, फॉर्म्स के, और जो कि हम यूज करके उनमें ट्विकिंग कर सकते हैं। तो सिमिलर डेजी ने एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया और उसमें क्विक कैंपेन रन करने के लिए उन्होंने सिर्फ जल्दी से क्विकली अपनी चीजें ऐड की और लाइक जैसे मार्केटिंग फॉर्म ऑलरेडी ऐड है और फॉर्म ऐड किया और जस्ट उन्होंने अपना प्रीव्यू चेक किया और फिर जस्ट वेंट गो लाइव विद द पेज। So let me show you the previous one which is already say live. So once the page is live, उसमें आपको कुछ information देनी होती है, like partial URL
जो कि आपके लैंडिंग पेज के यूआरएल के साथ जाके एम्बेड हो जाएगा। सो लैंडिंग पेज का यूआरएल बाय डिफॉल्ट मतलब क्रिएट हो रहा है। दिस इज अ फुल पेज यूआरएल जो कि डेजी ने बाद में कॉपी, जो कि आपको लैंडिंग पेज पे ले जाएगा और जो डेजी ने कॉपी करके अपनी फेसबुक पोस्ट पे ऐड किया हुआ था। So this is the URL for landing page which we need. Okay. उसके बाद पेजेस डिजाइन हुए, फॉर्म डिजाइन हुए। नाउ अब वंस द फॉर्म मैं आपको अगर दिखाती हूँ कस्टमर जर्नी, उसमें ऐसे है कि जब भी मतलब फॉर्म ओपन हुआ और उन्होंने जब ईमेल के लिए अब लैंडिंग पेज में फॉर्म सबमिट कर दिया तो एक ईमेल इनवाइट गया उनको, जो मैंने आपको पहले दिखाया उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। सो इवेंट रजिस्ट्रेशन भी सारी जो से सेटिंग्स हैं वो हमारे मार्केटिंग में उन्होंने एक इवेंट क्रिएट किया, गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप इवेंट। that सो एक इवेंट उन्होंने डिजाइन किया जो कि बेसिकली टीम्स मीटिंग थी फॉर द ये गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड के लिए। अब जो भी कस्टमर इस मतलब इस इवेंट को अटेंड करता है, दैट मीन्स कि ही इज हाईली लाइकली कि वो आपका कार्ड जो सा है, जो मेंबरशिप गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप कार्ड है, वो बाय कर रहा है और उसमें इंटरेस्ट रख रहा है। सो उसके लिए उन्होंने अपना एक इवेंट डिजाइन करना स्टार्ट किया। ये बेसिकली इवेंट का जर्नल टैब है जहाँ पे आप सारी मतलब इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं कि आपका इवेंट कब स्टार्ट होगा, उसको स्केड्यूल करना है, उसके लिए आपके ये इवेंट किस टाइप का है आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली ऑनलाइन इवेंट रखा था क्योंकि सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये टीम्स मीटिंग, टीम्स वेबिनार्स, टीम्स लाइव इवेंट्स एंड टीम्स मीटिंग। आप अगर इनको चेंज, ये लाइव है, मैं आई डोंट वांट टू चेंज इट, लेट मी शो यू द न्यू वन। अगर मैं आपको एक टेस्ट इवेंट दिखाऊं और इसकी सेटिंग्स दिखा दूं, तो इवेंट टाइप इज ट्रेनिंग ऐप का। बेसिकली आप यहाँ पे अपनी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप इवेंट साइन कर रहे हैं। इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, और आपने इवेंट अपना स्ट्रीमलाइन करना है, मतलब टीम्स के साथ ऑनलाइन होगा, तो आप ये इसको चेक ऑन कर सकते हैं। और टीम्स वेबिनार है, किस टाइप की मतलब स्ट्रीमिंग रिक्वायर्ड होगी, वेबिनार या लाइव इवेंट्स हैं या मीटिंग्स हैं, सो यू कैन सेलेक्ट ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम हियर। और इसी तरह आप आहिस्ता-आहिस्ता, आप अगर ऊपर ये देख रहे हैं तो ये एक बेसिकली एक स्टेप्स हैं, प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस फ्लो है, जिसमें आप फॉर द इंफॉर्मेशन इट इज ओनली, सबसे पहले आपका मेन इवेंट का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और साथ-साथ आप अपनी मतलब आपके प्राइमरी गोल क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशंस ऐड कर सकते हैं, आउटकम क्या है, इवेंट टाइम जोन, डिफाइन डेट एंड टाइम। और उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो एजेंडा ऐड कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट सेव्ड राइट नाउ। सो एजेंडा, वेबसाइट्स एंड फॉर्म, रजिस्ट्रेशन एंड अटेंडेंस तब आएगा जब आपको इधर आप बेसिकली आपको पासेस नजर आएंगे अगर आप क्रिएट करते हैं कोई, और इवेंट रजिस्ट्रेशन जो भी आपके इवेंट के लिए रजिस्टर करेगा वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे जब जब कोई भी कस्टमर इस इवेंट के लिए रजिस्टर करेगा। सो आफ्टर, अब जब यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे, लाइक स्पीकर्स ऐड कर लेंगे, एजेंडा डिफाइन कर देंगे एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो इधर इस स्टेजेस में आपको नजर आ रही हैं, तो उसके बाद आप इस इवेंट को लाइव कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद ऑल दी सेटिंग्स, और डेजी ने अपना इवेंट को लाइव कर दिया। वंस इवेंट लाइव हो जाए तो हमारे पास इसके अगर मैं आपको जो ऑलरेडी लाइव इवेंट है वो दिखाऊं, तो
हमारे पास इवेंट यूआरएल क्रिएट होता है, ठीक है। आप इस इवेंट यूआरएल को अगर क्लिक करते हैं एज द मार्केटर पर्सपेक्टिव, तो वो मतलब देख सकते हैं अपनी पोर्टल की सारी सेटिंग्स वगैरह, और इवेंट रजिस्ट्रेशन मतलब जो पोर्टल होगा जिसपे जो इनवाइट पे इवेंट सेंड होगा वो ये यूआरएल होगा, ठीक है, जिसपे यूजर क्लिक करने के बाद इस वाले पोर्टल पे लैंड करेगा जहाँ पे वो रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पे उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, सेशंस, डिफरेंट सेशंस हो सकते हैं, स्ट्राइक्स हो सकते हैं, किस सेशन के लिए वो रजिस्टर करना चाहता है, और स्पीकर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है, आपने जो भी यहाँ पे ऐड की होगी। सो ये आपका इवेंट का मतलब इसी तरह डेज़ी ने ये इवेंट अपना जो सा था लाइव किया, और उसके बाद उस इवेंट को अपनी मार्केटिंग ईमेल्स के थ्रू सेंड आउट किया पूजा को, क्योंकि पूजा ने उनका लैंडिंग पेज पे जाके फॉर्म सबमिट किया था, और एज सेगमेंट एक मेरा मतलब डेज़ी ने क्रिएट किया हुआ था कि जो भी मेरा मैं आपको दिखाऊँ क्विकली से, एक सेगमेंट ये क्रिएट हुआ हुआ था कि जो भी फॉर्म सबमिटेड करता है, मतलब गोल्ड कस्टमर मेंबरशिप फॉर्म जो उस लैंडिंग पेज पे अवेलेबल था जिसको पूजा ने सबमिट किया, वो इस सेगमेंट के अंदर मतलब ऐड हो जाएगा, पिक कर लेगा ये सेगमेंट उसे, उस कस्टमर को। सो पूजा इज ऑलरेडी इन दैट सेगमेंट। उसके बाद इवेंट हमारा जो सा डेज़ी ने अपना लाइव किया हुआ था, उस इवेंट का इनवाइट अब वो अपनी ईमेल के थ्रू सेंड आउट करेंगी। सो हियर इट इज, ये ऑलरेडी लाइव रिकॉर्ड है। अच्छा, वंस आपका लाइव हो रिकॉर्ड तो आप उसको मतलब एडिट कर सकते हैं। आप जो ऑलरेडी अगर कस्टमर्स को बल्क में ईमेल सेंड आउट हो गई हुई है तो उनका जिनको हो गई हुई है उनके लिए तो दैट ईमेल विल बी द सेम, लेकिन जिनको नेक्स्ट होगी उनके लिए थोड़ा डिफर कर जाएगा, जो भी आप एडिट करोगे वो उसमें शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो ये पूजा ने इनवाइट ईमेल क्रिएट की, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर इवेंट के लिए एक बटन उन्होंने ऐड किया लाइक दिस। आप बटन ऐड करेंगे और उसमें आपसे वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा कि आप यू कैन ऐड एनी लिंक हियर, शो यू दिस इज यूआरएल। आप यहाँ पे इसको किसी यूआरएल के साथ लिंक कर सकते हैं, किसी भी यूआरएल के साथ, किसी लाइव इवेंट के साथ लिंक कर सकते हैं, या कोई भी टीम्स का आप उसमें भेजना चाहते हैं, मीटिंग इनवाइट, एनीथिंग। सो सारी इंफॉर्मेशन वो आपके पास यहाँ पे यूआरएल के थ्रू आप कर सकते हैं, और यू कैन ऑन द ट्रैकिंग एज वेल कि आप इस इवेंट को ट्रैक करना चाहते हैं। ट्रैकिंग बेसिकली हमारे उसमें काम आएगी इनसाइट्स पे, जब हमने जो मार्केटर ने टेस्ट करना होगा कि किस किस लिंक में क्लिक हुआ है। देन हमारे पास ईमेल मार्केटिंग, ईमेल में जो भी आप डायनेमिक स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग से डिजाइन करते हैं, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है कि यू कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट द एचटीएमएल एज वेल, और आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप अपने ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर सकते हैं लाइक ये कंपोनेंट, और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एचटीएमएल। देन वी हैव द प्रीव्यू एंड टेस्ट। प्रीव्यू एंड टेस्ट में आप बेसिकली सेम वही चीज़ है कि ओरिएंटेशंस देख सकते हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस में आपकी ये ईमेल कैसे नजर आएगी। टैब ये सारी स्क्रीन साइजेस हैं। अलोंग विद दैट हमारे पास इसमें लिटमस प्रीव्यू है। लिटमस प्रीव्यू बेसिकली थर्ड पार्टी टूल ही है, इसमें मतलब इसकी वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, लेकिन फॉर फर्स्ट 100 आई गेस इट इज फ्री प्रीव्यूज। लाइक इसमें आपको नजर आ रहा है लिटमस प्रीव्यू, ये होता है कि इसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी ईमेल जो सी है डिफरेंट ईमेल क्लाइंट्स में कैसे शो होगी, और लाइक मेरे पास आईफोन 11 प्रो में ये कैसे शो होगी, और या क्रोम में कैसे शो होगा, जीमेल पे कैसे शो होगी, तो ये मैं सारी यहाँ से यूज देख सकती हूँ। It's loading. So these are all the previews जो आप देख सकते हैं, क्लाइंट्स हैं डिफरेंट, आपकी ईमेल उनमें कैसे शो हो सकती है, आउटलुक पे कैसे होगी, और ये जीमेल का इन्होंने प्रीव्यू दिखाया अभी
कि ये जीमेल पे ऐसे शो होगा. See, this is the Gmail preview. I'm not able, yeah. See. Okay. Now डिज़ाइन टैब और इसके साथ हमारे पास ईमेल डिज़ाइनिंग में और ए-बी टेस्टिंग की फैसिलिटी है. ए-बी टेस्टिंग बेसिकली ये होता है कि आप अगर कोई भी ईमेल डिज़ाइन करते हो, कोई भी कैंपेन रन करना चाहते हैं, उसके लिए आप दो वर्जन्स क्रिएट कर लें अपनी ईमेल के. एक वर्जन नहीं, वर्जन बी with different content or you can add the A/B testing basically अपने आपके कंटेंट पे हो सकती है, आपकी सब्जेक्ट लाइन पे हो सकती है. तो आप डिफरेंट काउंटर और सब्जेक्ट लाइन क्रिएट कर लें और 2 वर्जन्स अपनी ईमेल के क्रिएट करें. और उसके बाद जब आप कस्टमर जर्नी रन करेंगे विद ए-बी टेस्टिंग ऑन, तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर जर्नी आपके सेगमेंट के 30% ऑडियंस को मिक्स ईमेल सेंड करेगी ए और बी वर्जन की. मतलब 2 वर्जन की मिक्स ईमेल सेंड करेगी 30% ऑडियंस को और उसमें आपने एक विनिंग कंडीशन रखी होगी. लाइक आपने रखा होगा कि अगर जो भी वर्जन इन दोनों में से ज़्यादा ओपन होता है या कोई भी कस्टमर उस वर्जन पे ज़्यादा क्लिक्स करता है, तो वो वर्जन मेरा विनिंग वर्जन होगा और बाकी की 80% ऑडियंस को वो विनिंग वर्जन सेंड आउट होगा ईमेल का. सो ये फैसिलिटी मतलब काफ़ी मार्केटर्स के लिए तो काफ़ी ज़रूरी मतलब क्या कहना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि वो एक बड़ी कैंपेन के लिए देख सकें कि उनका विनिंग वर्जन जो-सा है, वो सारी बाकी की ऑडियंस को सेंड आउट हो ईमेल्स उस टाइम. ओके. नाउ पूजा ने कस्टमर अपना इनवाइट जो-सा था वो इस वाली ईमेल के अंदर ऐड किया और इस ईमेल को लाइव किया और उसके सॉरी डेज़ी ने और उसके बाद कस्टमर जर्नी अपनी सॉरी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी. बिफोर स्टार्टिंग कस्टमर जर्नी, पूजा ने अपना एक मॉडल बनाया, लीड स्कोरिंग मॉडल. एक्चुअली मैं लाइव उसको ईमेल को एडिट कर रही थी, तो सेव हुई है अभी. ओके. पूजा ने एक अपना लीड स्कोरिंग का मॉडल बनाया. लीड स्कोरिंग मॉडल बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ कि हमने लीड नर्चरिंग के लिए काम आता है. आपने अगर आपकी एक लीड क्रिएट हो गई, ठीक है, आपका एक कस्टमर है, आपने उसमें मतलब बेसिकली कस्टमर मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम मतलब आपका कॉन्टैक्ट है और उससे आपकी एक लीड लिंक्ड है और आप उसको स्कोरिंग ऐसे करना चाहोगे ताकि अगर वो जिसने ज़्यादा ईमेल्स ओपन की हैं, उसने अगर आपकी प्रोडक्ट जो भी आप सेल करना चाह रहे हो, उसके लिए मतलब कोई लैंडिंग पेज पे विज़िट करके कोई फॉर्म सबमिट कर दिया. अगर जैसे पूजा ने लैंडिंग पेज पे विज़िट करके उसने फॉर्म सबमिट किया और उसने जाके मतलब अपने इवेंट के लिए भी रजिस्टर किया, तो उसके हिसाब से मैं उनको स्कोर करती जाऊँगी, ताकि एट द एंड मुझे पता चल सके कि मेरा कौन-सा लीड या कस्टमर है जो हाईली मतलब लाइकली है कि वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या जो भी आपकी ऑफरिंग है, वो बाय कर लेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लीड स्कोरिंग मॉडल्स हैं जो आप लाइव करते हो और इसमें हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं. लाइक आप डेमोग्राफिक हो सकते हैं और आपका बिहेवियरल लीड स्कोरिंग हो सकता है. आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं. ये वाला जो मैंने क्रिएट किया हुआ है इट्स मिक्स. इसमें आपके बिहेवियरल ऐसे है कि अगर उसने कोई ईमेल ओपन किया तो आई एम गिविंग हिम और हर 5 पॉइंट्स. इसी तरह डेमोग्राफिक ऐसे है कि उसकी आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ लाइक अगर वो लाहौर से बिलॉन्ग करता है तो आपने उनको 10 पॉइंट्स दे देने हैं या इसी तरह किसी स्पेसिफिक कंपनी से मतलब बिलॉन्ग करता है या उसका जॉब टाइटल कोई स्पेसिफिक है, कोई वो मैनेजर है या कुछ इस तरह से. तो उस हिसाब से आप उसको रेट कर सकते हैं. इसी तरह लीड स्कोरिंग में हमारे पास एक थ्रेशोल्ड होता है. थ्रेशोल्ड मतलब कि जैसे आप इसको पॉइंट्स देते जा रहे हैं, तो मैंने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि लाइक अगर 30 पॉइंट्स पे रीच करती है कोई लीड, दैट मीन्स कि वो एमक्यूएल है, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है एंड इट इज़ रेडी कि आगे से सेल्स रेप जो से हैं वो उस लीड को लें और आगे से सेल्स प्रोसेस मतलब स्टार्ट हो. तो वहाँ पे हम अपने लीड स्कोरिंग मॉडल पे वो अपनी थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं. लाइक देखिए सेल्स रेडी स्कोर मैंने 35 रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने सारी ग्रेडिंग ऐड की हुई है कि अगर वो
0 to 10 पॉइंट्स में है वो लीड, तो उसको 4 मैं दे रही हूँ ग्रेड, और 11 to 21 एवरेज, और सिमिलर लाइक फॉर गुड। एंड सेल्स रेडी स्कोर मेरा 35 है। ओके, उसके बाद अब मैं अपनी कस्टमर जर्नी डेजी ने स्टार्ट डिजाइन की। दिस इज द लाइव कस्टमर जर्नी। सबसे पहले आपने इसमें अपनी जो सी ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है लाइव कस्टमर जर्नी में, मैंने अपनी एक ऑडियंस का वही वाला सेगमेंट सेलेक्ट किया जिसमें वो कंडीशन थी कि जिसने भी फॉर्म सबमिट किया होगा उस लैंडिंग पेज पे, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने उस ऑडियंस को ईमेल इनवाइट सेंड किया जिसमें मेरे असल में जो कि मेरी इवेंट का इनवाइट था। इधर अगर मैं स्टाइल को सेलेक्ट करती हूँ तो आई कैन सी ऑल द केपीआईज इनसाइट्स सारी यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं कि इसमें एक टोटल कस्टमर प्रोसेस्ड हुआ है, और डिलीवरी डिलीवरी फनल, हियर यू कैन सी ऑल द केपीआईज की डिटेल्स। ये आफ्टर जब आपकी कस्टमर जर्नी लाइव हो जाए उसके बाद आपके पास केपीआईज विजिबल होंगी। समटाइम्स थोड़ा टाइम ले जाती हैं, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। जितने भी क्लिक्स हुए हैं इधर आपको सारा उसका मैपिंग भी नजर आ रही है, क्लिक थ्रू रेट सारा, मतलब कहाँ पे किस रीजन में क्लिक हुए हैं, मोस्टली आपकी कौन से लिंक्स ओपन हुए हैं और कौन से लिंक्स पे क्लिक हुए हैं। यू कैन सी ऑल दैट हियर। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगी कि ये इसमें हमारे पास एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी ये है कि आपके जो भी मतलब आपकी एक मार्केटिंग लिस्ट है जिनको आप मंथली न्यूज़लेटर सेंड करते हैं या कुछ भी कोई भी एक्टिविटी उसमें परफॉर्म करते हैं, अगर कोई कस्टमर उस लिस्ट से ऑप्ट आउट कर जाता है, अनसब्सक्राइब कर जाता है, तो हमारे पास कस्टमर जर्नी में वो अगर आपके सेगमेंट में इंक्लूड है भी, तो आपकी कस्टमर जर्नी कभी भी उसको पिक नहीं करती है। आप उसको मतलब लीगली ये करेक्ट नहीं है कि आप उसको दोबारा से अपनी अपनी डोमेन से उसको सेंड आउट करें मार्केटिंग ईमेल। तो वो ये कस्टमर जर्नी मतलब ये फैसिलिटी इधर है कि कोई भी ऑप्ट आउट कर दे तो कस्टमर जर्नी कभी भी उसको उस कॉन्टैक्ट को कभी भी ईमेल सेंड नहीं करेगी। सो इट इज वेरी सिक्योर अगर आप इस तरह से सोचें तो। इधर आप इंट्रैक्शंस देख सकते हैं कि कितने क्लिक्स हुए हैं और क्या कौन से फॉर्म अगर कुछ वेबसाइट विजिटेड हुई है। और अगर आप ए बी टेस्टिंग यूज करते हैं तो इधर आपको आपके ए बी टेस्ट का रिजल्ट मतलब शो हो जाएगा कि कौन सा वर्जन विन किया। इसी तरह डेजी ने सबसे पहले एक मतलब अपना वो पूजा वाला सेगमेंट सेलेक्ट किया, उनको फिर ईमेल इनवाइट भेजा और उसके बाद उसमें एक ट्रिगर लगाया कि उस ईमेल इनवाइट में मतलब उस ईमेल में सॉरी इवेंट इनवाइट में जिससे भी उस ईमेल को ओपन किया और उस इवेंट को रजिस्टर किया तो उनको आप थैंक यू ईमेल मतलब सेंड आउट कर दें। अदरवाइज आप कोई भी मतलब फोन कॉल या फॉलो अप कॉल सेट कर लें या कुछ भी आप उसमें ना डिफरेंट अपने परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटी। अगर मैं एक न्यू आपको दिखाऊं जल्दी से क्रिएट करके, तो आपके पास डिफरेंट मतलब इसमें ना टाइल्स अवेलेबल होंगी जो आप ऐड कर सकते हैं, एक्शन टाइल्स एंड okay next slide. So आप इट्स वेरी इजी टू डिजाइन। यहाँ पे आपने सिंपल अपना सेगमेंट मतलब जो फर्स्ट टाइल है आपने सेलेक्ट करनी है, देन यू कैन ऐड एनी ईमेल। लेफ्ट राइट साइड पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जो भी ईमेल्स आपकी लाइव होंगी, असल में जो भी लाइव रिकॉर्ड होगा वो आपको अवेलेबल होगा। और रिव्यू ईमेल्स की डिटेल्स सारा मतलब ईमेल एलिमेंट्स अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, लाइक अगर आपने अपनी ईमेल पे कोई लिंक दिया हुआ है जैसे इवेंट का लिंक दिया हुआ था डेजी ने, तो उन्होंने यहाँ पे ऐड आइटम करके अपना इवेंट सेलेक्ट करके
Hi. Yeah, I think we have lost Priya, so just we'll wait a few minutes to get her back, and then she will finish her session and she'll continue from where she has left. So we'll just wait a few moments. Thank you so much for bearing with us. This is a live stream, so we know there can be some problems. Your internet can drop at once, but yeah, I hope she'll be back soon. Thanks. Hi. Hi, Priya. Not a problem. You can just continue where you left. Hi, can you hear me? Hi, Priya. Hi, Priya. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I'm quickly sharing my screen again. Sure. Thanks. So, okay. कस्टमर जर्नी में हम कस्टमर जर्नी पे ही थे और मैं उसमें आपको बता रही थी कि इसमें हमारे पास बेसिकली डिफरेंट टाइल्स होती हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिगर टाइल्स एंड एक्शन टाइल्स, जो कि जिसका मैं आपको जल्दी से वॉक थ्रू दे देती हूँ। कस्टमर जर्नीज में भी हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं। बाय आउट ऑफ द बॉक्स टेम्पलेट्स आप अगर इनको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं और उनमें ट्विकिंग कर सकते हैं। अगर मैं एक सिलेक्ट कर रही हूँ अनाउंसमेंट का और इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। ऑडियंस बेसिकली आपका जो सेगमेंट है, जो फर्स्ट आएगा वो बेसिकली सेगमेंट की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
देन आप अपना चूज ईमेल टाइल ऐड करके और उस पे ईमेल सिलेक्ट करेंगे। देन वी हैव द ट्रिगर टाइल। अगर इस ईमेल टाइल में आपका कोई पेज एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसमें मतलब ट्रिगर की कोई कंडीशन ऐड करना चाहते हैं या कोई इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ईमेल एलिमेंट्स में हमारे पास ऐड आइटम की ऑप्शन है और इधर आप जाके पेज इवेंट और फॉर्म लिंक कर सकते हैं अपनी ईमेल के साथ इन द कस्टमर जर्नी, और उसको आप यूज कर सकते हैं फर्दर अपने ट्रिगर टाइल्स में। So let's see how many tiles we have. We have messages like ये टाइल आपकी बेसिकली ईमेल सेंड आउट करने के लिए यूज होगी। देन हमारे पास इफ देन ऑप्शन है। इफ देन ऑप्शन लाइक आपकी कंडीशनल टाइल है कि अगर किसी ने आपका फॉर्म सबमिट कर दिया या कोई ईमेल ओपन किया तो नेक्स्ट फर्दर एक्शंस आपने जो परफॉर्म करने होंगे। उसके बाद सेम आपने वेट और डिले ऐड करना है और कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई क्रिएट लीड लिंक्डइन कैंपेन अगर अटैच करनी है और रन वर्कफ्लो करना है। ये रन वर्कफ्लो अपने आप कस्टमाइजेशन फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ कस्टमर जर्नी आप मतलब इस तरह से आप कस्टमर जर्नी डिजाइन करते हैं। और मैं आपको ओके नेक्स्ट हमारे पास मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगी जो हमारे हैं कंटेंट ब्लॉक्स। कंटेंट ब्लॉक्स असल में आपके पास शो यू कंटेंट ब्लॉग्स असल में ये होते हैं कि अगर आप कोई भी कैंपेन, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर वीक और मतलब वीकली कोई भी न्यूज़ लेटर सेंड आउट करती है अपनी सारी कस्टमर्स को, तो उसके लिए वो बार बार मतलब अगर उन्होंने एक हेडर फुटर आपकी ईमेल का अगर सेम है या कोई भी ऐसा कंटेंट ब्लॉक जो आपका हर ईमेल में आपने सेंड आउट करना होता है, तो आप उसको सिर्फ वन टाइम डिजाइन करेंगे और उसको एज एन कंटेंट ब्लॉक सेव कर लेंगे और उसके बाद वो कंटेंट ब्लॉक उठा के अपनी ईमेल्स में यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली आप अपनी ईमेल जो भी डिजाइन करते हो उसको एज एन टेम्पलेट यूज करके जब भी आप एज एन टेम्पलेट मतलब सेव कर सकते हैं और एवरी टाइम मतलब नेक्स्ट कोई कैंपेन रन करनी हो तो आप सिंपल टेम्पलेट यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बजाय कि आप स्क्रैच से सारी मतलब क्रिएट करें। सो ये सिर्फ डेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से था अभी तक। नेक्स्ट हमारे पास अहमद का पर्सोना है जो कि सेल्स रेप है। अहमद के पास जब लीड हमने अब डेजी ने अपनी मतलब पूजा इज द एमक्यूएल मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड एंड डेजी की। अब अहमद को उन लीड को फर्दर मतलब सेल्स प्रोसेस में लेके जाना है, तो अहमद के पास क्या होगा कि अहमद के पास पूरा 360 व्यू होगा पूजा का। अगर मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊं, इसमें हमारे पास लीड स्कोर्स हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि पूजा जो हमने लीड स्कोरिंग मॉडल जो डिजाइन किया था उससे हमारे पास लीड स्कोर्स अवेलेबल हैं। आप ये दिस इज मतलब आप देख रहे हैं कि इसको स्कोर जो पूजा सिंह की लीड को स्कोर मिला हुआ है वो 105 रेटिंग है। इसका मतलब कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है और फर्दर अहमद इनके साथ मतलब डील कर सकते हैं। अगर अहमद इनके रिकॉर्ड को विजिट करते हैं अपने इस कस्टमर के रिकॉर्ड को, तो उनको पूरी इंसाइट्स मिल जाएंगी कि किस किस कैंपेन कौन सी कैंपेन इनके लिए पूजा के लिए रन हुई, कि कौन सी कैंपेन के लिए मतलब कौन सा पेज उन्होंने विजिट किया, सारे सबमिशंस ऑल दीज थिंग्स। और इनको आइडिया होगा कि पूजा किस चीज में मतलब एक्टिवली मतलब उन्होंने इंटरेस्ट शो कराया और फर्दर अहमद ने उनके साथ सेल्स की डीलिंग मतलब वो कैसे करेंगे, ये सारा सिनेरियो और मतलब इनसाइट्स और सारा कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो इनके लिए बहुत इजी होगा कि आगे अपनी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड को एसक्यूएल बनाने में, सेल्स क्वालिफाइड लीड बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये बेसिकली एक कस्टमर जर्नी का पूरा सिनेरियो था। लाइक सिंपल आपका मार्केटिंग ऐप का सारा के आपने मतलब सिंपल चीज़ों के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों के साथ हमने अभी देखा है। और इसके फर्दर हमारे पास एक मार्केटिंग का हेलो
ओके, फर्दर हमारे पास मार्केटिंग के रियल टाइम मार्केटिंग है हमारे पास। वो एक और सेशन है जो मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप दिस वन इवेंट बेस्ड मार्केटिंग जो रियल टाइम मार्केटिंग पे वर्क करती है, तो ये अगर आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कमर, थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच। और बहुत ज़बरदस्त सेशन आपने जो है प्रेजेंट किया। हमें थोड़े से टेक्निकल इश्यूज भी आए, लेकिन आई थिंक इन द एंड आपने बड़ा अच्छा उसको मैनेज किया। कोई अगर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स हों, आई थिंक थोड़ा सा हम ओवर टाइम चले गए हैं तो इसलिए क्वेश्चंस हम नहीं ले सकेंगे अभी। अगर आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इट्स उर्दू हिंदी बोट कैंप का, पाकिस्तान यूज़र ग्रुप फॉर ऑल द स्पॉन्सर्स और सब ऑर्गेनाइजर्स का आपका इतना अच्छा मतलब ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। और ये कि मैं अगर कोई भी मुझसे मतलब लिंक करना चाहे तो मैं मतलब बिल्कुल आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन और मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ जरूर रीच आउट करिएगा। थैंक यू सो मच। देखें भैया, आप जैसे लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ये इवेंट जो है हम चला सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। और अगर किसी को भी कुछ सवाल है, अगर वो लाइव देख रहे हैं या बाद में इसको यूट्यूब पे देखेंगे, तो दे कैन कॉन्टेक्ट फरिया एंड सर्च हर ऑन लिंक्डइन एंड होप शी विल बी एबल टू आंसर। तो आपको जवाब जो है वो दे देंगी। थैंक यू सो मच फरिया। I'll just now thank you so much. So with this, we have just came to the conclusion of this stream or this track. Like I said, there are very good sessions going on in other two streams. So if you will go and check out the finance and operations stream, there is a very good session going by Kelly, and she's talking about a comparison between the asset management and field service management. And also, agar aap Power Platform mein jayenge, if you will go to the Power Platform, you will see there that Julie Yak is speaking, and she is basically presenting around Power BI. So I think both sessions are really exciting. So आप उधर जाएं and उनको देखें. If you are not sure कि कैसे देखना है, just go to pakistanug.com and then on the top right corner, just see where you can click live sessions. So thank you so much for tuning in to this customer engagement stream. And I'll just play some promos and then we'll end the stream. Thank you so much. Allah Hafiz. Shabba khair and goodbye.